so far. Yeah, I think like they played like very well. Like today, like it was a great match from both of the team. Like what do you think about it, Yumina? Suyo here, coming from Red Soid here, it's quite relevant considering, the Soil Blue team here, they still have the chip in option, they still have the Khalid, possibly for a first pick. Even some teams used to opt for the Edith, and it comes to the down the wire because this is not a best of one. So these two teams, they have space to work around with. Sure, the Oh, first game Flexi, defines you the came flow back. of the I battle, didn't realize but that in the end, the live stream was uh, over. if you अरे can't keep ऐसा your कैसे हो cool, गया रे? it just हमको might कैसे cost you the पता नहीं round. चला? I do agree. I mean, both the teams need to be quite patient because, like you mentioned, they do have the chance to come up on top if they mess around indirectly or indirectly onto the first match. But then you cannot take it seriously as well because it gives the enemy team a leverage to capitalize on. And if they manage to secure 2 wins in a row, it can look really bad for Yeah. you. So you have to strategize, you have to give priority. If you are अरे, going in with the mindset that okay, we do have a chance, so how we'll did just I mess around, I don't realize? think that How? is Why going to did I work. realize? Meanwhile, really interesting ban, as in Oh, banning off the Aurora right off the bat. I mean, we've not going to see frigid glaciers coming in this match, that is for sure. And Kazoom right now hovering onto that Yin Linwell, I have to nerve. say, not a lot of Yin picks as of now. So if he manages to lock it in, it can be very interesting to be seeing him Yeah. around into the land of dawn. Indeed. It's quite debatable, but please don't lock in that yin. I would be distraught. As a first pick, when you're on the blue side, you control the entire piece of battle. Your first pick defines everything. Getting Kali. Yeah, there's the Zushin. Okay, Oh, that's a great first pick here, coming from the side of 9 o'clock. And Executive Esports could answer of this. And yeah, you did mention the Aurora ban here. So Executive Esports looking for possibly a dive composition. There's still the chip available for both teams to grab, which Oh, where is our Paul? I was Where is losing my our Paul? marbles. The Oh, chip Tito, is yeah, yeah, welcome open. again. You have the Welcome again. Khalid This still is open. Zushin here already taken Win. off the board. So Zushin sort of counters Khalid and the chip. But if you put them together, I think Team Executive Esports might just be in for a very, very strong lineup, which Chosen one locking in that Khalid. I mean, I was expecting a Khalid pick. Should not have Execo. given chosen one Yeah, the Khalid Execo. because I have seen him play onto that Khalid and he has been really So, yeah, yeah, everyone, great with welcome those back, welcome back, EXP welcome back. rotations coming in from his Izuma, side. you there? Meanwhile, Madara Yeah. locking in that कोई Grok. बताना था ना when it Unfortunately, went I off. do not think we are going to see a chip coming in. Maybe Team 9 o'clock would want to, get their hands onto that chip because they still have the room position open. The Grok can be flexed both onto the EXP, but I think if you've already gone for the Khalid, I would rather have the Grok onto the roam position. Alone in Tokyo, hovering over that Balmond for the EXP lane, Litman. Uh, Oh, you wanna see my it, pretty face? It's still they're on. just It's on joking around. They're already. messing around. My Before it Wi-Fi, was the my yin, Wi-Fi is now it is just the not working Balman. well. It's not Team 9 working o'clock. well. They're just playing My around. Wi-Fi isn't And for working. now, Rokugo Don't know with both teams. that Let's farm a lot. Valorant alongside Yeah. my puppy with the Edith here. Very strong picks. Although an Edith against this Grok and Khalid is a little bit difficult. So if the mage pick for the side of Execute Esports will sort of determine how that trade-off is going to handle from by the side of 9 o'clock, which Hello comes everyone, into a welcome back, welcome back. positive or a negative. Usually teams who tend to go for the Zushin always has that early aggression pressure, which Rawon here, who hovering over the Valentina, just might be the answer they need. But the ultimate which she might take so far, it just looks like it's going to be the Primal Rat. I would Khalid, this time rather they're coming see a with Khalid. Husana or a Lilia even at this Kazum is point not going because hyper. I guess Kazum Team is going Executive for right now what? need some burst coming in. Sure, you have Kazum? the Grok, you Tang have the or Khalid, MM? but they do have the early game potential. S3 But this later on in edit the is game, for you do need the edit mid lane XP or burst. MM? Both the mages quite strong. I think Team Executives are looking to go I in vote for a for. head I first vote for. dive, for which I think the Zushing pick is quite good as an Yeah. answer. But then if you're able to lock her down and take her off the map like we did see in quite a few matches yesterday as well, it
kind of becomes a handicap onto your side, because you have the Nolan who's just going to pick off one and retreat back. You do need that AoE damage still for the side of team 9 o'clock in this aspect. You can go ahead and ban out the Claude, because a Claude with the team composition that is coming in from the side of executive would be nasty to deal with, Linville. Yep, indeed. And they just might lock that ban. Although, there's still options with either the Nolan being available, but then again, magic damage would be too much for the side of 9 o'clock. But to be more of a better advantage, although after they get the items, it's more difficult, yep. But physical, like Nolan is more Oh, close कसर का camper, साउन्ड कम as you करो did क्यों mention. मेरा But आवाज सुनना है catching a Valentina, catching either of this so far, it doesn't look like the optimum play for 9 o'clock there. They're gonna ban out the 1-1 instead. Oh, that's quite the interesting thing to see there. Executive Esports, I guess maybe they have a 1-1 player here to be looked out for. Although, 1-1 facing a Zushin or any of these setups which the side of 9 o'clock has, it's quite difficult. So it seems more like they just don't want to deal with it. But for now, second draft phase, picks coming in, next Zing hovering over that. Um, I think might just go for it in this pick. No, let's go for the Martis instead. I was going to mention a fighter jungler could be really good for the side of team executives right here, because you do Yeah. need that early game damage and you Mm-hmm. do need the early game snowball, which Julian, sure, he can do that, but later on to the game he yeah kind of falls welcome off in back my welcome back opinion, because then you have to keep marking on a single target. But it Yeah. can be really difficult with the kind of mobility that team 9 o'clock is showing on the board right now. They still can go ahead with the Claude, because they do need a late game security right now, because sure, you have the Nolan, you have the Edith, they do have good frontliners, but they kind of are lacking in a DPS at this point, Linwell. Yep, and Kazum here on the Brody just might be enough, but Brody Oh, facing against that, oh, that is the chip, yeah. As a final pick, not what you'd see normally, but chip usually being the setter for your draft. In this case, it's gonna be the closer. With Kazum on that Brody, and Brody up against this setup is a little bit strange, I'd say, especially with the Martis. Yeah, Martis is not the optimum pick for Executive Esports, but now that's the current draft that they have. So Kazum picking up Brody here is gonna be quite difficult if Executive Esports prioritizes him in the early stages of the round. If Hans just gets that lead, a fat Nathan is just so hard to come back against, especially he has to purify. So, targeting him, the only one who can kill him probably is the Brody or the Nolan. And in these two cases, he's going to be quite agile with there's entropies. It's looking like a really tough matchup, but they still have the chip to boot. So, all in all, it's a decent trade-off, I'd say. I agree, and I like the thinking coming in from the side of executive esports. You have the martyrs for the first 10 minutes of the game, gives time for Nathan to farm up, and then he can carry on forward. You do have two frontliners, Hmm. Khalid and the Grok, to kind of give that front lane um support that the marksman needs. But interface वाह on the side of team 9 o'clock, चलो really great burst, good engages with the chip. I mean, you do have that map control in your favor. I think we'll just have to wait and see who snowballs early, Linville. Indeed, as we head back into the land of Drawn, ladies and gentlemen, both teams marching down their lane. We're on to the NEC Online semifinals. Day number one, Team 9 o'clock on the blue side versus Team Executive Esports here. Starting us off with an early left side rotation. It's going to get the blue buff as well as red. Madara here giving a bit of vision for his team and going for an early invade. Although against a Zushin, it's quite the gamble to make. And there's his space. For now, looking at both of the lineups here, you have the what's wrong Zushin what's wrong advantage why from the midsection, but the Grok still has the faster rotate clears. So for the first few minutes, for first few seconds, we did see Edith rotate over to the other lane. And it is the XP laner, the Roma being the chip here, not really going for a fast mid clear, which usually, you want your Zushin to be more active, proactive around the map. So I'd say it's
a bit of a tough decision, but it's just the first few seconds. So I'm just nitpicking for 9 o'clock. Yeah. I do agree, and also with the kind of immunity that Grok has near the walls, it can Yeah. be a little bit difficult to deal with it, considering you do have the Zushin, whose only potential that you can capitalize on is the disruptions that she has with the lantern flares. So unless you are unable to activate those onto the Grok or the Khalid, it can be a little difficult to deal with team executives right here. I mean, good answer in form of Grok, Yeah. but the I do like the Edith pick Linwell, but the only problem with the Edith pick is if she doesn't land those stunts or knockups and gets poked out even before Yeah. the team fight starts, it can be a little difficult because the rotation coming in from Khalid is going to be really fast. I mean, faster compared to Edith right here. Very much so, also. And both these teams here still has a bit of room to play with. Lethal fight can start it off. Retribution, a bit slow there. It's that next Jing gonna finish off very early from the side of Arunachal there. And it's just farming up, getting the level 4s. Kasum still level 3. Hair and fight possibly could break out afterwards in the turtle section. But rotates, as you did mention before, chosen one with the Khalid is quite the fast and agile hero compared to Edith. But in this case, they still have the chip to maybe compensate for that. The portal could be a good potential for this initiates, and that just might be the answer for Executive Esports. So the team trying to look for an early EXP gank. We do know how crucial that is since the turtle is spawning in about 15 seconds. Really important and good poke on that Edith, pushing her Yeah. back even before the objective is starting. These kind of micro plays is what makes the difference, Linwell. I mean, you do need to have those kind of um, gameplay coming in from the side of Yep. team executive. But meanwhile, Madara just looking to be level 4 right before the turtle is going up. I mean, both the tags having the day of their life. Ooh, the top lane. Yep, indeed. Getting the level 4 trade-off here in both teams here. There's the plays to be made. And Khalid gonna be the first one to scout out bush. Have the aggression available, chosen one. Gonna be spotted out there. Rest of side at 9 o'clock. Trying to recircle there. Mother has the level 4 here. First engage starting off. And it's a Khalid being tossed around. But wall shots coming in. Getting 3 members of 9 o'clock as he gets smelted down. But Mother has to force out the flicker. Allowing Tokyo. Re-folds it up with the first blood. And amazing farmer rat, and it's just raw one here in the front lines. A bit of struggling. A band gets taken down by the Nolan. The team fight's not over yet. Marcus here coming in. Yeah, Izuma is with taking it. re-engage Izuma is and taking it. finishes I'm a little off. bit focused, Allowing guys. Tokyo getting a 2-for-1 trade-off. Execute Esports here. Does get regained back the map control and goes on to the turtle. There, on my pappy, giving the info for the first spawn, timing on those recalls, has to wait for possibility, going for engagement. No, calls it off for his team. I mean, team executive managed to equal it out a little bit late with the Martyrs onto the team gank. I mean, they could have Yeah. waited just a bit more, to engage onto that Nolan right before, because Martyrs was in his jungle taking the creep. I mean, he just panicked and ran over towards the side of Edith right there. But really smart decision coming in. They just capitalized on that kill and then went for the turtle right away. I mean, kind of equaled out both the. Ooh, that was a really beautiful finish right there onto the mid lane, Linwell. Indeed. And the next thing, getting the 2-for-2 trade-off. It's going to the jungler, that's the main part, and it's a Martis. So early games following up, it's going to be slightly more difficult, although they still have the portal here, which is going to be popped onto round 1. No, it's going to be terrifying and finished off so fast. All happy falling down. Portal's not going to be connected. Mother finishing off, maybe cleans up the portal. So, wall here, being a little bit annoying. Retribution gonna be on point. Baroque go as Martis dives into the turret. Might be a mistake as he gets taken down by Alone in Tokyo. 3-for-3, a little bit of an own commitment by the side of Executive Esports. He did kind of miss his entropy right there. I mean, he accidentally used it on a full H. Ooh. Oh, Kazum taken down again. Raw one, a bit of trouble. Mercury go here, having the time of his life, going on to Mother perhaps, but no. Unity gonna allow him to escape. And 9 o'clock here, still in the game. It's 4-4. What am I saying? Okay.
Yeah. I've Both the seen team trying to keep up the lead right try now. to fill that I form. mean, you do not Guys, want try to to fill give that the form. game one up because it's going to set the pace for your own team. It's going to set the confidence for your own team, and it's going to show up onto the second game because you do not want to play under that kind of pressure, because Fill that it form, kind of okay? Fill that form. makes your, it just distracts you, and that frustration is not good to deal with. So I think both the teams are trying to keep it even for now. Executive esports right now looking in a really good position near the turtle, but you do have the chip. I mean, he can just teleport you back onto the turtle Yeah. lane. Indeed, pops the portal. Row one, the first one to go back. Nautaro here, still immune. Doesn't go for the ultimate. There, he's gonna be pulled back by the Lantern. Zia trying to go in here. Massive damage, but the wall trash on the three members of 9 o'clock. Finish it off. Row one getting killed there. Flickers off for safety. 9 o'clock here on the run. Being chased off by this Khalid. Still chunking him down with the Sands Blaze. And he gets pulled back. And that is a free turtle for Executive Esports. As they go further for a jungle invade nerf, but not gonna be on time. They're not only with the fast clear, still on par, 9 for 9 level, and equal XP. But the pace of the game has been just been controlled by Xavier Esports. They need to mop off this Grok, which has been positioning quite perfectly. The bot tower, meanwhile, being traded for the top. Both the teams trying to keep it even. Look at next. Oh, Man, I mean, the only way to yeah. keep the Nolan at bay is to not let him farm or get that single kill on him. I think they are doing an amazing job on trying to keep him off the map, because once he farms up, it can be a little difficult to deal with for both the Nathan and Valentina right here. But if they keep playing around the madness like that, it's going to give the free space for Hans, right, with farm up. And if he manages to get his holy crystal on time before the 10-minute mark, it can look a little bit difficult for team 9 o'clock here to deal with him. Indeed, as the team fights here have been quite explosive for XFB Esports, with the Khalid and Grok just being on sync whenever, even right now in the part of the map. But here top side, portal being popped here onto the Martyrs next. Xing just might be targeted by all the members of 9 o'clock, chasing him down, pulling it in with the Lantern. Rock could go here with the range, just finishing him off right on time. XFB Esports, a bit late to the party, doesn't have the ability, but Kazum caught in a hard spot, gets traded off for the Nathan as the side of Executive Esports pushes it off even further. Rock go here, going with the fracture onto the Khalid, still pushed back, has to force the Raging Sandstorm to escape, and then Flicker also alone in circuit, committed fully, but oh my Pappy here stuck onto round one and hands. Executive Esports pushes on, trying to get off some kills to the side of team 9 o'clock, but they are not be able to do so. Instead, Entropy is going to be popped down in the mid lane turret and trying to melt it down. Rock go here, going with the fracture, fast clearance, turret being taken down, and there is the Martyrs here with the ring gates just on time, goes onto Kazum possibly, but the damage is not going to be enough as Rock go instead gets a clearance off that, and Exit Esports here respawning back on Lennox, saying coming back from death, but just to go back into the grave. I am not really sure why did Team Executive force the fight onto the mid lane. They got the Prodi. They should have retreated back to their jungle. Marta should have focused on getting his buffs, getting the jungle, clearing the jungle, and farming up more, because that kind of did not work onto their favor. The team 9 o'clock was respawning back. The death counter is not that high comparatively. A lot of overextensions coming in right there, but Windmill, the way Brody just spawned in between 4 people from that teleportation was so funny to me. Indeed, very unfortunate. So even right now he's being bullied by Chosen on. But yeah, it was quite a sabotage here by all my family. Maybe a bit of miscommunication. And you know, as we said, the team fights have been a little bit sloppy. It's the first game, I guess. Maybe they're warming up, you know, you never know, you never know. Executive Esports and 9 o'clock. They could show a better game the next, but it's still an interesting matchup so far. And even it's the 9-minute mark here, Lord already taken by side of 9 o'clock, which, you know, Executive Esports sort of is calculated, I guess, overcommitted, as you did mention. And now they're paying the price here. But Lord is going to melt it down. But mid lane section, Zia here. Perfect wall coming there Nice off wall. by Mother Ra. Yeah.
timing it there with the CC immune here. Saying trying to go in, possibly the lead on towards the Edith, but not finding it. Madara still hovering over, giving the vision, possibly for an engage here in setup. Not finding it. I think the spacing for 9 o'clock is very immaculate so far. And look at that Nolan. Trying to get that tier 2 tower. I mean, they do need the objectives for their side if they want to capitalize on the Lord. I mean, it kind of got wasted. We do know the kind of clearing potential team executive has right here. I'm just worried about the Nathan getting farmed up Ooh. right now. But wait a minute. And there's Raging Saddle to escape, but he's gonna get caught and doesn't manage to do so. Still surviving with his hands, but for only so long. Nenexing Nunes perfectly well, and Zia has to force out the flicker to escape the clutches the brown on the Madara. There, perfect wall there, only to veil the inevitable. Nathan, the hands caught in a little bit, has to go for Lito instead and wait for the rest of his team, possibly for an engage in midsection. If that has happened, Madara with the wall still going there. 5v4 right now for the side of Execute Esports. Not looking too great as 9 o'clock. It's been able to dominate a little bit more. Chasm there, the one in the receiving end. Yeah, Earthshadow coming in there. Along in Tokyo, just might get caught here. Massive entropy, melts him down. Hands, so much damage, bursts down that Edith. Doesn't matter what item she has. Hands just shreds. Man, the only problem that team executive is facing right now is the chip. His teleportation, if you get caught alone Semi-final. with him off lane, you're for sure dead because everyone is going to gank up on you. I mean, if they manage to get 1 or 2 people out before the engages, this could look a free lot for team executive right here. But I think, oh my papi, does not want them to have a easy time. But ooh, it's going to go on to the hands of Nex. I'm not really sure how to pronounce that name, but Mart is right here. But Hans looking really farmed up right now. 2-0-0, not even a single death on him. Meanwhile, Brody on 0-3-4. I think he needs to come up online right now. If Nolan manages to get a kill on that Hans right there, it can turn the tables around for Team 9 o'clock. But both the teams looking really strong right now. The level 2 lot for the side of Team Executive right here, we'll just have to see if they can get the tier 2 towers at least for all the lanes right now, Linville. Yep, indeed, as a top tier turret gets pushed there. Second tier, shut down, but Mother positioned perfectly well. Gonna be marching forward. Execute gonna win. Execute. Although 9 it o'clock. seems to be a distraction. Concealed play Okay, coming in, but we but have there's an 74 Arch Shadow to only cancel it out. in our Mother are team. still going with a flicker play. Costume taking the short end of the straw every single time. Fall back again, 0.4 right now. Very unfortunate. Turret being pushed there. Wow. Enhanced minions. Hans can be the one to get it down. But oh my puppy with the re-engage has to force out the flicker, so low on HP. There's Lantern to no avail. Alone Tokyo pops out the primal rat, but only for the defense mechanism as middle lane turrets getting smelted down by the smartest. They're pushing in even further. Exif Esports trying to get a little bit more than just one inhibited turret. But Hans here gonna be caught by the fracture. Just use the Wind of Nature to immune the rest of the damage. With all my pain, trying to go in. No, alone Tokyo also falls back. Exif Esports getting 2 inhibited turrets after a trade-off. And Kazub also, which was, I feel sad. I'm bad for him. The item spikes are quite showing up for the side of Team Executive right here. They do have that sustain. They have the lead game potential for their side because both Khalid and Madara are going to be tanky as you know the Executive time लोग अच्छा खेल रहे हैं। passes क्या हो on गया and 9 it can o'clock be में? really difficult to deal with them even with the Zushing on the table because all you can do is pick them up and disrupt them. But it can be really difficult to burst them down unless Brody or Rook Gu manages to get their hands onto them. But I think Madara is doing a really great job with those wild charges and zoning coming in with his Grok play right here. Maybe deny him the blue buff. He was in a really nice position, but I think both the team are hesitant to make the first move. Both have equal potential. What I think we are Twingo going to again? go in for a pause, but Linville quite Oh. strong coming in from Team 9 o'clock and Executive right here, man. They both are Yep. doing a good job at shutting each other down at respective timings. It can be a win for either of them. I think it would depend on this luminous lord that is going to spawn in 30 seconds for either of them.
Indeed, the team fight that's going to be coming up is going to be the deciding factor, as you did mention. But the Madara here with those wild chargers have been so good. The side of 9 o'clock doesn't really have an answer for that, and we've seen it. But we are on to the 14-minute mark, and Yo, both Yellow. teams are getting their goal and experience a little bit higher, more equal level, at least on the side of Execute Esports. They do have the crucial item builds. Even said, I think Nolan might have. I mean, Nathan might have almost finished his set, but the main weakness, or I'd say the main struggling point of 9 o'clock right now is the Brody there being a huge target by the side of Executive Esports, able to take him down whenever possible. And even early game, very Oh, yeah. unfortunate. Internet A खराब chip हो गया था. portal, he went through it and got suffered from that. That was yeah, and after that it was just accumulation of sadness. But we will be going back into the match for now. And a little bit of an early engage skirmish here onto the blue wolf side. Hans gonna melt down that blue wolf with the entropy. Then Exing trying to sneak it out, but Hans taking it. I mean, oh my puppy is nowhere to be seen onto the map. Team executive should be right now being really careful. Not really sure why he is onto the top side when the Lord is spawning onto the bot side for them. Could have ganked where chosen one is standing. Could Yeah. have been a good opportunity for him to open up the portal Ah. right there, in my opinion, I mean, Linville. But he was kept in check though, both the Grok yeah. and Khalid there. And now he goes to the top side here and gonna be chased by all the members of XQV Esports, although cancels out with a wall, but Lord is gonna be started off. Next seeing the main frontliner, Khalid trying to go in the back line, maybe get someone, chosen one, but oh my puppy forces out a flicker, trying to escape, but it's only delaying the inevitable. And the Khalid gonna be the finisher for that, but Noutland here going for a sneaky mid push, yeah. Oh, portal getting popped by Omar Papi, but no one is going to go through that portal, mate. And Exif Esports here now on a 5v4 and possibly a 5v3 with Brody pushing onto the top lane sides. Might be looking for a backdoor. It'd be quite anticlimactic if that happened. And Chosen one noticing that has to go and answer it. Although, Guys, रुको ना. contribution going to be हम ready पर from both focus sides. कर रहे Next हैं thing here, resetting the Lord. Questionable action by side of XU Esports, but low in Tokyo being tossed around a little bit. And Zia trying to go in, very low in HP. Clay still chasing on that Brody. They're both so low, has to survive, but that's an entropy. Doesn't matter though, as a flicker play, but not matter there. One charge landing perfectly well. Low in Tokyo has to go force out the flicker and try to escape with the Primal Rat still intact, but he's so low in HP. Has to switch out the force. Mother there gets choked down by Castles. Getting a little bit of revenge in this case. The raw one, they're gonna be the first one to fall. And after that engage here, Wind of Nature being popped down by Hans and out. Oh my puppy, so fast and push it on even further. But Lantern stacks can be available for that. And Dream Execute Esports, 4 members right now at 3, 4, 9 o'clock as Lord pushes down the mid lane here. Not looking very great for them as no members ready. Oh yeah, I was going so waste. invested in Martis taking that Lord. I blinked and Nolan died. Man, that was a really great wild charge coming in from Madara. He's doing a really great job at providing those setups for his team. I mean, that is the kind of lag coming in from the side of team 9 o'clock right here, because they do not have that heavy front engager, that heavy frontliner for them, because let's This be is the honest, first Edith match. is getting First match. chipped out Hello, way Zen. too early, Zex, even this before is the the team fight starts. first The chip at this semi-final point match. is getting melted alone by Hans on that Nathan. It is going to be really difficult to deal with him unless they manage to pinpoint him or catch him alone. Marta is doing a really great job, providing those disruptions with his skill too, the dance that he does. Yep. And it's just the job for Nate, because you do have those 3 frontliners for you. He's just behind and dishing out that damage per second for his team. Unless Kazoom on this Brody manages to, step up onto the table and provide that burst damage that the marksman is supposed to do. It's already 17 minutes onto the game, Linville. I think it's time that we see Kazoom do something about all the frontliners coming in, or at least manage to burst one of them down. Yeah. Indeed. Man, look at the itemization coming in This from match is Hans. He going too doesn't even long. have a shoe.
everything, whole burst damage coming in from him. He's not scared. He trusts his teammates, and Brody looking quite firm. I think he's going for the immortality. Yeah, he is going to buy that immortality. All full build. I mean, at this point, should be popping off. I think we'll just have to wait and see what both the teams have on the table. Meanwhile, oh my papi yet again camping that top lane, providing the vision for his team. Both the teams just stalling each other up. They shouldn't be giving Nolan this blue buff because it can give him at least the potential to get one off the table. But I think Valentina is doing a great job with that primal that's copying Linwell at this point. Indeed. And looks like just a stall for the next base load here, the enhanced version, where it's going to be very hard to defend. And this time, XMV Esports still need to sort of capitalize off that. So far, the previous load just went to waste. They didn't really get anything from it. But there, the ship here coming with the portal, going to be caught by Mother and melted down. But Flicker here trying to run away. While one with their fight, concealed play coming in there. So you're here. Taking notice of Madara has tried to go in, Roku go all there. Kazum can spot out on the mid lane side. Not really finding any. Oh my puppy, struggling a little bit. Wall to knock him back and possibly stop him from retreating backwards. But 9 o'clock here. Looking for an opportunity. XMV Esports not really giving it. Lord still not contested. 9x Searing trying to go for a dash and tries to escape. Madara here. Trying to wait, still has the wild charge, possibly in a matter of few seconds. On my puppy, though, with a ring gauge into black line, catches off too, comes off the portal. Then there is Rokugo, there, but not gonna find any. As Khalid, though, in the back line, precisely there. Gonna be going on the chip. Flicker play coming in from Zia, but here, then Zig trying to go in. Perfect. Earth Shatter coming in. Mother popping on the immortality and melting him down. With the crown coming in also. Next Zing finishing off Lone Tokyo. As 5v4 right now, and trying to zone off the rest of side of 9 o'clock. Esports trying to finish off the Lord, but it is a very questionable right now as that Lord does get resetted, and instead it's going for a split push here with Madara. Baroque could go here onto Khalid possibly. Doesn't have the buff ready. Entropy coming in and melting down so much HP gone. And Chosen One with a flicker, basic attack, finishes him off. 4 members. The 3 members only left for 9 o'clock, as this is a free load for XMV Esports. Not gonna be contested, jungle not there, portal still hovered upon, and ship goes for it. This might be at the end of the game for them, but trying to go for a split push. Yeah, motherfucker bol diya re. Oh, mother. Oh, that username is. All these things can happen, Yumina. Do you think 9 o'clock might have a comeback? I mean, Alone in Tokyo had a really great chance to knock up the Nathan near the Lord, but I'm not really sure why she did not use it. They are playing really passive. They did have the potential. It was a really great set coming in from Oh My Papi onto the Valentina and Hans right there. Sure, they exhausted the flicker, but then the team should have committed right there because it was a really great and one and only chance for them, Linwell. Indeed. Looks like somebody is struggling a little bit though. Alone Tokyo pops out the part right, dealing a lot of damage though. Very tanky. Khalid trying to go onto the chip, possibly dealing a lot of damage. Madara has to force out the one shot to escape, but Kazu finish him off with the torn apart memories on Happy in the front line, pops out the portal. Guys, all the break members it, of you 9 type o'clock, these but they two. are perfectly centered for a raging sandstorm. Kazu trying to survive, deal a bit of damage, and still alive there. He's gonna be melted down. Chosen One getting off the kill. Kazu getting traded off. Then Xing with the Martis just dealing so much damage. It's only 3 members, 3 for 3. 9 o'clock and Exit Esports pushing down these lanes. It's just the Zushin they have to be worried about. But there's the trophy, that's Roka go, he's gone. Oh my puppy as well, Polo there, but it is irrelevant as execute one. They are finishing off the inhibitor and taking game number 1. What is this time. What are you guys doing? I mean, this time, one got Choco. Oh my puppy, good Eden Choco. could have used the flicker. They were onto good. They him. were good. He was standing Execute one. open. Onto One more the match for them. What are One you more doing? match I'm for not them. really sure. Why did she use her flicker right there? But really great gameplay coming in from Hans on that Nathan. Shouldn't have let him farm.
I mean, that was the only mistake coming in from the side of team 9 o'clock, was that you shouldn't have let the Nathan farm, because there was no one to go on to him. You have three beefy frontliners to support him. I'm not really sure, Linville, why was that happening for the side of team 9 o'clock like that? Yeah, 9 o'clock very hesitant in those moments. But yeah, we're back into the hostess here. Leap joining us back in, and man, you watched that game. Yeah, yeah, What do yeah. you think? What do you think went wrong for the side 9 o'clock? Yeah, I Besides think what? Yeah, yeah. yeah. Yeah, I think the Nolan's pick was a good pick, and I don't think 9 o'clock focuses on Nolan. I don't know if they know about Nolan with the right build and with the right timing. Nolan is like, it's a pain, and they didn't quite gank Nolan. They really focuses on the EXP. Like they didn't they literally forgot about Nolan, and I think that was the Nathan, throwback. yeah, Yeah, yeah. I mean Nathan. Yeah. yeah, indeed. But yeah, I as you agree. mentioned, at 9 o'clock, they're not prioritizing the Nathan, who was the main shredder for South Executive Esports. Sure, you have the Martis, but we're already on to the late game there, and you saw that Nathan's damage. The Edith just got melted when you went in the bush, and these small miscommunications, small misplays for micro, it's just not what you want to see, Arya, what's going? especially for your team. What's And happening? if What's you're on the happening? losing end for that, it's not great. Those misplays, I think, contributed a little bit to 9 o'clock being more hesitant on the later phases of those fights, where they want to go in, but they're not sure if they want to go in. There's the Chip who is engaging on in the back line, but then again, the Grok Madara is like countering them on the other side, but they're not really in sync, which is very it's not great. Yeah, but yeah, unfortunate. But 9 o'clock, they still have a chance for comeback possibly. They did have a decent draft, but they just didn't pull it off well enough for defeating Exit Esports. So I think yeah, that was pretty much it for game number one. Okay, so I think we're gonna take a 2-minute break for now. So yeah, we're gonna be back, guys. We're gonna be back soon, guys. We're gonna be back soon. भाई तो गर्मी कोट लगा के क्या या 2 minutes ब्रेक क्या करेगा आप लोग को लग रहा है कि वो लोग जीत जाएगा
गए वीकली बस के लिए वो कर हम भी खाना खाएगा क्या हमको भूख लग गया गाइस चलो खाना खा के देखिएगा हमको भूख लग गया चलो 1 आवर कैमरा जूम प्लीज चिटो वेट पहले रेस्पॉन्ड करो तो एक बार click so Google Sheets okay. Okay, guys, we are back again after the 2-minute break. So it's gonna be the second match because it's the best of 3, and we're gonna be seeing again Executive versus 9 o'clock. But Google Form so who's gonna win, guys? Just comment down below, and I'm gonna go back to Linwa. जल्दी डालो बहुत boring लग रहा है हमको. Talk something. Yeah, thank you very much for that, Lip. And yes, indeed, second match of this matchup here for 9 o'clock in Executive Esports. Executive Esports taking the first game of the day, and with a very optimum gameplay there, with the Grok and the Khalid there. But you could argue 9 o'clock just gave them that option with them going for a first Zushin pick. I don't know, it was a little bit strange, a little bit messy, going for the chip also last pick, and then after them go for the gameplay and not having fast rotates, not relying on the Zushin's abilities. It was very unfortunate for 9 o'clock, but this time maybe they can focus up a little bit more and show us they could stand a chance on defeating Exit Esports. Yeah. So yeah, the Grok and the Khalid's combo, it was nice. Like I was watching the match and was like, oh yo, the Grok was turning the game so much. Like, yeah. What do you think about it, Yumina? I think there was nobody to stop the Grog because even with the Zushing, you need to wait once his immunity comes to a cooldown. So I think that was a really great and a smart pick coming in from the side of Team Executive right there. But I think this time around, if Team 9 o'clock is looking forward to win a match, maybe take a fighter onto the gold lane, or maybe an early mage, maybe a Harith or Lunox, because if you're not going to play around an MM, if you're not going to help him snowball, so I don't really see a point of having a MM onto the late game, because in the last match we did not really see the kind of gameplay we would want to see from a Brody in your team. So I think they should maybe consider playing around the gold lane, or maybe they change the pick in general in my opinion. Okay, now we'll see if 9 o'clock will try to get back or Team Executive. Yeah. So for now, we're gonna go back to the draft. And they see a Lip. Well, yeah, we're on to the draft, ladies and gentlemen. This time with Exit Esports on the blue side, I believe. And the band's already coming in, and that's the Alad, there's the Aurora and a Hayabusa for the blue team. While the red team bans here, Suyo, Sushin, and possibly I'm expecting a chip ban for say, but you never know. 9 o'clock, maybe they could ban out the Grok in this case, which Exit Esports, Madara, that's a very tough pill to swallow. I'm just distracted because I caught a glimpse of Liv on my screen, holding on to his dear life. This draft. I mean, even he is nervous with what Team 9 o'clock is going to come up with at this time around. They are going to go ahead and ban the Zushing and the Alice. They are still leaving the chip open. They are leaving the Khalid open. I mean, they shouldn't have done that considering the kind of gameplay that we did see coming in from the side of Chosen One. One of the strongest EXP lane right now, Linville. I think Team Executive should go ahead and lock that on. But you still have the Phobias open onto the table, so it can be a gamble for their side. Indeed, a lot of options to choose from, and not a very great day to be on the blue side for that. Good, but 9 o'clock here can be more flexible with those picks and possibly capitalize on that. But Hans locking at that Ruby
Hence, being the goal laner, it possibly could be a goal lane Ruby in this case, which Exhibitor Esports might just go in for a dive composition, but Good night, oof, good night. allowing How Tokyo neat locking love. in the थोड़ा Khalid mix instead. हो गया. Gonna have फुटबॉल नहीं देख reverse रहे हम the फुटबॉल draft देखने of भी नहीं probably आते the हैं. previous matchup. No, I don't ओह know. हम लोग का Exhibitor ये Esports MLBB here, की गेम they है did उसका. have the first pick, but 9 Good o'clock night. here just have a very I'm back. lot of options. Lot of Oh, options. Google Could Form go for बड़ा it here. Could go for it here. I'm कोई भी crossing my रेस्पॉन्स नहीं fingers. कर रहे थे. अच्छा है. Not really नहीं sure if करने this तो is the मत करो. caster's curse or the teams are listening to me because we are seeing काजू hands on हाइपर the क्यों नहीं कर Ruby. रहे A थे? really good pick Last against that वो Khalid लगे as well because she is the sustain queen. We do not बस call तो Ruby करो the ना guys. sustain queen for Fill nothing. that form. It Fill can that be form. really difficult to Please. deal with the Ruby later on to the game. Once she is tanky enough, once she is onto Alright, that we're queen going wings, but we'll have to wait and see. Ooh, the Ling was open. Didn't really notice that Lin will फिर can be से quite लिंक. dangerous if he manages to snowball. ये आगे का दूसरा Already लिंक मत have चलेगा. the आगे का तो बहुत गंदा था. Ruby onto your side. Just go ahead and Thank log you, that Phobius. Snow, I for mean, it's taking a membership. great Thank option, you. and yes, we are going to go ahead and see that Phobius coming in for the side of Especially Team this is the Exclusive top right mix. here. But right now, if Team 9 o'clock, I don't know. I would want to see an alpha jungle for the team composition coming in for the side of Team Yeah, new Exclusive. member. Could be a really great answer, with the true damage, and he does sustain quite a lot as well. You have the Vexana with the Eternal Guard and the Horrify can be a Third good match pick, है. but do you think they should go ahead and go with the chip yet आगे again? फर्स्ट वाला में ये टीम जीता था. No, yeah, as you pointed out, I think the alpha would have been better. But they're gonna pick neither here. Team 9 o'clock instead opting for Kazum on the Moskov once again. I think comfort pick. But membership against this expires. lineup Yeah, which membership expires. Executive Esports currently has, the Ruby, the Phobius alongside the Ling, which normally please respond when now. you are Respond why you facing guys off a are Ruby, responding in you don't want to the play a form. Ling. So I made Executive it way Esports just easier. picks it right up for them, and He the made it damage kinda which manual, Link can manual, provide yeah. mitigates I'm confused the because I missed lack some. in damage, which Ruby Ye does. third And in, crowd third control major. abilities, it's just Third going to be major. so much for 5 Exit Esports, First which one is में काजू very में गिर difficult गया to था. handle. But, a lot of pressure will be made on 9 o'clock for the positioning in हम those लोग team नहीं दे fights. जाएंगे. And बता दो early ना game बेचारों on, को स्माइली को. if the advantage हम goes तो on to मजाक Exit कर रहे हैं इसके Esports, साथ. it's going to be so hard to बताओ ना. snowball. I agree, and if they have a Moscow onto the side of Team 9 o'clock, I think at this time around, बता दो ना maybe स्माइली if को. they इतना करा focus पड़ा more है आप on लोग. getting the Moscow farm, because last game they completely forgot about their goal lane Linwell. They need to maybe this time gank his lane more, help him farm so that he has his itemization Google Form earlier. पढ़ा ना. Because if you get the Moscow farmed up, he can be really dangerous to deal with, be Guys, it a Google Form Phobius पढ़ा ना. or मेरे the लिए Ruby, easy हो if he जाएगा. manages to maintain his distance बस at आपको this बड़ा point, करेगा तो because you कैसे do होता? have the Khalid onto your team. You can go ahead and still take the Carmilla onto your side. You still have Carmilla open. I quite forgot about that. Curse of the Blood Moon can be really, really favorable for 9 o'clock with the kind of team Execute. composition that is coming in Execute. right now onto their side. They're coming with Indeed. this. And the available Romans here, Camilla, I guess they're too confident Matilda, with Link. Camilla being very optimized with bans here. Just Oh, two Angela, yeah, remaining. Ben, So because 12 9 o'clock will have to for take the notice Link na, of this. Angela They is will looking have to for close up, which drafting hasn't been their strongest play, at least in the first game. So second game here, will they be able to make up for it? Team bans coming in, but no! Did they miss it? Urkugo didn't go for the ban here. chicken dinner, See the chicken fact Team dinner. 9 o'clock here doesn't go for a ban. Might be 200 IQ, I don't know. Maxing with esports here. Gonna be requiring a little bit more thinking for that. Could go for the Camille ban once again, as you did mention. But other than that, junglers available for them could be a bane that might be a huge trouble for them, at least in those team fights. I am not really sure if they are trying to play with each other's mind at this point, because both of them missing the last. This Ooh, alpha. man. Yeah. Did I just curse Team 9 o'clock right here? Because I just mentioned that ठीक है, मैं असूया को man, असूया what's को going on? पता Are नहीं they पर listening हम to me? I'm वो not एक really परसा sure वाला था ना because कल का that जिंक्स was the कॉल only का good super option pretty coming वाला. in. What is वो left असूया भी anymore? I pretty है. mean, you still have the Nolan open. हम किसका बाल If you पसंद wanna करता है go असूया का क्यों बाल maybe पसंद with an करता है Eamon, ना but I'm not really मैं sure who पीछे था. Eamon is going to get onto
for the side of Team Executive side. Martis, Linwell, what do you think? What Uh, jungler could be uh, preferable at this point? maybe the Bane, maybe the Barats, जी but वाला बहुत पसंद लगा बहुत सुंदर है yeah, कर लिया गया either of those options are very difficult. If you go हमको for बहुत a भूख लग Roger, गया है that's very कल hard. हम But for फेस now, कैम बंद oh करो my क्या puppy, unlocking the Gato Gacha, फेस कैम giving बंद them करो a slight more of an edge. Not opting for Carmela or Matilda in this case. But you know, you're facing against two tanky bruisers in the front lines, the Ruby, the Phobius. So जब भी it's ये a ना little bit more understandable. But तो this इस does बार leave a little मैं bit more मैं options मेरे as ऊपर you can't predict the playstyle मार of गया Team 9 o'clock a little bit more. So हम XCV पोर्क नहीं खाते Esports हाँ final two वेजिटेरियन है picks हम gonna सिर्फ be the चिकन खाते deciding हैं factor of everything that is to come. And I think a Matilda could be great if you add oh James you also alongside took membership thank you so much the Ruby and Phobius. You know, just a free get out of jail thank you so free much card. Oh, Oh, I do agree with you oh because Max they वाला do यार have the अब मजा उड़ा frontliners. रही Maybe है they उसको are going to go in मार with the रहेगा not. Maybe they are going to go in with the Minotaur. doubling Oh, down. I the Lowy pick Linville. हमको बहुत बुरा लगता है I really ये like लोग the Lowy बेचारा play उसको right here कैसे बोल because the देता मुझे kind तो of गुस्सा आया rotations that you can have with the Lowy can be really favorable for the side of Team Executive because you need हमको that बहुत map भूख लग गया control, ना I and can't she has control the burst, she has the early game damage. You just have to wait till she gets onto her book and she can start disrupting people left and right with her, yin and yang ना it was reaction. was time out for Meanwhile, Izuma really good CC chain CC combination coming in from the side of Team 9 o'clock right here. Julian looks चटनी pretty राइस strong एंड to me, चावल but then चिकन he does have to focus on playing a little bit smart because a lot of CC coming in from the side of Team Executive जिंदगी का can गेम get देखने caught मेरे in really sticky हम situations. बहुत थक Oh, गए I ना think they are आज going to दिन go भर ahead बहुत with the काम किया Nolan pick इसलिए yet आज बात नहीं कर again. पाया और So ये maybe फोकस right कर रहे हैं ना ये now focus सेमीफाइनल on मैच है getting this नॉट अ जोक Nolan ना snowball ये because if he so doesn't, can be a handicap for their team yet again, like we saw into the last match. indeed. And looking at the opponents they're going to facing off this time, it's very difficult. ओए Oh, लुई wait, पिक earlier I did mention the getting to see Louis Matilda, be but here scratch that. A अरे लुई Minotaur तकलीफ होगा अरे लुई once alongside getting the marked तो Ruby and तकलीफ the होगा Phobia is going to be देख लेता है even वैसे उस more दिन devastating. And Rowan, कौन सा मैच में था मेरा टूर्नामेंट में था क्या so many crowd control एक लुई बहुत abilities, अच्छे से खेला and the था damage added रिस्पेक्ट all लोग का stacks रिस्पेक्ट it आदर लोग up. का टीम के And रारे you ने know, भी खेला था looking at the side of 9 o'clock, they don't have a single रारे purifier ना user. किरिन I thought किरिन Moscow could go रारे for the ना किरिन purifier. Then again, किरिन का positioning किरिन will be very hard with the purify if you're going facing out this team. But looking at both drafts, there, what's very strong here as we go into the land of dawn, ladies and gentlemen. Today is the semi-finals of the NEC Cup, and we are on the Mukbang online base. Day one, Mukbang team 9 o'clock on the red side and team XQV Esports on the blue side. I'm joining in भूख here. लग गया हमको I'm your caster Linmo. Join me. भाई It's देखो going to देखो be देखो Yumina जब देखो alongside, and we are about to spice things up as we go on to the battlefield. बॉलिंग इतना जल्दी This time around, नहीं Madara not going एंड and poking मुझे out तो the अभी स्टार्ट कर jungler ही from दिया the रे side of team 9 o'clock because we do नॉलन know स्टिल Mino. व्हाट्स रॉन्ग ना Oh, आज the क्या हो रहा है fall yet किसका again. इनको So we do इंटरनेट know क्या खराब हो Linville रहा है क्या that Mino early मैं on to the FK game is quite squishy. Madara needs to play it a little bit careful because if he manages to क्या get हो रहा है ये poked लोग out early on from the start, it can be a little bit difficult for Team Executive to come on top right here because you do need to get to level 4 faster. The first 4 minutes of the game is going to set the Oh, pace for either of the teams right here. Right. So the Ruby, क्या हो गया maybe she should focus just clearing on those lanes because Moscow he does have the range advantage, can be a little bit difficult to poke him out. So we'll just have to wait and see what happens because we do Don't be see having dinner now Link I'm so starting off with hungry the red buff right here. Could be any expedient rotation coming in from him. अब Oh 10 no, बजे wait, को he's already डिनर लिया taken ना his blue मैं buff. रात हो गया Oh, oh, yep, man. indeed. Starting off with the goal उन्नीस सौ lane सत्तर here. इतना लेट जाएगा Man, he's gonna go for a gang 1 बजे on तक towards जाएगा Custom though. You know, if they फाइनल होगा आज give the फाइनल advantage to the Ruby, it's just gonna be so much easier for Decisive Esports. Although, Golem starting off Zia and oh my Pappy taking notice of this, बेस्ट trying ऑफ to snipe it off. 3 नहीं होने Possibly से does get the last laugh as Zia finishes off. Level एक ही दिन में 3 नहीं रखने से still. दिखता ना Falcon is a bit slow for the next thing. Does have the retribution to be taking in, but doesn't able to do so. Neither jungler gets it. It goes on to the Gata why Gotcha pause instead, because but here is Nolan diving in dating that and girl going नहीं for a होगा ना fracture. So low on HP, gonna mitigate that. And
Team 9 o'clock here going on to the red crab here after that engage. But very unfortunate, no one was there to finish off next thing. Good pacing coming in from the side of Team 9 o'clock this time around. They are doing a good job on poking out Madara because this is something that we did not see last game. He was not able आज to ही do फाइनल that with होगा the लग रहा है Zushing, हमको. onto his table. But really good decision coming in with the Vexana right here. Meanwhile, alone in Tokyo with that Khalid, I'm quite worried for Team Executive here because the raging This sandstorms tournament vibe can be a felt little bit so difficult different to from my deal country with tournament. the avatar of James, Guardian where are from you the from? side Are of you Team from 9 Nepal o'clock. I think they or need to play it Bangladesh safe. Like you or our mentioned, neighbor country? no Which purifiers one? coming Which in from country? either of the teams. So if you get caught on into this turtle fight, can be a little bit difficult to come up from it. Indeed, very detrimental also. Level 4 sir, not available yet, still playing it off. And now comes the first one though. Starting us off, Turtle here, still being in the picture, but there is the Eternal Guardian knockup coming in. And flicker play which shows one has to try to escape rating Sandstorm current go into the back line, but then a But lot of give us damage. better to First na. McGo It's going in on to better to na. Arunachal, What they are rolling doing? with the trade off, and there is a massive Minoan's Fury, but no succession to be made. No, there it is after the engage, and there is 3 kills for the side of Team XUV Esports. Teleport coming in. And oh, they're going for a sneaky backline, but oh my papi just might go on the Couldn't be next actually. zig. He's so low on HP, trying to go for a Couldn't taunt. be There's the actually. AOG, lands it in. A lot of knockdown Bihar in the is not building the coming in, country. damage there, but there is the Nice! thing. Finishes off with the retribution, despite all odds being so low on HP. Kazumi not much farmed. Not really sure why he used his Spear of Destruction to Executive go onto the Esport भी turtle. इतना अच्छा I mean, स्पोर्ट है he क्या? just मतलब इतना gave अच्छा खेलते a हैं free क्या? kill to the side of Team ये लोग क्यों इतना Executive हाईलाइट right नहीं हुआ here. I देन? mean, this is the kind of mistake that you do not want to repeat. This is what happened last time. He got caught in sticky situations. Shouldn't be doing that. Maybe focus on farming and getting to that late game advantage. Hans did a really great job, rotating from this goal lane towards the turtle. Really much needed, but I think I'll have to give it to Nen Zin right here because he did a really great job with that retribution considering he was quite low on that HP. I mean, good job to Ravan and Madara right there zoning out Best oh my papi एक थप्पड़ मारे. with the Yeah, Gatu. but Guys, come on, Rawan, the fill the form, teleport, fill the form. almost costed them the turtle. It was पापा Yeah, very स्पोर्ट है I नाम agree. तो पता होगा ये Yeah. एक थप्पड़ मारते Oh, हैं. there's the Union play coming in, but rather trying to go into backline, possibly because of the Minute Fury, and there is Chosen One Hey, Arunachal का diving in final on match है, the he can't watch. AOG, still being वो popped देख there. लेगा Chosen निकल मेरा नहीं. One still being crowd control, but doesn't matter as round one finishes off alone. Tokyo double kill. For the side of XUV Esports, Paul coming into the bottom lane, and they will be talking Kazum Grumpy here, chocolate who's will not struggling eat. a little bit, has to Grumpy, make it out of sticky situation. अरे No, कुछ retribution. नाम को बोलने Yeah, नहीं not सकता. I'm used so there. tired today. Play off Grumpy. No, 6 million, yeah. खुद को क्या They do have the advantage on their side with the diversions because it not eat makes one. the rotation quite, faster for the side of Team Please, what Executive. cut They down? were What able else? to just go down onto the goal lane in an No, I'm instant. not Really gonna eat great chocolate. I engage have from Madara chocolate. yet again, man. I have to say, Mm-hmm. it's really यार difficult to खाने play बदल गया around chocolate with that बोलेगा. Mino, especially when he I am is खाएगा. quite बहुत squishy भूख onto लग the रहा है. early game. I think I'll have to So give it to him. hungry. Meanwhile, I Chosen need were to doing a eat great lot. job with that Eat a OBS. lot. Eat a lot. Indeed, Eat a lot. practicing it perfectly well, and Phobius does win the trade-off against the Khalid, so taking advantage of that, a lot of aggression, all the Khalid being very mobile, being able to go anywhere around the map. Turtle though, now being contested, and XFE Sports can get another turtle. Oh, Spear of Destruction almost steals it. That would have been quite the same. But there is the IAM here, and AOG being popped, but only landing on one target. And round one getting killed onto the jungler, and there is the massive minutes. Getting 2 members. Oh my Papi being the only solo survivor after the trade of Cassium falling. That is not what you want to see as a goal laner, as Moskov player. I mean, Linwell, this is the kind of advantage that I was talking about right before match 2 started, that maybe Team 9 o'clock should compensate and have that fighter onto the goal lane. Maybe a Minsitar also could have been much better against this Ruby composition coming in from the side of Team Executive, because you need the Moscow to farm up, and if he keeps shutting down like that, it can be very difficult for Team. Oh, look at that. Oh my puppy, just getting bursted Yeah. down like that. Ravan on 503.
He is going to burst you down. You cannot be careless with that. They need to. I think Team 9 o'clock should right now focus on playing around single pickoffs because a team Indeed. fight doesn't look favorable for them. Yep. But here, portal coming in, top lane side. Instead, Execute Esports looking for the objectives, even denying the jungle here for the side of 9 o'clock. Maybe Moskov or the Gaza could go for a split push from there. They don't have the ability to do so, but Hans here, being the only front liner, does get terrified, but damage not gonna be enough. It's Kazum still not able to shred him down. Hans though, क्या बोला? still, he's back to full Execute. HP already. That's the problem with the Wait, Ruby. where Venom But and Venom there, had 0 kills in Good for opportunity, trying to go in. Oh, Execute yeah. Esports, mid lane I'm gonna turret, take us, looking but very I'm so juicy. 9 o'clock though, still Let's go answering make this with thing, the huh? re-engage. But there is the IAM and with the massive hook there, play, but the AOG doesn't really matter as he's the only front liner left. Backline gets shielded down. There is the lane with a perfect pitch, boys. And goes into the backline once again. Round one not really over as he goes for another yin-yang combo on towards the Vexana. Yeah, and damage not finished there as mid lane turret can be targeted by the side of Team Exit Esports also being started. Casters And भी तका हुआ still जैसा sound pushing कर on रहा for taking advantage of the objectives and looking out to close the game possibly. Khalid trying to maybe distance himself, not finding an opportunity. And I think Hans previous game and I think कौन Hans भाग this गया? game yet again is the MVP for me. He is making those plays for his Indian team. MLBB He player is ended that initiating pretty even decent. before Madara Where are has you to from, because you James? Where are cannot you have from? him chipped down before the You're team not fight telling starts us because he where needs to are land you those Minion from. Furies on Anyways, point. thank But you for taking man, they membership. are playing a team composition really well. It looks really. Ooh, look at the Spear of Destruction coming in from Moscow, but I don't think that's a wise decision. Yep, he'll just be staying onto his lane for now. Indeed, this Spear of Destruction has not been a very optimal choice, but these portals though, ooh, that one here, very aggressive composition. Oh, there's a little bit of poke damage here. Oh my god, we're trying to go क्या in. फिर Looking इतना for भूख a लगी taunt है रे instead. Exit Esports here with aggression, still taking part control of the map for the side of 9 o'clock. Has to answer by playing it safe, This is looking for an Spartan opportunity, not trying to find Yeah, Google one Chrome will AOG. always be Maybe it could be open. the opportunity I'll reshare that it. they need to close the Once the gap. winner is But he needs to winner land a is massive one. announced. I mean, Flickers winner, are very we get the result of this for winner. the side Winners. of Team This Exit time Esports executive here, again looking for making it. mid-lanes Wow. flank there. Oh my god, with a taunt. Don't find any area. Area in Tokyo, you're getting a bit melted down. Oh, that was a questionable play here for That's the Team technique, Pro. That's one member down, 5 on 4 right now, and pushing on to the bottom mid lane, top lane turret here. Oh, Team Exit Esports you're zoning momming, yeah. out the You side just say of Team mama, 9 don't say o'clock mom and so all. much. Mom This is word feeling a is little so bit famous sad. in our community, Indian MLBB community. And Hans right there with his I am offended looks quite Oh, offended Zex. with the kind So, which of server do you plays that play? he's making. Like, do you I play in mean, Philippine server? really You want to try in questionable Indian giving out server? that Ruby. You can try in our server. And a good choice You for a can goal play lane with because us it did in my manage to lobby. give you that early on advantage. Meanwhile, Lord is going to be एकदम on the पे एक tier 1 नंबर का Lord करा हम in बहुत each काटा है second इसलिए हम if मोटू है team executive मोटी तो manages, मोटू which नहीं I है पर think फेस तो मेरा मोटू will है be a हमको बहुत one-sided टेस्टी loss for them हम because बहुत at काटा this, है oh, look at that. That's with a massive IAM मजा आया अभी Yeah, glad to know, but AOG not going to be connected as a भेज number रहे of थे effects दोस्तों from वो the एक्चुअली Minotaur. हम Can't get the मैसेज damage करके here बताएगा for round पर 1. कहीं भी शेयर मत Team करो इजुमा को भी शेयर मत करो Esports here doesn't really require the Lord to finish off the game. Possibly could go for the mid lane here push. Doesn't really have the option. No, never mind. Link gonna play it safe. Clinching still falls back onto Lito. Although looking very mighty juicy, I'd say this turret. Round 1, trying to poke a little bit. Oh, a lot of damage here. Kazim has to fall back and a lot of bursts. But the minions get clear. Lord gonna be started off though by Exit Esports, and 9 o'clock takes notice of this, has to go on for aggression if they want to go and capitalize of this. If not, they are gonna miss out and lose another turret perfectly synced by side Exit Esports. Ooh, another spear. I mean, at this point, the Spear of Destruction is not being of any use for the side team 9 It's for o'clock. sure. The Yeah, Nolan, casters लोग भी the इतना नहीं ना दे Nolan रहे not बेचारा working out for them. Did not get the मोटी chance to लगती है अच्छी snowball. लगती है The diversion
really और good खाने के लिए plays मेरे coming लिए in बहुत from ज्यादा Dragon है Mythos diversion. हमको ना Nolan not farmed up, स्किन और Moskov खाना है not बस farmed up, Zia कपड़ा looking नहीं लेना quite है behind on मेकअप that तुम करता magic भी नहीं है burst. Oh my papi not able to set up because Hello of that Predator EVN disruptions. I mean, at this point, what can you do? Because your item spike form is is right going to there take a lot of form time is to open show you up to can see the you goal can difference. They are on you can apply 37.2k on that and the lot is marching form down from mid side, Linwell. Yep, indeed. Madura here looking for a flicker play, possibly alongside the added with the Ruby. I'm offended. Maybe it could be a good opportunity. Turret being taken down. Inhibitor. There is the Raging Sandstorm. Catch one AOG in this land, but that's the goal I'm for in the India Salvation right Esports. now As visiting my Miscellaneous gets a grandparents kill off oh of that. wow So yeah, get a trade off of 2-1 avail. Lord being melted down there. Kasim does have the damage to clear off those minion waves. But अरे this why next wave only coming once ना back forwards and Phil Chosen give only One trying to once find an opportunity. Next in executive drop Joseph wow dives with skill 2 and Hats with a massive I'm offended. Not only followed out though, still survives. And Chosen One landing some skills, but to no avail. No trades being happening. Still though, a very huge profit with 2 inhibitors taken down दोस्तों both कैसे है side of बताओ हाँ planets. इधर कमेंट करके बताओ I mean, they are Yeah. doing a really great हम बताते हैं job ना at हमको बहुत setting मजा up those लगता है team खाने के लिए fights which they need to. At this point, I think one हमको good टेस्टी AOG लगता है from Oh My Papi could help them अरे ना turn the थक गया game ना because भूखा I आ did गया see भूखा the लग damage गया coming in from केक भी Kazoom अभी on तो that केक भी Moscow. लेके खाएगा अरे It's बहुत भूख 12 लग minutes रहा है onto आधा the बड़ा game. I'm not really still sure about the खा नहीं Nolan. They जाएगा could have मैच gone नहीं with the देखेगा Bane बोरिंग pick हो गया Linwell ये लोग बोरिंग से at this point because his ultimate could have been a little bit useful in Yeah. this matter. But if Nolan is not farmed up, if you're not doing the job of picking off either the mage, you do not have. I mean, just he can just go ahead and he did do a good job चलो at trying to pick out Ling early अरे onto the game. But man, oh man, right after that they just started falling like dominoes. It's just a chaos onto the battlefield at this point. Indeed, very unfortunate. ये And लोग yeah, Rokugo 9 though, o'clock से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था decent jungler, but you know, मतलब ऐसा it's not the खेलेगा और क्या ये perfect काजुम hero हाइपर क्यों for नहीं him कर to रहा be in काजुम this हाइपर करने से matchup. अच्छा था काजुम का The हाइपर अच्छा Bane नहीं है maybe क्या फर्स्ट मैच even में a कौन किया different था jungler who could काजुम ने have तो a किया था different ना role, but you know, Nolan, the यार main सर्दी भी हो गया advantage of having a Nolan is you मेरा can नाक farm में up पानी pretty आ रहा है fast. You can be almost everywhere in the map. A lot of dashes, energy conservation is very good with the purple buff. Though it didn't take advantage of that. At least he got picked off by XMV Esports. Very hard to gank either of these lanes. A Phobius or a Ruby don't first have time I flicker. think that It's name so hard to set yes up I unless just your look team at lands massive that abilities. And okay anyway Gato Kacha, you know, he's a great hero, but you can't really land a taunted skill 2 alongside of that. But ooh, Divergent coming up. And there's a spear. But a bit late to the party, alone in Tokyo. Possibly looking for an engage. But he's just here to surf around the board. Madara with the early aggression on flashy towards wait let me see Active Esports. They're gonna take the Lord. And just, it looks like it just might be a game over for the side of 9. 9 o'clock. Yeah, I Yeah, mean, 9 at o'clock. this Yeah. point, they are so pushed back onto their base Unless, with yeah. farm difference. They really cannot do much unless you manage to land that wombo combo with the aging sandstorm and one good ये माफिल AOG विन for जिसने भी God's लिखा है sake. ना this I mean, guy you do have the juice माफिल विन bomb to just come out on you have top, to but let me know your you YT name I mean, they're not no need to using their type your ID resources and Indeed. team just type your executive is not YT name letting. no Oh, that's with I'm offended. Yeah, Flicker Blake coming in. AOG also landing on. Yeah, two Zoner, I members got of the side of yours. the And Predator also, I got There's a yours. huge What's wipe your name, out Debo? there. Yes. Phoenix seeing GG. clinging up ऐसा करो, shop ऐसा and करो. getting a triple kill as in a maniac. हो गया, Only game time will over. tell, but IGV Esports here finishing off the Execute match, ला 9 o'clock हार taking गया the तो second game for a 2-0 and moving on to the next rounds as team at 9 o'clock falls. खत्म games up over me also grumpy Berot Berot का नहीं आया रे With the draft yet again, Linville, they do have the gameplay, but their drafting kind of falls off. In my opinion, even the last match they did manage to draft quite good, but then the execution is not showing up. The synergy is not. दुख लग रहा है आज फाइनल में कौन जाएगा रे बेस्ट ऑफ 3 ये तो फाइनल चला गया एग्जीक्यूट जीजी फाइनल मैच I mean, Nolan is trying, but what can you do if you keep getting shut down early on from बेरोट the आपका नहीं game? आया बेरोट का नहीं आया Good एनिमे PC, का good आया initiation potential, but it just did not work in their favor. I mean, you did have the Louis
really great diversion plays coming in. I have to point that out. Yeah. Khan's doing a really great job not letting एग्जीक्यूट किया Madara दे सॉक initiate करा because दिया पूरा को चोको दे Ruby दिया with the IM ये offended ओमा पापी को along with आगे भी the चोको launch, दिया था really, ये आगे भी चोको आया था really great combination coming in. And the Phobius shouldn't have given the Phobius, in my opinion, should have या kept खराब नहीं बोल रहे वो the रिनम Sophie खेलने से दिखता Hopkins रिनम and क्यों banned नहीं out खेले the ना Phobius रिनम like खेलने they चाहिए did था the ना last time. जो रिनम को जानते हैं रिनम खेलना चाहिए था बाकी का बाकी भी अच्छा खेलता होगा हमको नहीं पता पर 9 o'clock हमको रिनम और काजू को बहुत अच्छा खेलता है रिनम तो हाइपर था तो मैंने क्या Yeah, रिनम it को was क्या it, हो it गया was था really really रिनम really कहाँ भाग great गया ना match. कहाँ Like बिजी हो गया क्या ना the first match it was a खेलना था ना 20 minute एटलीस्ट थोड़ा game अच्छा and होने then का the second game it was like चलो 14 जो भी minutes. हो अरुणाचल I अरुणाचल thought ही 9 जीता है o'clock जो भी जीता है could चलो अपना जगह कहीं do जीता है ना better. I don't know, but like Yeah. the Nolan's pick, it was not that much of a good because like Response everyone done could na, escape response done. from him really Anyone easily. wanna still And participate? You yeah, can give your the Louis this, pick you and can the give your Minotaur's pick. It was a great pick. names, I okay? really like that Respond combo. में क्या I करना है? Type myself your do name that and combo. ID. So Sorry. yeah, What's your name you guys and the already team talked you are about the supporting? match. You guys already talked everything about it. So I don't think we have much to talk about it. But like yeah, we're gonna talk. Or Just- one last factor also. Exif Esports there. When I was hoping for the Matilda pick, they went for the Minotaur. So Luo Yi, they added, I mean, I only got removed 20. the trade-off for having less mobility in rotations. The divergence, as you mentioned, was very keen. I mean, it's because of that I say that Exif Esports was dominating so hard from the early to mid. And even the late game, it was they were too fed. They were too caught up in getting all the map control, and they just gave no space for 9 o'clock to work with. And even in case they could try to contest it, but XV Esports was just too far ahead in the game at that point. And you can't really melt Ruby and the Phobius Gorka, if they're both type करो ना. protected by the Minotaur and the Louis every single time. Like that was looking almost impossible if you were on the side of 9 o'clock. yeah. If we look at the data, like it was like 100% team fight participation from Yeah. Louis and from Minotaur. It was wild, and Louis didn't even die once. It was a zero death match. It was really great from both Yep. the mage and the roamer. Yeah, what do you think about it, Yumena? I mean, So- Zero, that's on Luoi speaks for itself because you have a Nolan on your side, you have a Gato who can easily jump onto the back line, and still the mage is on zero death. I think it speaks अच्छा for killer है. itself. I do not GG have to execute say वाला, where execute 9 वाला. o'clock went Oh, wrong. आप लोग The 9 MLBB o'clock को vote yet किया again था, and so the there's no governance weekly has been pass. swapped, in my opinion. No giveaway, guys. Weekly. Oh, so I think You guys have voted for 9 o'clock. I think it's done for 9 o'clock no now. weekly pass. Sorry. it's gonna be Team Executive Esport tonight. And so the next match it's gonna be between MAF versus Hello Kitty Gang. Let's wait So, for the yeah, next one. What do you guys think about these teams? Yeah, very very good teams here. Top tier, you might even add, and I think it's going to be a very spicy match. Although hopefully it won't be one-sided, but both these two teams are very really good. So they might give us a really good show, especially with the drafts there. They are up to date. Even some of these teams have added the Suyo to the mix, and we might see them in this next matchup here, unless it gets banned out, of course. But yeah. फ्लैश जी आपको पता है ना हम लोग का वीकली पास कैसे वर्क करता है इट इज फॉर ऑल Both इट the इज teams नॉट quite फॉर good. ओनली I द mean, I वोटर्स really agree with Linville right here, but I'm rooting for Hello Kitty just for that. Yeah, the name. I want Hello Kitty to win. I don't know why, but that's just name. It's just a name for me. Yeah, bro. It's a great name to be in the tournament. I don't know. Yeah. Well, I'm sure And you've just heard so of. awkward on camera. You're just so awkward. It just makes me I laugh. mean, well, yeah, you've heard of team Meow Gang also, right? So we have two cat-based teams at least in the Oh, Meow tournament. Meow Gang. There might, yeah, there might be So more. next I know one there कौन might be आएगा? more cat-based 12 ones, बज गया रे, but इतना yeah, लेट हो गया अभी तो. a lot of teams have very interesting names here. I mean, there's one with Assam Rifles, the Manipuri team, but yeah, Oh yeah. it's quite interesting. Yesterday, I show Yesterday. Glowzop. Yeah, Glowjob. Glowjob, Glowzop, Glowjob, Glowzop. Glowjob, guys, Glowjob. Glowjob. It's Glowzop, Yeah, yeah. Glowzop. I said Glowjob. Like, come on, guys. Yeah. What a name.
Yeah, I'm running out of topics right now. You guys ask me question and I'm gonna answer now. Lynn will do the honors. I'm really bad at asking questions. Okay, okay. So from a perspective of a streamer, from a content creator, having all these tournaments for MOBA 5v5 here, you've started to see like we all know some of the top tier teams before, at least before these tournaments. Some of the names, like for example the ABM or IGN here, or even Myanmar Gang, sometimes LF, Lakshmi Chitfun, and uh, even in the mix you add ET also and Evil Esports, which is, I don't know, very popular. But you know, now we've given a platform, at least for the Northeast, for now, for a lot of teams to shine. And even yesterday, as Assam Rifles took down ET, one of the more popular teams, and who have been known to even defeat ABM, which is like a top dog in the scene. And what do you think about that? It's quite surprising. There are a lot of new teams out there who are showing a name for themselves, like the place. Yeah, of course, they probably are seasonal players, but they're new teams. Yeah, I think Mobile 5 is giving a lot of opportunities, like for the players in India right now. It's like it was back then, and they're back. Yeah, this is Mobile so 5 simple to 5 is vote back, now, and but you they're guys back don't with know. lots and lots of stuff. They even have lots of creators Oh, create this stuff, M create lover, videos. na M lover, yeah, Yeah, so I M think it's a lover. great opportunity, guys. So, guys, download Mobile 5. Oh, So big for now, description. we'll Maybe take a it short break and also we'll be right back, falls. guys. Mhm. Yeah, Yeah. But yeah. Talk. I think it also falls down to the fact that these teams have been on top for Oh, so Grumpy, where are you many from? I'm months. from I mean, Arunachal I would say Pradesh. years, that all these new upcoming players have had the chance to study them a lot. And I think most of Izuma, take us are membership na. really familiar with the Take kind of premium, strategies they are going around and premium. playing with. So It's not if a tired. team is Take really good at premium knowing YouTube. macro and micros, they can easily, हम तो draft premium around लेते and हैं. play around to break those strategies like we see in ABM and ET. So I think Yeah, that is 9 also o'clock one of the lost. major factors Yeah, why a sad, lot sad. of top teams are falling down. Yeah. Oh, anime books na. I cannot be That's like all I wanted to that's say. it. TV, like doing the weekly sorry, Yeah. giveaway So for for now, only thank you, Yumina. Thank you, only Nirmal. I think winner we're gonna take a short what? break Winner for now, chicken dinner. and we'll be Oh right back, no, guys. what Yo. a gare Yeah, bad it's me, nikal Lip sakta. Gaming, signing off. Only the teams that Out of the only the teams from winner na. Sorry, only the what? Voters who voted for what? Me. I'm vote again. So it's just equal for everyone. It works for everyone, okay? It works like you don't have to vote in poll as well. You have to give me your YT name. If the voted team in poll wins, highest higher, whatever. then then we go for a Spain. हम बहुत थक गया रे. Someone give me energy. Flashy, good night. हमको तो और 2-3 मैच देखना है. देख के सोएगा हम तो. There is premium membership, no? I mean YouTube premium ना. YouTube premium ले लो. वो अच्छा है. No ads. मेरा में ads नहीं आता. Why you guys not giving me likes? Come on, give me likes, and I give you kisses. I put Nina right. Can you tell me more about Northeast? Yes, I can tell you about more Northeast. Northeast is a beautiful. Okay, I won't tell you anything because I myself is from a Northeast state, right? Right. So people in comment, they are going to tell you about the good thing, that Northeast states have. So Zax, handsome Zax,
कोई बताओ तो नॉर्थ ईस्ट का बारे में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे सुंदर जगह कौन है? कौन है? कौन है? got it. मेरा हाथ फिर टूट गया क्या? लाल तो ते चले भी मिटा भी नहीं निकले पाए। No फ्लैशी। बहुत भूख लग रहा है और I am spending 200 just to get 30 seconds. या 10 seconds 30 seconds भी होता है कभी कभी। हम तो बहुत नहीं सकते हैं ना, और हम बहुत वीडियो सीखते हैं ना, नॉट रिलेटेड विद गेम्स, एजुकेशनल वाला, इसलिए हम ट्राई करते हैं। स्टूडेंट आई डी से करो ना, ओनली 89 रुपीज़ पर मंथ, नॉर्मल 149 है क्या? ऐसा कुछ है। इंडियन कल्चर, अरे कोई बता दो ना इसको इंडियन कल्चर। अभी about the pure Indian culture I don't know, but about my tribe culture I know. And if you want to know about our Indian culture, you have to go through the sociology subject. Sociology teaches us about that, a lot of Indian culture and how different types of Indian culture. And our country is democratic country. Many laws, many rules. Did you even understand the way I said? When is the next match coming up? Oh, that one, I did. गंपी का मुख पूरा फूल गया, गंपी का मुंह फूल हो गया थे। हमको बहुत मजा आता है खाने के लिए। चितास, ओए, बस तो वीडियो कैसा है बताओ ना। ये हिजरा बताएगा या नहीं बताएगा रे? स्माइली मत हो ना, फाइनल मिस्टेक ही होएगा तू गाइस, प्लीज ना साथ में देखो ना, साथ में देखो ना प्लीज। हीरो भी गायब हो गया। ओए वेयर इज हीरो? हीरो को बुलाओ तो, हीरोजिन को। ये तो कॉपीराइट दे देगा रे, क्या क्या म्यूजिक डाल के ये लोग। Whatever. आ गया। चलो guys, आ गया। Anyways, ladies and gentlemen, welcome to the last semi-final series of tonight. It is going to be Team Marv going against Team Hello Kitty and Scared Yet. What do you have to say about these teams? Because we just saw Hello Kitty, like they're a little bit of a new team. We see them perform. Hello Kitty really versus well, Marv. Oh, and Marv guys, Hello already Kitty has a लोग बहुत बढ़िया खेला था बोला reputation. ना। So, चलो what Marv are your versus Hello Kitty. expectations for this game, man? Like Time anything to make you my want to say? poll. Time to Let's make be my honest, poll. dude, reaching up at this stage is definitely a big mark in their own achievements that they're trying to make. And
Of course, being on this stage also means a lot of pressure is going to come onto you. So it's a very important scenario in front of them that's going to play out, because it's the Arunachal Pradesh semi-finals, and this is a moment where you know you've done a lot of hard work to reach. So now falling back down is going to give you a big heartbreak. So yes, a pretty big deal for not just one but both of these teams. Yep, definitely. And I agree with you. I mean, this is the semifinals, and they will be proceeding to the finals for to represent the state in this Northeast Cup Land tournament. So this is the big deal. They have climbed a lot, and going down, it is going to hurt a lot. But at the same time, the team that will make forward, it is going to be as much as exciting. So we are ready to hear to witness this. So Solskjaer, you are also familiar with the teams. Like, what about your expectations? What do you look forward to? Is there any particular hero that you want to be picked? I mean, if you see the last match between, so they picked the Chalo, two combo. I would like new to again. suggest that's the Ruby and the Responses Focus. deleted. That worked out so miraculously well. New And I'm responses here coming. to look forward that if they Sab do is not pick that, ID maybe dalo. they ban that, Sorry, or either of the what teams name will man? pick one hero. Team And if they got the supporting. two heroes, that's going to That be a team little bit supporting. difficult to counter. Flashy no good And night that's, no that's good because night no Marv is a please. very well-known team. And hello, इतना Kitty जल्दी gang. कौन सोता है रे? And you know, सही people are बोला talking रे? in kitty languages right now with me in मेरा DC. कमर So तो I know कोई why they have मालिश kept कर their दे names in this Hello Kitty gang. No. You know, someone is saying meow meow ये meow. दो meow. मैच करो ना Yep. माफिया Coming back तो to you. खेलो Do कि you प्लीज think दो that we मैच can करके see खत्म करो तो another major फाइनल मैच upset in ये this दो बार tournament? करके Like, खत्म कर दो yesterday only 4 was matches eliminated. Today please is try could to we see Marv or Marv 20 can minutes do under the 20 minutes domination game again? no good morning good night Grumpy can you suggest me any it good would food from be- Northern I mean, Yes. it just like at this If point you it are would be like non-veg, third go time in and a row, eat and that pork. would be insane. Mazak hai And na, mazak it hai. would change the pace of the tournament. Like, you almost can none of the try top out Naga teams will foods. be like Naga feeling foods safe are anymore. so Like we could be the good. next Yeah. one that could And be taken out. every And I tribal think foods are good, you but I mentioned prefer to Mark is go. already I probably prefer feeling to the eat pressure Naga right food. now, because Naga they're food. one of the people that you know क्या the players बोलेगा? and the fan base is looking Cuisine ना forward to. बहुत And tasty है, very hopefully tasty. they can continue their domination, or we also have to see Hello Kitty Hello, gang. They bees. probably Welcome have to a lot the of supporters with their name. stream. So with that, given our opinions, we are gonna straight head into the draft phase, and I'm gonna giving it up Response, to come Stadion. on, fill up And the- fill so, up that you know, I don't know, man. I'll just continue my mewing streak, I guess. Chalo, this is Marv, one of the top my scorer in God. our Thank you so Arunachal very much Pradesh. for that, Ray. And My yes, with state, that, Arunachal ladies and Pradesh. gentlemen, By the आप way, लोग आ Zax, चुके this हैं is आज from के my आखिरी state. game Okay, में। this Best of three का रहने so वाला this ये मुकाबला today's Marv matches are all बनाम from my Hello state. Kitty. And this The is the state fun that I part. belong हम from, इस and game that के is लिए Arunachal करने Pradesh. वाले हैं। तो So, हमारे बाद हमारे सामने हो चुके हैं। So- फर्स्ट पिकिंग फेज ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है। खलीद पिक उसको आंसर करने Yeah, के लिए educado, सीधा just saying, progress educado, करना क्योंकि आपने educado. दोनों pick कर लिए हैं, you're kind of revealing your draft. जी बिल्कुल सही कहा आपने अंदर से वो काफी एक्साइट कर दिया कि आपने बोला कि यहाँ पर गेट और फोबियस ले चुका है give me like और tomorrow. कितनी In Manipur गैंग है we यहाँ just पर said उन्होंने give me काफी सारा like ट्रैफिक tomorrow. कर दिया है और Tomorrow, अगर देखेंगे तो माफ ने यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक बिल नहीं करा मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने लिया है कैरी एक बार go एक through वेक्साना करो। और एक नो तीन बैन तीन पिक हो ही गई है तो काफी ज्यादा ट्रैफिक रिवील हो ही अरे गया अभी तो गरम आ रहा है मैं आपसे हमको, fan पूछना on चाहूंगा करेगा। कि लाइक क्या गेम प्लान रहेगा यहाँ पर टीम माफ और टीम अभी तो गरम Hello आ रहा है Kitty gang गरम का। आ रहा है रे। जी देखिए अभी जिस हिसाब से वो ड्राफ्ट रिवील कर रहे हैं लेट्स बी ऑनेस्ट आपने कैरी ऑलरेडी दिखा दी है तो आप अपना गोल्ड डिनर रिवील कर चुके हैं इस पॉइंट पे साथ ही साथ सामने की तरफ से एक वैलेंटीना भी पिक करी गई है तो काफ़ी अच्छा पिक इन टर्म्स ऑफ द ड्राफ्ट मैं यही बोलूँगा कि हेलो किटी की तरफ से जो अभी उन्होंने दिखाया है क्योंकि आप एक्जाना और खरीद किसी की भी अल्टीमेट पिकअप कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर बैन की कैटेगरीज देखें तो आप सीधा रोमर्स को बैन करिए जनरल्स को बैन करिए टोटली आपके ऊपर की चॉइस है आप जिनको बैन करना चाहिए इस पॉइंट पे जो कि आपका ड्राफ्ट टेक्निकली काउंटर कर सकते हैं बट मार्क इस टाइम पे मॉस्को को बैन कर रही है भाई लोग हिंदी बात कर रहे हैं अनबिलीवेबल सकते हैं बट हैरिट Unbelievable. शायद नहीं होगा क्योंकि आप पिक्स देखिए हेलो किटी के 3 मैजिक ले चुके हैं वो यानी वाह बाकी मिस भी या फिजिकल डैमेज देने वाले होने चाहिए तो शायद एक क्लॉड बैन या फिर एक like can you please tell me in English can't understand what you are saying the last जी part बिल्कुल after बिल्कुल। Naga हाँ, food Lord Van और Lord Van cuisine देखने को cuisine मिल सकता है, cuisine you but don't अगर understand with this देखें word तो cuisine अभी जो लास्ट बैन है क्योंकि उनके पास अभी एक जंगलर नहीं है टीम ऑफ के पास ठीक है Hey, come और on, अगर guys, जंगलर पे would देखें no, तो would यहाँ no, पर आ would गया no. है She's फैनी saying बैन it's good. फैनी ही बोले फैनी आजकल जो हम देखें तो काफी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ टूर्नामेंट से You don't काफी ज्यादा understand चल रही है फैनी my और एक दो way जंगलर बैन आए of हैं अभी देखना पड़ेगा कि माफ यहाँ I'm क्लॉड actually बैन कर दे very किसी tired, आपने okay, बोला था that's भाई why I'm यार just कैसे लग रहा है doing आपको सही lazy साबित this हो week, गया guys. फैनी कितनी बार हो चुका है सही साबित काश को मुझे 7 करोड़ रुपए भी दे देता है इसमें बट चलिए कोई बात नहीं वो तो शायद 7 करोड़ एग्जैक्टली दैट 7 करोड़ अभी
नहीं बोलेंगे, बच्चन साहब बोलते हैं वो। Where is the चलिए, link for अब Google आपने from किसी documents और from को बैन कर दिया कि that is in my head forehead. जो Can you gold see winner है, this? वो थोड़े दिखाई confine दे हो रहा चुके हैं। है? मेरे हिसाब से रूबी भी चाहे तो पिक कर सकते हैं इस टाइम पे हेलो किटी के प्लेयर्स। Best तो ये सब stickers ना, ये आपका दोस्त suggest किया। जाना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट पूरा गेम कैरी कर सकता है आपके लिए। लिंक, नोलन, बानी, आया कल बिग मैंने बोला मैं आई वाज फिगरिंग इट आउट। Again, उन्होंने सीधा पिक कर दिया। सुयो आ गया है, सुयो तो भूमि Why में don't they आगे होने change की their नंबर roles वन आ now? चुका है। Why सुयो इस hype, भूमि one में। has to और go जंगलर hyper, होगा यहाँ one पर has to टीम go हेलो pink. किटी They गैंग should का be भी very पड़ेगा यहाँ पर। flexible, right? जंगलर में क्या I पिक don't करेंगे like यहाँ one पर hero, one टीम role आप player, right? जाएंगे वो कभी शायद कभी से रोल भी चेंज थोड़े करने से ना, magical why only जंगलर one पे role, जो one कि role है है ऐसे ही जाते हैं कोई जूलियन। और लोग। यहाँ पर हाइपर एक भूपा तो हाइपर साहब एक खेलेगा जाएंगे फॉर लाइफ घोड़ा टाइम, जिसका एक नाम ही है रोल हाइलोस। खेलता है, बोरिंग नहीं लगता है तो क्या? अगर ये एवरीडे हाइलोस सेम लेंगे, खाना खा के। ठीक है, उनका रोमर अभी हमें कोई flexible दिखा तो like me. साफ साफ गटोट ले चुका है। ग्रैब भी 8 कमेंट्स अगर ट्राई रोमर कर, गटोट अभी खाता हम है, नहीं करेगा। तो रोमर अगर रोमर बहुत बना गुस्सा हो हुआ रहा है। देखें तो किस पे ज्यादा अभी एडवांटेज no आपको लगती energy, है कि please. इस मैच में है एज अ रोमर Zoom अभी हम कितना नहीं कर मोबाइल सकते, एक अब रोमर हो बहुत सकता है, लग वो गया। यहाँ पर कौन दिख रहा अभी है नहीं आपको? करेगा बट देखिए मैं स्ट्रेट अप एक ही बात कल कर देगा। घटोट का अच्छा सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है ऑलमोस्ट लाइक Oye, where is that response? Is you guys don't wanna हीरोज चाहिए जो don't want diamonds? कर सके। तो एक्सबॉग और कैरी बहुत ही बेहतरीन पिक है उस सेंस में। एक कहीं ना कहीं आप फ्रंट टू बैक कंपोजिशन कब करेगा रे ये लोग? इसमें ऐसे मैन्युअली लेने शुरू कर दो, ये लोग नहीं डाल रहे, देखो ना इतना बुरा है। मैन्युअली लेने शुरू कर ज्यादा दो। से ज्यादा बस एक एंटी Would you like to see your ex-press go thank? Yes, I want him to thank for me. इस पूरे के पूरे I want him to सिनेरियो में thank for me. एक important And factor I'll be आ जाएगा, a इस July समय jungler. तो मुझे नहीं लगता है He'll link thank for me. He'll be the thank link for me. और उसके बाद I will see Chin video गाना चल रहा होगा। इस्तेमाल करने की सोची है, बस चलिए समझ में आता है। ओ नहीं सो सकते ना, बेस्ट तो नहीं सो सकता है। भी आपके फिजिकल डैमेज We are the creators. We cannot हो जाएगा, sleep. कोई दिक्कत ज्यादा नहीं। ऐसा बात नहीं, हमको watch करना है। सोच का है। This is सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला a है। project कौन सी टीम जीती that है? we are already participating. तो नहीं देखिए अगर यहाँ नहीं, and I पर cannot go सोने पे against the सुहागा लग rule. जाता भाई की तरफ से, बट उन्होंने यहाँ पर निटल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अभी भी लग रहा है कि जो कैरी पिक है, देखो उन्होंने टीम के ड्रॉप को बराबर लग रहा है। कैरी जो है बहुत कंडीशनल हीरो है, कैरी थोड़ा सा फीड हो गई। Oh, here we go, guys. चलो देखते हैं। Wow, Nathan अच्छा खेला था. This is the same Nathan, I guess. टीम हेलो किटी From गैंग को our अगर नहीं मिला जा रहा first खाना round, पीना, तो quarter दोनों ही टीम final. के ड्राफ्ट में यहाँ पर इक्वल तो लग रही थी। आप देखें तो यहाँ पर जो Valentina Pig काफी is stacked up damn ड्राफ्ट good. लेके आई है, तो आपका क्या ख्याल है Damn इसमें? good. ये Valentina बहुत अच्छा है. This time no frozen वाला. आगे बढ़ने Why वाले इस no गेम के Aurora? अंदर हम ऑलरेडी Aurora ban हुआ था क्या? मेरे हिसाब से अगेन Aurora ban हुआ था क्या? Oh, Aurora wasn't banned but still they went for this. Wow. इतना हिम्मत है रे. आगे बढ़ने वाले लैंड ऑफ डॉन के अंदर माफ बनाम हेलो किटी आज का आखिरी मुकाबला है। आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का ब्रॉट यू बाय बैटल नाइट्स ई स्पोर्ट्स। मेरा नाम है स्केट, मेरे साथ जुड़े हैं सोल स्काई और हम आपके लिए कहानी रचेंगे इस आखिरी गेम की। लेकिन उसको रचने से पहले अरे मजा नहीं आ रहा एक शॉट आ चुका है हमारे सामने। तो अगेन अरुणाचल प्रदेश का सेमीफाइनल्स है ये। फाइनल Going to tell the unluckiest person in this chat. The unluckiest person in our stream is me myself. I have to bear new players like you. When it's our time to play together, you guys are always picking some heroes that I cannot carry. You know, like Leila, Johnson तो कौन लिया रे कल? ऐसे घटिया वाला Johnson था ना यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। करेंगे एंड बिलो साथ ही साथ अकात्सुकी अब दोनों अपने अपने लास्ट हमको बहुत गुस्सा हुआ था। क्रेजी सैंडस्टॉर्म के साथ आगे जाएंगे। ये क्यों बार-बार पोस्ट होता है रे? नेटवर्क अच्छा नहीं, पर अरुणाचल का नेटवर्क अच्छा तो नहीं है। वो कैसे करेंगे? हम सच बता रहा है। तो सवाल वहाँ पे यही आता है। जैसे कि आपने बोला कि अगर वो आगे जाएंगे तो मेरे को लग रहा है कि सुयू अपना पूरा किट इस्तेमाल करके, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर नेटन का भी काफी बड़ा रोल हो सकता है क्योंकि नेटन अरे उन पे एवेटर ऑफ द गार्डियन भी है बैक जाने के लिए। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लाइक अगर एक बंदा माफ जीतेगा लग रहा है कि आप लोग को गाइस बंदे को आगे जाना पड़ेगा, अगर एक बंदा आगे जाएगा क्लीन स्वीप गया और या फिर आइलोस जो खलीद है उन दोनों को यहाँ पर ताल मिलाना पड़ेगा ताकि वो कर पाएंगे। पैटर्न वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्योरीफाई लाइन है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। I am just so tired सेकंड में हम to discuss about यहाँ पर युद्ध भूमि में losing matches. I know it's no discussion about rank बकवास वाला चीज है। Never play rank guys. माथा खराब करने तो go and play. काम कर रहे हैं वो लोग। If you want peace in your life, don't play rank. Go classic. Keep practicing. Try to win. तैयारी पहले मिनट के अंदर और देखिए कितना ज्यादा डैमेज उसकी भी टार मारता हुआ, लेकिन टिकर करने की कोशिश साकिया ने उन्हें पकड़ा और सीधा घर का रास्ता दिखाया। ये
bit more than what he could चुप chew रहो तुम eventually had ग्रम्पी to push क्या चुप back. रहे हम चुप नहीं Bella बैठेगा ओ gets इसका बात first सुनना है blood. लड़का लोग का सीधा ओके 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 LOBB ओके हाथ देन में। आई साइलेंट Thank you, myself I अच्छा mute लगा, पर यहाँ myself पर उन्होंने काफी bye bye अच्छा जैसे I'm बोलते हैं ना muting तकनीक अपनाई। myself यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटजी रखी कि अगर इन्वाइट करना आएगा खलीद तो उसको धूल तो चढ़ानी पड़ेगी, तो उन्होंने चिटपा भी दी और उसको धूल। बट अभी देखें तो यहाँ पर ब्लू बफ में तैयारी कर रहे हैं और wow I इसके got बाद a शायद new से पॉसिबली email गोल्ड लेन I गैंग हो got a सकता है। new भाई email आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ब्लड कहाँ आने वाला है? बेचारे ग्रम्पी बेबे वरना डांस हाफ की तरफ से फर्स्ट ब्लड उनका कहाँ निकालेंगे वो, क्योंकि एक कौन ball हमको भी हो ईमेल चुका कर रहा है तो और ईमेल वही में ना एट जो दिस आपने टाइम बात करी, एट दिस जिस आवर ना मिट्टी बोल पे में है राइड करता हुआ आ रहा था खलीद, उसी में उसके शरीर को भी दफना दिया गया। वहीं पे देखिए अभी भी टॉप लेन में बैक एंड फोर्थ फाइट चल रही है जिसमें अच्छा खासा डैमेज पड़ा है काचुकी को। अब उनको दिक्कत आई हेलो एक्स प्रो किलर ओबिया उनको बार बार पुश बैक करते रहेंगे इस फोबियस के ऊपर एंड लेन फ्रीज करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब भी हम सोच का इन चीज़ों की बात करते हैं। बट यार फिलहाल दूध पीने में दो रहा हूँ कॉन्स्टेंटली एंग्री कैट क्लियर कर सकते हैं और रिवर कंट्रोल मेंटेन रहेगा माप के पास। जी बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ा सा पोकिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सुयो, और 15 सेकंड में यहाँ पर कछुआ महाराज आगमन कर जाएंगे इस भूमि में। और देखना पड़ेगा कछुआ महाराज कौन ले जाएगा इस बार, क्योंकि कछुआ महाराज पे जो ताकत मिलती है उसके बाद आपको जो शील्ड मिलती है वो काफी काम आएगी आपकी बाद वाले गेम में जो आएगा 7-8 मिनट के बाद। रेस्पॉन्स अभी जल्दी दे दो वो रे जो टीम फाइट थी जैसे कि आपने बोला उसका बाद हम नहीं थोड़ी सी लेगा दुविधा रे। में पड़ सकते हैं, क्योंकि जब उन पे जरा से बोलते हैं थोड़ा सा प्रेशर आ गया उस लेन पे। बट अभी देखें तो यहाँ पर बंदे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर कछुए के सामने। जी बिल्कुल, लोग कछुए के आवाज सामने बहुत लो आ रहा है। यही बात है। बट चलिए आइडल सोच लोग का का सबसे आवाज बड़ी बहुत प्रॉब्लम लो है यहाँ पे ओबिया लेवल 4 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आकाशुकी नहीं हुए। वेंजेंस का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट सेकंड सैंडी थोड़ी देर कछुआ में आने वाले, महाराज। बिल्कुल आएगी भी जरूर। इतना कोशिश cute करनी है है। रेट्री स्टील की, लेकिन मिजुकी उसको जीतने में कामयाब हो गए। फोर्सिंग करके पीछे फाइट अवतार और गार्डियन पे लोगों को गिराने में कामयाब होगा, और उसी के पीछे आकाशुकी गलत जगह कछुआ फंसेंगे। महाराज। लगा इनको है यही ताची और ओचिमारू बना के बाहर निकाल दिया, और उसी के साथ एंग्री कैट भागेंगे वापस अरे पीछे। इतना बहुत ही cute बढ़िया है रे। फाइट, सीधा हेलो किटी के क्या तोड़। रहे भाई 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 क्या ही कछुआ महाराज के लिए फाइट थी, क्योंकि मैंने देखा तो सबसे पहले वेक्साना को जोन किया गया, 3 बंदे वहीं अटका दिए गए टीम ऑफ के, और वहां से एवेटर ऑफ द गार्डन भी इतना सटीक लगा कि तीनों के तीनों बंदे धराशायी हो गए थे। बट बहुत ही करीबी मामला था टीम उस हेलो किटी के लिए, क्योंकि वो भी काफी लो हो गए थे उस टीम पता फाइट नहीं में। ये लोग को रात को ये लोग भी तक गिर ना बोलते हैं इसलिए हिंदी में किस्मत बोलने होती दिया है। होगा पहले थोड़ा पहले पकड़ा मजा गया वाला खलील, न्यू वर्ड अब सुनने आप के लिए भाग रहे हैं इतनी लो लो इतना थक गया होगा ये लोग किस्मत तो नहीं बोलूंगा, काफी अच्छी स्ट्रेटजी But this is too tiring, रे, ऐसे अच्छी schedule तरह तो कोई रणनीति ऐसे बोलते नहीं कर थे, पाएगा रणनीति होगा। काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं Feedback देना पड़ेगा, बट देखना everybody। पड़ेगा कि Feedback किटी ऐसा यहाँ पर इतना कितना शेर रद्द मत बनने के करो। लायक होगी। थोड़े शब्दों का ध्यान रखिए, सोच का आप खतरनाक बातें कर जाते हैं 85 बट चलिए मैं तो समझ गया क्या बोलने वाले थे। कछुआ महाराज सबसे बात क्यूट इसके बारे में था बात नहीं हम अभी से करेंगे। उसका फिलहाल लॉट नहीं सबसे बोलेगा main point आपने सब बहुत कछुआ बढ़िया महाराज point out बोलेगा। किया। कैसे आपने एंग्री कैट को जोन आउट कर दिया था एंड उसके पीछे फिलहाल मिजुकी अच्छा खासा डैमेज देते हुए रिवाइटलाइज बेट आउट करवाया, लेकिन फायर स्टेक से वापस पुल बैक किया। पीछे की तरफ आप देखिए रेजिंग सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया था। अवतार ऑफ गार्डियन बचने के लिए वापस रखा चुकी डैमेज मारेंगे, लेकिन ऑकअप हो गए क्योंकि सामने वैलेंटीना ने इटर्नल गार्ड को छीन लिया था। पिक मिल सकता था, लेकिन उसके बाद क्या ही बेहतरीन डिसएंगेज करती हुई दिखाई दे रही है हेलो किटी, और यही एक स्ट्रेंथ है इसकी कि अगर सामने दूबा और आकाशुकी जंप इन करेंगे तो आपके पास इतनी यूटिलिटीज है कि आप पीछे जा सकते हैं, आप वो पूरी फाइट से डिसएंगेज कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज माफ के पास नहीं है। मेरे को ये बात सही लगी साकिया की, उसने ऐसे ही मैसेज लॉट तोड़ना है वो लॉट नहीं है हमको भी पता है, वो उसको टटर बोलते हैं और टटर खरीद को ऐसा लगा कि वो टटर जोन तो है। कर रहा है उसको, बड़ा भी मेरा कछुआ brain हमारा है ना। स्टार्ट हो गया स्केड भाई। This is called turtle। और बार टर्टल को स्टील कर सके वापस से कछुआ को आपकी वजह से कछुआ तो माफ नहीं करूंगा मैं अलग इसे चीज को आपको, नहीं लेकिन बोलते चलिए टटर 1600 को बोलते HP और हैं। रेट्री फिर से बहुत ही बढ़िया मिजुकी का, लेकिन भागना पड़ेगा उनको पीछे। आकाशुकी ऑलरेडी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बार-बार बाउंस आते हुए बिलो पिक ऑफ करने में कामयाब हो जाएंगे ओबीएन को, लेकिन उसके पीछे EXP लेनर फॉरेन EXP लेनर का ये दोनों ही टीम और लॉर्ड को भगवान बोलेगा। लेकिन अगर आप जंगल डिफ की बात करें तो वो मिजुकी बिल्कुल दिखा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सुजुकी सोल्स का। नहीं, आपने लाया आपके है। पास वो ब्लेड सर्च के साथ एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूशन नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा तो आप हर बार वो टर्टल फाइट जीत सकते हैं। आप पे एक इम्यून भी है, एक डैश ये भी कौन है, सा और flavor है? देखिए आप ओह माय गॉड, कोशिश जरूर गंदा रहेगी चीज़ चीज़ों को है ये वाला। गिराने की, बट फिलहाल टावर लेके ही खुश रहेंगे बिल्कुल। वाई के पास एंट्रोपी नहीं है, ये green वाला हमने बजाय खाएगा, बहुत इतना बढ़िया दिखता theory है, इस बात पे। green वाला Recall तो बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। वाई अब सवाल यही है कि आप यहाँ क्यों फंस गए, यहाँ कैसे आ गए, पकड़े जाएंगे, गिराए जाएंगे। इवन दो E2017 ने कोशिश करी टर्नल गार्ड डाल के, लेकिन चलिए ओह माय गॉड बिलो
और हिट उसका काफी अच्छा, लेकिन बैक साइड की तरफ देखिए मिजुकी जब करने की कोशिश थी, नियो अभी भी बचे हुए हैं। ओह माय गॉड, लो इज द एचपी, डैश नहीं कर पाए, लेकिन रेट्री काम कर गया। मिजुकी गिराने में कामयाब, टाइमिंग नियो दिखाता है, को बचने की अभी भी कोशिश, और ये सुयू नहीं पकड़ में आएगा क्योंकि आपने साके की बॉडी सामने गिरा दी। आई वुड स्टिल से शायद दोनों बच सकते थे, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया प्ले साके की तरफ से आता हुआ। Oh, when the game ends, I'll be submitting थोड़ा names. तो है ये खिलाड़ी, If not बिल्कुल there, नीचे भाग के चेस then करेगा। you're off. आप Okay. बिल्कुल भी सामने वाले को creep Okay, नहीं Zuma, दे ऐसे रहे, manually लेकिन ले लो, क्या manually ही ले लो, guys, fire माफ manually. कर सकते हैं। You can tell your support, tell the team that मैं you're कहना supporting चाहूंगा now. कि बहुत ही करीबी मामला था वहाँ पर सुयू के लिए, अगर और मैं कहना चाहूंगा वहाँ पर शहीद काफी अच्छी तरीके से साके उन्होंने अपनी टीम को बचाया। जैसे बोले कि दोनों बच सकते थे, बट शायद थोड़ा सा कुछ बताया नहीं गया, शायद मेरे पे डैश आ गया है कि नहीं आया, थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट कोई नहीं, बहुत ही काबिल तारीफ काउंटर अटैक भी आया, काउंटर अटैक भी करा गया दोनों टीम की तरफ से, तो काबिल तारीफ। और मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा डेस्परेशन में कहना चाहूंगा वो गोल्ड लाइन में टर्रेट निकालने के लिए वहाँ पर किया गया, और उसकी वजह से नेटन को एक मौत दे दी गई टीम माफ के द्वारा। बिल्कुल दोनों मार्क्समैन की ऑलमोस्ट बराबर सिचुएशन है। और ये आ गया, भगवान आ गया, लेकिन लोग आ गया। कंडीशन सबको पता है, नेटिव की वो लोग नहीं है, तार टचवा मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा से बॉन्ग शुरू हो चुका है ओबीएन का, लेकिन आप हाइलॉस की तरफ खड़े हैं, इसलिए टर्टल निकालने में कामयाब हो गए। बिलो ग्लोरियस पाथ में बचने के लिए वापस रिवाइटलाइज है, दूबा के पास कोशिश कर रहे हैं Hello, Kitty. गार्डियन पीछे से उड़ा तो एंग्री कैट को पकड़ Hello, लिया। Kitty का तो 7 kills है। गिराने की रेंज Hello, Kitty लोग इतना खतरा है, never knew, I never knew. का डैमेज बहुत ही ज्यादा नास्टी, और अब बिलो को अपनी जान बचानी Hello, पड़ेगी। Kitty का Last never की sanity knew. अभी भी है, वो बस उतना कोशिश जो जरूर डर करने वाले हैं ये खिलाड़ी, बच भी जाएंगे क्योंकि वो मिनियन कैनन मिनियन गिर गया, लेकिन आपने सिर्फ मिड लेन बचाई है, टॉप लेन आपकी गिरने वाली है। जी बिल्कुल, और टीम माफ को बड़ा एक अच्छा हमारा आज मिल एंग्री गया, कैट जो अपना नाम ग्रम्पी कैट इसके लिए आपने देखा कि उसको माफी प्राप्त नहीं करी जाएगी, हमने माफी के तो कारण दुआ उन्होंने की 3 बंदे उठा लिए टीम हेलो किटी गैंग ने उनके, और काफी बोलना चाहूंगा एविटर ऑफ द गार्डियन ऑन और पॉइंट, मेरा एक किल boyfriend, निकाला future एविटर ऑफ द boyfriend, गार्डियन ने this वहां is a मिड लेन message की for पुश you. पे काबिल तारीफ गेम प्ले बाय If साके। any game guy और becomes my कोई boyfriend, नहीं, मैं कहना you चाहूंगा just keep your name and grumpy cat. ये युद्ध भूमि में इस युद्ध जो अभी रिसेंटली जो एक टीम फाइट हुई थी, बहुत ही प्यारा एग्जीक्यूशन था, और अभी हम देखें तो यहाँ पर जो स्वर्ण मुद्रा है, जो हमारे गोल्ड है, वो काफी ज्यादा इतना दूर नहीं है दोनों टीमों का, तो मैं कहना चाहूंगा माफ के पास पूरा मौका है इस टीम इस गेम को उलट करने का। जी बिल्कुल, फिलहाल वापस से इटर्नल गार्ड Hello, का इस्तेमाल, Kitty. लेकिन दूबा को ए, गलत डिलीट कर ठीक दिया करने गया, से तो खत्म दूबा होगा दोबारा टेक्निक। दिखेंगे नहीं। ये लोग ना इसलिए वेलेंटीना गायब जितने हुए बोलेगा, हैं। वेलेंटीना बहुत सुंदर से दिया है, देखिए, इस टाइम पे वेलेंटीना बहुत अच्छा है। खिलाड़ी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टूल है, आपने सीधा एंगेज ही उस खिलाड़ी पे किया है जिसके पास सबसे ज्यादा एचपी, आप उनको गिरा दीजिए, अब सामने बस आकाश चुके जो कुछ कर सकते हैं, और अभी तक सिर्फ थंडर बेल्ट आए इस खिलाड़ी के पास। मैंने ये चीज मेंशन भी करी थी, आपको मैजिक डिफेंस बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों डैमेज डीलर्स देखिए नेटन और वैलेंटीना मैजिक डैमेज मारने वाले हैं आपको, लेकिन आकाशुकी अभी भी डोमिनेंट साइज की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि दोबारा से पकड़े जा सकते हैं। फिलहाल मिजुकी आपने इस्तेमाल जरूर किया था अपने स्किल 2 का हील करने के लिए, बच जाएंगे वापस से, लेकिन आकाशुकी लो एचपी, अरे! और आया ये इटर्नल गार्ड दूसरी ये तरफ लोग से कैसे भी, इतना लेकिन सुंदर दूबा खेल रहे हैं, गायब हेलो होती किटी, हुई इतना उनकी डेंजर, जैसे यार मैंने रात हो mention गया, किया, तो नो दोबारा दिख नहीं टायर। रहा है ये खिलाड़ी, लेकिन हाँ, चेज मैच करने गोल, की मैच कोशिश गोल। है। ये लोग को बच पहले के भी भाग सुयो लिया गए। था, ये लोग पहले भी सुयो लिया था, वो लिंक का अगेंस्ट याद है? वो कौन था? वो इसका अगेंस्ट कौन था? हेलो किटी का अगेंस्ट कौन था? केची तुकू वाला का अगेंस्ट, देखो लिंक दिया था, ये सुयो बैन करना है, सुयो इज द मस्ट, सुयो इज अ मस्ट बैन। बिल्कुल, यहाँ पर डूबा को ये लोग डुबा दे बैन रहे हैं, नहीं जैसे करने बाहर से आ रहे हैं सुयो डूबा, वो लोग आराम वापस जाओ, से यहाँ गेम पर हैंडल बहुत कर भीड़ देगा। हुई है। बट अभी देखिए यहाँ पर हो रही है ओह, टीम फाइट, जोन आउट देखो ये ना बिल्कुल कितना दोबारा सुंदर से से हो किया गया, है उन्होंने आदमी। वेंजेंस का ये इस्तेमाल लोग का किया, एक्सपी सर्वाइव करने और के लिए, किया, बिलो भागेंगे खत्म, पीछे लौट की ले लिया, तरफ, बाय बाय। और कहीं ना Game कहीं is उम्मीद over. अपनी टीम के लिए Maaf is जगाने losing, की yeah, कोशिश। Maaf काफी losing देर the लगी, first मैं बात match. करूंगा We एंग्री cannot कैट को believe गोल our वॉल eyes देने में that we सोच are रहा है, watching. क्योंकि हम नेचर So से Maaf बहुत is got the जल्दी famous उम्मीद squad करते हैं of कि वो लेंगे Arunachal. glowing पता ball, नहीं, और for me सामने it's like कोबियस that. है, घटोट का है, बिजुकी है, आपको वो आइटम पहले बनाना चाहिए था। मैं यही बोलने वाला था भाई कि जो एंटी हील है जिसे बोलते हैं, Only वो 7 आपको we सबसे are पहले lucky. लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तो अब वही नहीं वही देखिए 7 स्कोर लाइन आपने lucky. बताया कि 4-11 हो गया है, कि हम देख भी रहे हैं, और जो मोमेंटम है साफ साफ हमें माफ की सॉरी हेलो किटी गैंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब हमें लग रहा है कि हर टीम फाइट जो हो रही है वो, और मैं कहना चाहूँगा जो वैलेंटीना का जो एग्जीक्यूशन है एटर्नल गार्ड का, वो पहले लग रहा है वेक्साना के एटर्नल गार्ड से पहले, वो काफी ऑन पॉइंट भी लग रहा है, स्टन कर रहे हैं, किसी न किसी बंदे को स्टन कर ही दे रहे हैं, उसका फायदा उठाते हैं, वहाँ से मिजुकी आ रहे हैं, फटाफट चलते जा रहे हैं, बर्स्ट आउट कर रहे हैं, मिजुकी नहीं साकी का एविटर ऑफ द गार्ड नहीं पड़ रहा है, उसकी वजह से ये देखिए जब इसकी बात कर रहा था। और 2 मैच बचे, अगर ये लोग 2 और 3 मैच बचा है,
अगर ये सॉरी 3 मैच नहीं 4 मैच बचा है, 5 मैच बचा है। आया बहुत बोरिंग है। एक बार वापस से देखना 5 बचा है 5। अगर ये लोग दो बनाते हैं, दो मैच जाने से 3 मैच बचेगा। डिलीट होते हुए फ्लिकर 3 मैच होना प्लीज, 3 मैच होना। डायरेक्ट फाइनल मैच देखने। मार्क वर्सेस प्रेडे का वाला कौन जीता था? एग्जीक्यूट ई-स्पोर्ट, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं। हमको हेलो किटी फाइनल जाएगा लग रहा है। वाओ, हेलो किटी जाएगा क्या? जीत माफ के लिए, क्योंकि अभी भी उनकी 2 आउटर टावर टरेट्स बची हुई हैं, मिड की टियर 2 और बॉटम की टियर 2। जी बिल्कुल, अभी हम देखेंगे तो आज हमें पता था आइटमाइजेशन देखेंगे। ओए बिल अभी देखेंगे तो उन्होंने टैंक के हाई लोग अभी भी मैजिकल डिफेंस नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वहाँ पर अगर हालांकि हम देखें जो जेम और ये जो होली क्रिस्टल है और ये स्टालियम साइट है, ये तो आपको पता ही है कितना ज्यादा डैमेज ये कितना फेमस आइटम है मेरा। तो अगर आपने ये बना लिया तो आपका 2 डैमेज। पर यहाँ देखेंगे तो साके को वहाँ थोड़ा सा स्कर्मिश होते हुए दिखाई दे रहा है हमें। ओके थोड़ा फंस गए गलत जगह पे, वापस निकल नहीं पाए, गायब हो गए बिल्कुल। अब आप डैमेज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते माफ की तरफ से, वो सिर्फ एक चीज़ में लैक कर रही है और वो यही है कि आपने मैजिक डिफेंस अभी तक बनाया नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत है आरपीवी। बट उसके बावजूद री-एंगेज से आता हुआ एवेटार ऑफ गार्डियन आपने जरूर पकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी एक कांस्टेंट फोक डैमेज यहाँ पे गेम चेंज होने का थोड़ा सा झोंका है, तो कूदेंगे जरूर, लेकिन ओ माय गेम गॉड थोड़ा चेंज हो सकता है। इसका फर्क ही नहीं पड़ता, गायब हुआ वो खिलाड़ी सामने से। और अब आपके पास डिफेंस के लिए वाई का हो गया गेम मैच चेंज गेम वाइप आउट। एक प्लेयर को टर्न कर वापस आता हुआ और साके को पिक ऑफ करने में कामयाब हो गए बिलो, लेकिन वो थैंक गॉड हाइपर थोड़ा गेम ज्यादा आगे चले गए थे। तो वो हाइपर था क्या? कौन था? ओ सही था। ओके वाह, इतना लकी था। शायद अभी ते ले लेगा क्या? निकलता जा रहा है और क्या हुआ? वाइपोस क्या के लिए पोस हो गया रे? क्या के लिए पोस हो गया? भाई ये टीम फाइट में कामयाब हो गई थी माफ अप्रॉक्स लाइक वो क्लिंच नहीं था, नहीं मतलब क्वालिटी के साथ था और स्क्रिप्ट के साथ था, वो बताओ। एमएल का देवता क्लिंच तो है, हमको पता है महाराज साहब, ये है क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट। ये देखना पड़ेगा कि किस बंदे को जाएगा। और मैं कहना तो चाहूंगा आपको वही एडवाइस किया था क्या? निटन की बात करने लगे थोड़ा ना कैरी का बिल्ड नहीं देखा, क्योंकि कैरी ने जो फर्स्ट आउट किया वेंजेंस में इस टीम फाइट में इस युद्धभूमि के अंदर बड़ी काबिले तारीफ था। क्या आपने देखा स्केट वाइज कैसे मेल्ट डाउन किया उसने उस बंदे को? तो हैरान हो गया था उस टाइम पे, बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाया उस टाइम पे ओबी। और सबसे बड़ी बात कैरी की यही आ जाती है, अया अभी गरम लगता है, अभी ठंडा लगता है, क्या मजा लेना। आपके पास कितनी ही वेंजेंस क्यों ना हो, सामने एक बार ट्रिनिटी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके पास मौका नहीं बचता है, फिर आपको बस पिक ऑफ ही करना है उस खिलाड़ी को, चाहे कुछ खाली फ्लिकर यूज नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, जो कि थोड़ा आपको सस्टेन में मदद करेगा। आपने ज्यादा बोल दिया है, बस वही सबसे बड़ी बात आ जाती है ना कि ट्रू डैमेज मारती है कैरी ज्यादा, और गोल्डन स्टाफ के बाद आप उसकी पैसिव हर 2 बेसिक अटैक के बाद प्रॉक कर सकते हैं, तो वो ट्रू डैमेज और ज्यादा बढ़ के लग जाता है। जो आप पहले एक बार मार रहे थे 5 अटैक में, वो अब आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार मारेंगे उन 6 अटैक्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ा करता तो इसलिए कैरी वो बेच पी जाता, रोकने में काफी दिक्कत आती है। फ्लिकर वाला वो स्किल ना प्लस उसका सेकंड स्किल वाला, अभी तक वो ऐसे मैच मजा। बाकी लोग के जो डार्क सिस्टम वही तो, ओ हीरो आपका चला गया था, हम लोग इतना रुका, वो बन जाएगा ना फिर। क्यों नहीं गया रे? क्यों चला गया था? हम खाना भी खा लिया, बंग भी हो गया मेरा। नेटन को जिंदा बचाइए, नेटन कैरी कर देगा। मैं ये चीज मैं नियो के लिए बोलना चाहूंगा, उनका 4-1 कीड़े चल रहा है। स्क्रिप्ट कैसे था वो बताओ। नियो ने अपने आप को काफी संभाल के रखा हुआ है इस गेम में। उस टाइम में पर्सनली तो उनका जो स्पेल है प्यूरिफाई, मैं कहना चाहूंगा काफी अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया गया उनके, कि उन्होंने पहली सोच रखी अगर मैं प्यूरिफाई नहीं जाऊंगा इस युद्धभूमि में तो मेरे को दिक्कत हो सकती है कि मैं बार-बार उठ जाऊं कहीं से भी, जैसे ये उठा रही है, क्या ये एटर्नल गार्ड से उठा ले रही है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। उसके एटर्नल गार्ड इतने से बोलते हैं ना सटीक लग रहे हैं, काबिल तारीफ मैं कहना चाहूंगा। बट वेक्साना यहाँ पर मैं बोलूंगा वेक्साना में अपने आप को काफी संभाल के रखा है, बट अभी जो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था ना अकात्सुकी ने खो दिया था, वो मेरे को लग रहा है कि अब अकात्सुकी वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं इस मैच में, क्योंकि मेरे को देखने को मिलता है कि उनके एंगेजेस जो थे वो पहले वाले स्टार्टिंग गेम में और अभी थोड़े लेट गेम में मेरे को अब जरा सटीक देखने को मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ अभी, क्या आपको क्या लगता है? अभी सबसे मेन बात ये आ रही है कि हेलो किटी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं दूबा को
और साथ ही साथ अकात्सुकी को गिराने में। तो नियो बिल्कुल फ्री हिट कर रहे हैं पीछे से ले, अरे! पकड़े जा सकते हैं यहाँ पे घटोट काचा उड़ ये के भागना लोग पड़ेगा, एक नहीं मिस्टेक से भाग गेम पाए। खत्म होगा रे। Constant हम तो knock और दोनों को ही deadly सपोर्ट है, नहीं grasp। बोल सकेगा और सब लोग आपके करना फायर चलता है। स्टिक्स रोक के रख दिया उस खिलाड़ी को वहीं पे, और इसी के पीछे अब आप एंट्री का इस्तेमाल करेंगे भाई, भागने की कोशिश जरूर करिए, लेकिन म्यूजिक बिल्कुल गलत जगह है। वहां पे नहीं है आपका बेस और नहीं आपके टीममेट। रेट्रीब्यूशन क्या बचाएगा आपको? अरे, इन्होंने ये shut क्या down कर गेम दिया। है? ले और गया सीधा लॉर्ड। लॉर्ड भी सिक्योर कर लिया इस खिलाड़ी ने, और ये लूमिनस लॉर्ड ले लॉर्ड गया। है। वो ये सीधा टावरों को तोड़ेगा, और अब आप कोशिश करेंगे इनहिबिटर्स को गिराने की। क्या ही फाइट ली है माफ ने, बिल्कुल डिसइंटीग्रेट करके मैं खत्म तो किया अगर ये तो ये था क्या ओवर स्मार्ट किया माफ क्या माफ तो नहीं क्या कर रही किया जो ना आपने अभी? उनका लीग गेम में साथ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट। गेम में। बट मैं कहना चाहूंगा जो वहां पर ये फर्स्ट मैच कासा है को मेल्ट किया, आपने ये बोला दोनों ना का। बस आपको 3 चीजें चाहिए, ट्रिनिटी चाहिए आपको कैरियर में, बस उसके बाद वो खत्म हो जाएगा जो भी टाइम जाएगा। और मैं कहना कुछ ज्यादा ही आउट क्या बोला एंगेज ये करके था टावर? वहां पर गेटआउट कासा ने, कुछ देखा नहीं सुंदर है। टीम फॉलो अप दे रही है नहीं दे रही। फिर उसके वाह, बाद या, मिजुकी माफ फंस तो गए वहां comeback पर, कर लेगा लग मिजुकी रहा है। फंसे, उसके बाद बस 3 बंदे छूट गए। अब तो आपका असल ये लुमिनस लॉर्ड जो लेवल 2 का लॉर्ड महाराज जिसे बोलते हैं, एमएल का देवता, वो अब आगमन कर रहा है, जो ही कर रहा है बॉटम लेन से, जो शायद से गोल्ड लेन थी इस मैच की। जी। अब आप अगेन नॉर्स मिथोलॉजी को फॉलो करते हैं तो वो साइड लॉर्ड आ रहा है बोट से, अगर आप लाइन ये लोग ले रहे हैं mythology को साउथ ऑफ follow लैंड करते हैं तो एंड नाउ मिड लैंड। वेव आ रहे हैं, बट त्रिशूल तो जरूर है हाथ में, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। बट चलिए बॉट से जाएगा, वो पुश करेगा फिलहाल। वे लोग कॉन्स्टेंटली अब अपना ट्रू डैमेज मार रहे हैं। इमोर्टैलिटी भी आ चुकी है इस खिलाड़ी के पास, Guys, तो first थोड़ा again और back freely for खेलेंगे और pause. एग्रेसिवली खेलेंगे। एंट्रोपी आ चुकी है भाई, कोशिश जरूर करेंगे शट डाउन करने के लिए, लेकिन फेस टैंक करने के लिए कोई है माफ ही का नहीं 61, खिलाड़ी। 59 चला ना गया। साके काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती हुई, क्योंकि वाई के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट अप चार्ज कर रहे हैं सारे टीम प्लेयर्स। अब यहाँ पे सोल्स का अगर आप बात करें, डिफेंस पुल ऑफ कर लिया है आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन माफ की तरफ से। बट एक सबसे बड़ा पॉइंट जो कि मैं बोलूंगा जहाँ पे मात खा रही है हेलो किटी की टीम, वो ये है कि आपको ओबीए चाहिए, वो सामने खड़े हो, फेस टैंक करे सारा डैमेज, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि साके हैं री एंगेज टूल। उन्होंने अगर दिखा दिया कि हाँ वो भैया हवा में कूद रहे हैं, तो कोई भी नहीं फंसने वाला उनके एवाटार ऑफ गार्डियन के अंदर। लेकिन अगर ओबीए ने एंगेज किया, वो उछल उछल के आ रहे हैं, वो आपके सामने खड़े हैं, तो साके को एक मौका मिलेगा वो री एंगेज के लिए। हमको फिर मेरा वो एक दोस्त कूदेंगे सिखाया AOG था में, तापा तब आप तापसू पकड़ेंगे बोल सामने के वाले players को। ओ लाइन उसके एक बाद आपको आपको मीनिंग मौका मालूम नहीं है मिलेगा पर 2070 तापा म्यूजिक ले और दे। वाई के वो फ्रंट टू बैक कॉम्बिनेशन में आप पीछे उस खड़े हो, दिन सिखाया ये करें राम बोला है ना, म्यूजिक मेरा फ्लैग पे। एक बेस्ट और फ्रेंड वो है, चीज़ वो होती उसका हुई वो दिख तापा है रही बोला है। है, तो And I'll just say it straight नेपाली up, है, बुआ बहुत बढ़िया ऐसा काम कर बोला रहे हैं है, साइलों के नाराई ऊपर, वाला सीधा मुंह पे नेपाली है glorious बोला बात तो हमको तापा तापसू बोला। दुबा का जो मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक अल्ट प्लेसमेंट लगी है ना उनकी, जिसमें उन्होंने यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना ग्लोरियस पाथवे, हाईवे बोल रहा था मैंने तो ग्लोरियस पाथवे, तो वो काफी ऑन पॉइंट। हमने देखा लॉर्ड फाइट में उन्होंने एकदम ऐसे मारी कि लाइक जो उनके टीममेट्स आधे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया उनको, पहले को तो आधे बंदों को पीछे फेंक दिया, फिर आधे बंदों को वहां पे। जैसे कि आपने बोला कि जो साके है उनको एज अ री एंगेज टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि लाइक इतना आसानी तो होने देगी नहीं माफ, क्योंकि अगर हम देखें जो खलीद है, ठीक है, आपने बोला कि खलीद में काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं सिर्फ खलीद को निकालने में, और अगर वो दोबारा यही गलती करेंगे तब तो शायद से साके अगर जाएंगे भी तो मेरे को लगता नहीं कि उनको फॉलो अप मिलेगा। और मैं ग्रम्पी ये स्कीम भी कहना नहीं किया, चाहूंगा कि ग्रम्पी जो करना भूख लगती एक्सपर्ट खेल रहा है ये है, मैच, गिल्ली का उसने टक्कर मैंने नहीं है अभी। उसको जरा पॉइंट आउट देखा नहीं, बट अभी मैं कहना चाहूंगा काफी अच्छी डिसिप्लिन जिसे बोलते हैं ना, अच्छी वैसे तो तरीके उसका से खेल रहा है, मीनिंग क्या लाइक है? कहीं फर्स्ट नहीं हम जो रहा अभी है लाइन necessary बोला जगह था, में, तो काफी काबिल तारीफ है। और अभी देखना पड़ेगा अयो, यहाँ ये पर लोग टीम तो हेलो किटी गैंग, जैसे आपने danger बोला होगा। कि क्या पता फ्लैंक करने ऐसा में अच्छा है ना, कामयाब रहे, जब अभी अच्छा नहीं लग रहा फ्रंटलाइन है। करे पर बाकी और जो एवर आप ऑफ द पहले गार्डन के से मैचेस ठीक था, पड़े। पहले राउंड वाला वो तो 20 मिनट से पहले ज्यादा जाने से दिखता है। अभी क्या अभी जब कम में जाओ सोच रहे थे, इतना लेट जा रहे हैं, बोरिंग है। उस दिन तो इतना आदमी के आदमी ने गेम खत्म किया था, तो बहुत क्या हो गया आज। बहुत ही बढ़िया प्ले आकाश और आज तो मैं आने के वाला लोग उसके साथ एक और पिक निकालेंगे। कल कसम से सब लोग कल से मत करो, आज जल्दी जल्दी एंड करो, बहुत बोरिंग है। सामने जाके मजाक किया है, मजाक किया। पूरा का पूरा चेज माफ जीतेगा मेरा हिसाब से, पता नहीं हो गए फ्लैंक साइड से पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे। एंट्रोपी अब इस्तेमाल करेंगे, सबसे बड़ा सवाल आज रूट के Okay, you know, online और एक और बड़ी विन। मेरा एक दोस्त सिखाया था, बोला है तो समझ में नहीं आते क्या गदा जॉनसन। ये मैं बोलूंगा मुंह पे जाके चढ़ के खेल, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ओबी मेरा की कमर तरफ से बहुत आता दर्द है हो रहा है। सोल्स का है। वो और या ब्लू तो टीम ऐसी ले लिया पोजीशन तो में खत्म, है माफ जहाँ पे अभी वो शायद अपने ये लोग तो ले लेगा। नेटन से पीछे है, और या वो ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आपकी टीम का सपोर्ट ही नहीं है। बहुत फर्स्ट गेम तो माफ ले लेगा लग रहा है।
मैं कहना ये भी चाहूंगा कि लग रहा है अब guys, ओबीए में लग रहा है, जैसे but आप this लोगों is ने the कि first सपोर्ट पे game नहीं ना, आ रहे, लाइक मतलब आपने बोल सकते पोजिशनिंग हैं। जरा सही नहीं है। अभी फिर से बट देखो उन ना, जो टीम गरम हेलो लग किटी रहा है। गैंग उन पे लाइक ज्यादा टैंकी हीरोज को वो नहीं करने की, पनिशमेंट देने की वो नहीं है, काबिलियत अभी नहीं है, क्योंकि उन पे जरा डैमेज लाइक हमने देखा कि हाई लो सीधे ग्लोरियस पाथवे करके अंदर जा रहे हैं, उनकी एचपी ज्यादा लो होनी रही है। और इस बार तो क्या सोने पे सुहागा रेजिंग सैंडस्टॉर्म दिया गया काटसुकी द्वारा, शायद से 2 बंदे को स्टन दिया था और हम उसका डबल फायदा किल लिया उठाया। था, याद रखो फ्री कल। डैमेज डीलिंग कर रही है यहाँ पर से नियो पीछे से कबूरा पट से। पट 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 पट। तो आई मीन क्या, जैसे जैसे आपने बोला कि ओबीओ को अपनी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, बट अभी देखना पड़ेगा क्योंकि जा रहा है लॉर्ड महाराज हमारे बॉटम क्या लेन फिर से। जब बिल्कुल। नहीं 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 ये बहुत हम बढ़िया दोबारा मैनेज नहीं करी थी, बोलेगा, इसलिए उसका आपका मीनिंग कुछ लॉर्ड खराब अभी हो भी सकता है, healthy इसलिए है, हमको वो लेकिन डर आप लगता बिल्कुल है। एक दूसरे कोने में हमको लेकर आ कॉल में चुके हो बोलेगा, उसे। उसका कोशिश meaning ये क्या है। रहनी चाहिए थी कि मिड इनहिबिटर टावर पे लेकर आया जाए उस लॉर्ड को, बच्चे ने कोई बात नहीं, इनहिबिटर टावर Oh, आपके that हाथ was से गया, बट आपने such an डिफेंड जरूर easy कर दिया है लॉर्ड defend. को। Oh my टॉप की जो god. टर्रेट है वो बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं, लेकिन अवेलेबल है भाई के पास। फाइनली वापस एंगेज आता हुआ एवेटार ऑफ गार्डियन पकड़ा है सिर्फ मिनियन को और किसी को नहीं। इटर्नल गार्ड नॉकअप अच्छा आता है, साके बचने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि फ्री Don't- रेजिंग सैंड do को not मिला make- करके कहीं लैंड नहीं do किया, not, बीच में खड़े हो change गए, your बिल्कुल side, winter okay? crown है, बचाने इनको के चल लिए रहा है, भाई अभी थोड़ा तक फ्री work हिट नहीं करने कर की रहा है क्या? कोशिश में ओबी है, फिर कूदेंगे हवा में, वो नहीं किया गया, अब जाइए ऊपर ही, लेकिन उसके पीछे एंग्री गार्ड फंस सकते हैं, लेकिन या, नहीं, या। नियो को मिला ट्रिपल किल। अरे ये तो अभी पूरा पीछे मार करेगा, बेस बहुत को ही मार बढ़िया करेगा। winter There crown का इस्तेमाल, goes लेकिन the first बाय hit. नहीं बच पाएंगे उन फायर स्टेक से, और क्रिस्टल नहीं बच Winning, पाएगा it's a माफ winning के game बाद for से। the Maaf team. लिया Maaf ये won. गेम अपने और एक गेम नाम, जीतो, और उसके क्या बाद ही गेम comeback ओवर, करके टाटा बाय बाय। दिखाया है। माफ Then ने they'll be playing the बिल्कुल भी final माफ match. नहीं किया हेलो किटी। अया बेचारा, इसको बहुत तकलीफ दे आपने दिया रे मौका दिया देयर इस टीम को लेट एस3 गेम को। स्केल करने का, और क्या नियो नाम ने है इसका? दिखा दिया क्यों है पबिस ये का, खिलाड़ी पबिस। इतना ज्यादा पबिस का जिंदगी खतरनाक। खराब कर दिया, बेचारा बहुत हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही हमको कहा। ना वो जो जो बहुत हंसने आखिरी मन में है, पर जो मेरा युद्ध थकत नहीं हुआ है। था, हम नहीं देखा, क्या स्ट्रीम बताऊं कितना मैं, लेट उस से युद्ध किया आज, में, क्योंकि हम like, कुछ काम कर रहा जो था। थोड़ा हम सा दिन भर रेजिंग बहुत सैंडस्टॉर्म busy मिस था हुआ, उसने बेट दिया कि हाँ मेरे को मार लो, फिर विंटर क्रॉन जो लगाया उसने। हेलो न्यू क्या बताऊं मैं, पापा? क्या मतलब, अरे क्यों नेम मैं क्यों देखा चेंज कर 2 दिया? बंदे अपने आ रहे थे यूट्यूब उसको नेम का मारने, चेंज फिर कर दिया अरे रे पापा, विंटर मार क्रॉन लग खबो। गया यार, ये तो क्या करूं। की लगता है वहाँ अपनी से जो अपनी एविडेंस नेम ऑफ द चेंज गार्डियन पड़ा, कर आपने दी मतलब से। मिनियन पे लगा, आपने मार क्या बोला, खबो मिनियन पे लगा। मिनियन पे लगा। इट्स नॉट योर रियल तो वन। ओके, यू आर मिनियन नॉट पे लगा, कमिंग उसके फ्रॉम बाद वो जो मेल्ट हुआ या है, उसके न्यू बाद आई थॉट वो भी द न्यू थोड़ा ट्राई इन करा दिस अंदर जाने का, नहीं कर पाया कुछ। न्यू है और ना जो धीरे धीरे करते क्या नाम है रे करते उसका? बारी बारी से खंडित कर Hello दिया Kitty गया। New, टीम हेलो किटी गैंग or को it's from अब Maaf. वापसी करेंगे हम But हमारे there with your हमारे name is viewing there. board I को। was thinking that it's you. तो यार Ray bro, what do you think about this game bro? Yes, I अभी was busy. हिंदी में बोलो I या was too इंग्लिश, busy. क्योंकि तुम लोग तो We can continue. बहुत busy था आज हम, सो के बैठने के लिए बहुत busy था। Yeah, it's fine, it's fine. Maaf did come back. I think we Yes, can do it yes. hybrid, man, because I mean, थोड़ा mix, but okay, like what I would really like to say is like ये middle वाला what an लड़का का impressive हिंदी gameplay from इतना Maaf, अच्छा है कि right? ये था Like, क्या वो at लॉर्ड first को I was thinking like लॉर्ड game को वो one. बोला था I mean, this is the best of three महाराजा series, so महाराजा बोलने anything could वाला be possible. कौन The था side ना? of team Hello Kitty Gang could have secured the game number one. ये तो हम लोग easily, जगह का ही तो looking आदमी, how मतलब well हम they लोग were नोटिस facing. का हो कि इसका And हिंदी इतना like अच्छा one किससे thing you है? guys really mentioned was the itemization, right? And the magic defense. It wasn't इसकी coming. गलती तो Tyler ठीक was है, तो बहुत prioritizing अच्छा the बोला है, thunder belt, बहुत सुंदर से which बोला है। isn't, you know, advised if you're पर not मिडिल able वाला to इतना stack सुंदर it से हिंदी that बोला, much, हम right? बिलीव नहीं हो रहा Especially है। if you're playing the tank. क्यों दे रहे? You want to हमको some क्रूज का tank बात so करने तक बहुत you can पसंद soak up the आता है। damage, and he was just साला getting लड़का का। melted early game. But that is what happened. The game kept scaling on and on. The Xbox didn't have his immortality until the third slot, but it didn't matter because the मिजुकी game को kept बोल going रहे हैं on. ना, And मिजुकी को। when the moment they had their Trinity build, they पता नहीं had हमको। their चमकती हुई छड़ी, that is the glowing one, इसकी and दाल। the immortality came in. इसकी It भी didn't डबी really डबी दो, matter इसकी भी डबी दो। after that because You know, Ray, you know, I know where this chamakti hui Yeah. chhadi is coming Yeah, from. I know where this yeah. chamakdar chhadi is coming from. Trust me, I know that. definitely, definitely you know that. Can you translate Starlium Scythe in Hindi? I don't know it's क्या होगा इतना सुंदर से बोलते रहे चमकती हूँ। Yeah, go ahead. जादुई कुल्हाड़ी। जादुई कुल्हाड़ी। नहीं हमको वो नाम अरे क्यूट हाँ क्यूट तो है तो, हिंदी में नहीं आता ना। पर वो जो क्या नाम था? What is war axe? हमको एक लड़की का बाल बहुत अरे यार। पसंद है, उसका नाम भूल गया, पीची नहीं तो वो है, उसका नाम पीची है या तो हाँ Let's just अलग है, एक लड़की है वो बहुत सुंदर है, उसका बाल है, उसका बाल हमको बहुत लालची है। literal translation of the और itemization, लड़का but से हमको क्रूज का despite the lack आवाज of बहुत itemization पसंद and a है। little bit of क्रूज बहुत early हैंडसम से pressure बात that was कर। coming in from the side of Team Hello Kitty Gang,
time. पर उसका चेहरा They भूल गया stayed resilient, तो they बस याद kept है their pace, and
in the major stages, like the team fights that were happening. I'll be बात कुछ honest, सुंदर था I was उसका। sleepy. I wanted to sleep. माफ Okay, हारने but the से game that चैनल they just अनसब्सक्राइब। gave us right now, ओके it's माइक्रो। feeling me so hyped. अरे Like I'm माइक्रो बॉय आप fully खेल रहे awake, क्या? and I अब तो वही can't लड़का है wait ना, to हम see लोग what इवेंट you're में going to be मिला था doing in ना, the game. और आप Because हमको after मैसेज all, किया this था is the हमको best of फॉलो three करो series. बोल के हम And याद है। आप you था know, क्या? ना वो कोई और anything था। you'd like to आप लोग mention का to पर this स्क्वाड team, का वो लड़का like बहुत क्यूट था रे, career, वो बाई like वाला any जो। insight that you'd really like to Drake's have. Like Lair Hello बहुत Kitty प्यारा gang, they have lost हम लोग का their स्क्वाड first का game. हाईलाइट What करेगा really सोच went के wrong in फाइनल their जावा हम। momentum? Like what do you सॉरी think? मिडिल Like फिंगर से कर दिया, फाइनल जावा That is, हम बहुत I'll सुंदर से say that हाईलाइट is करेगा। actually a very good क्योंकि कोई कोई question स्क्वाड लोग because हमको a बोला है lot of हाईलाइट the करो teams ना might not actually चैनल में, realize पर हम एडिट करने what नहीं was सक the रहे ना, exact हमको रो issue क्लिप was. देने से हम But कर the देगा बोला entire सबको। part came down to be that you really did not have anyone to protect Nathan on the back line and the Valentine on the back line. They could not get बस that तो तेरा ना free hit माथा खराब, as माथा you में talk मारेगा about देखो it. बहुत जोर Plus, से ना, in terms of the engaging, Mark had a simple मारेगा रे। strategy that we constantly मजाक मत करो। poke them, and then we burst them. या इसकी भी तो So भी they तो had a Vixana in the इसकी भी middle. तो His किस only तरह का ना, job is to कोई गा के constantly बता दो। land that POV. हम That's गाएगा that's इसकी भी already तो got a बोला humongous वो radius and कोई not गा a lot of cooldown. चेन में गा। Constantly land that, put the glorious pathway, make sure the Khalid is ready for the re-engage. You ओ jump क्या in, बोलते हैं, take कोई them all गाओ तो down, चेट में and इसकी भी again, तो the Eternal हम Guard गाएगा, was kept ट्यूनिंग for बताओ तो हम quite भूल a गए। while to make sure that Gary was not facing some problems. But on the other side, ना मत खाओ, I mean, let's be दिन honest. से खाने नहीं मिल रहा, पागल हो रहे हैं, हम Even though खाने the नहीं मिल composition रहा। I still feel was a bit better, they might have had a good opportunity to secure the game. देख It के came खाने down में, to ओ the देख के खाने में position. रहा, मोटी हो गया रुपए Ubea का। sometimes was just so far ahead than his team that he's just being chunked down without actually baiting out a few skills from the other side or even the spells. If none लोग of that सामने is से उसका happening, स्क्रीन that में means उम्मा करेगा। Kacha will be the one who will face all of that trouble. And he could not land his Avatar of the Guardians on the Vixana because the Purify in the hands of Gary is what created problems because even though we लड़का तो हैंडसम if हैंडसम I'm है, not wrong, it was the कैस्टर्स Lunar slot में fight, when Obia was just too far ahead over towards that line bush. बहुत हैंडसम We है। did see the AOG land on carry, but the Your Purify team block not was absolutely play any If cup. you don't Who? bait My out the team. spells on the other side, Why would my it will team be play? I huge don't when it even comes to have a spot team. and fight Oh, for मेरा the साथ एक team है तो. that is No, just I going have a to team. ruin your entire play. And that is Tapa exactly what Esport. Thank you for your great insight, and I completely agree with you. Like especially some of the I have a points team. that हम मेरा Vaya अभी was 15 way 61 too को change ahead, करेगा, and तब he was सब not हो गया। doing what he was supposed to do. Just like you mentioned, he's मत आओ supposed to जो bait रहा। out the spells and the इसकी skills, भी but तो if अरे he's हम not doing that, and ट्यूनिंग he's बताओ taken बोला, हम down टाइप first, करो नहीं it बोला, just has to ट्यूनिंग be the बताओ Guru बोला, इसकी Kata, भी तो and he would have to use it to land. हमको पता It है। might not even hit, and that is what we really saw in इसकी the भी game. तो So I yes। think कैसे with तारे भूल that, गया। we are going to be proceeding to the game number 2 soon, and I think we'll be taking a little just a 2-minute मार break. के आएगा So माइक्रो do मेरा stay मजाक tuned, उड़ा ladies and रहा है। gentlemen. Just 2 minutes, we'll be back right back. आपसे तो अच्छा खेलता होगा रे, आप तो गुशन प्लेयर भी नहीं है लगता है। माइक्रो बॉय आप गुशन नहीं खेलता है क्या? आप सिर्फ रोजर खेलता था और हमको रोजर खेलने वाला हैंडसम नहीं लगता है। No handsome, रोजर प्लेयर नो हैंडसम, only गुशन एंड लिंक। What's your pattern? You guys are discussing about the pattern. मेरा पैटर्न दिखेगा, मेरा दोनों अकाउंट का पैटर्न ऐसे आगे दिमाग खराब हो रहा है, क्या मिलेगा होगा ना, कल तो लेना पड़ेगा। क्या है, क्या मैं देखता था, अरे सॉरी, मेरा 5-6 है यार, मैं 6 बार आने से हम नहीं करेगा दोनों अकाउंट में से 5-6 आके रखा है मेरे स्मार्ट में। वाह दमो मने होगा। और एकदम ये अकाउंट का मैं भेजे आके रखा, मुझसे गुस्सा लगते हैं ना। इसको कल पार्टनर रख देगा। देखो हम इतना प्रो खेलते हैं, दतिक से पुश कर रहे हैं हम, अकेला खेल रहे देखा है कितना प्रो है। 80 बन नहीं रहे, किसका 80 विन रहे गुशन 100 मैचेस में। इसमें तो क्या बोलेगा, मेरा दोस्त लोग प्रैक्टिस करके पूरा मेरा विन रेट खराब कर दिया गुशन का, बहुत मता खराब होगा। 52 करके रख दिया। सलीना का तो खुद बना है 60 58 equal to 60. Oh, Kenji, same. Good luck. Former India number 2 question.
नेचर झूठ बोल रही है, हमें हमको प्रूफ दिखाओ व्हाट्सएप में, हमको प्रूफ दिखाओ तो हम लाइन मारेगा, प्रूफ दिखाओ लाइन मारेगा, नहीं तो मत, नहीं तो मत झूठ मत बोलो हमको बहुत आदमी झूठ बोलते हैं। आज तो एक आदमी क्लियरली स्कैम किया, मेरा इधर फ़ोन में रिसीव दिखा रहा है उसका डायमंड जो, और वो बोल रहा है नहीं मिला है बोला, हम इतना दुख लग गया हमको, स्कैम किया और हम इसलिए बोरिंग लग गया उसको बात करने के लिए। वाह इस अकाउंट में बस एस्पिरेंट फैनी, ओ एस्पिरेंट का मेरे से पूरा है, दिखेगा क्या आप लोग, हम लालची दिखाएगा देखो। एस्पिरेंट का मेरा पूरा स्किन है, वो लेस्ली को छोड़ गया, लेस्ली नहीं मिला ना, बहुत दुख है लेस्ली नहीं मिला था। मेरे एंजेला है, और वैसे 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 एक चीज़ देखो, हाँ आप लोग हम क्या किए देखो, मेरा प्रोफाइल का इतना छपड़ी जैसा लगा है, मिडिल में गुशन है ना, एंड साइड में गुनिवर है, एंड देन यहाँ में लेस्ली है। एंजेला का लेजेंड आने से एंजेला रखना था पर एंजेला नहीं है। और यहाँ में भी देखो मेरा गुशन दो लड़की लाइन मारते हैं वो उसका मज़ा लेने देते ना दो लड़की का, क्योंकि असली में वो हमको प्यार करते हैं ना। हाँ शादी हो चुका वाला को क्या बोल देगा, हस्बैंड है ना। ओए मैच वापस आया नहीं यार, मैचेस आर बैक और नो 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 नो। दिस इज बैक गाइस। फिर से आ गया वो भगवान नाम बोलने वाला लोग। मुझको बोला है मैं हिंदी पे शुरू करने के लिए, आई विल ट्राई। मैं हिंदी पे इतना मतलब देखो वर्ड्स भी नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है नॉर्थ माफ हो गई कि बार तो खेला है तुम, अरुणाचल प्रेजेंटिंग टीम, तो अभी तक नैनो क्लॉक का रखा हुआ है। नाउ टीम माफ ने एपिक कमबैक किया है, एंड हमको सभी देखना है कि जल्दी बात करो ना, हेलो किटी जल्दी बात करो ना, डूइंग द कमबैक अगेंस्ट देम एंड स्कैर्ड इट। कुछ शब्द इन टीम्स के लिए अभी आई मीन वी जस्ट वन एक्साइटिंग मैच, सो डू यू हैव एनी वर्ड्स मैन अप फॉर दैट? टू बी ऑनेस्ट वो ऐसा गेम गया था जो कि उम्मीद नहीं थी माप अपना पूरा कमबैक कर पाएगी, क्योंकि नेट था सामने वाली टीम के पास, पर आईडी सेल कर दिया देख लो कुछ। नहीं आईडी सेल वाला को हम नहीं देखता है, स्ट्रांग है हम अभी प्रेजेंट वाला को भेजा, अभी प्रेजेंट वाला स्क्रीनशॉट भेजो ना व्हाट्सएप में। मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या अब हेलो अब नहीं खेल रहे क्या टूर्नामेंट में, नहीं खेल रहे क्या? ओ माइक्रो Definitely, I mean that is Hindi. I should try Hindi, right? You guys are doing Hindi like it is has been. मुझे तेरा हस्बैंड बनेगा तो मेरा क्या होगा? Hindi में like आप you दूसरा know लड़की in देखने English it's जाओ ना, spice, इतना लेकिन लाइन हिंदी में तो मारते ये हैं दूसरा तड़का लड़का। है, and that तड़का is really हम hitting सपना tonight. देखा था आपका And दूसरा I'm लड़की just का so सर excited चिपक के to see how भेज these रहा teams था, मेरा will be दिल टूट performing गया। because they've really awakened me. गरम पे And से कौन so स्किल Sky, देगा तुम तो दिखा के फ्रेस्किटी लग रहे हो, so you चप बैठो have तो। a few words for both teams. अरे I'm not मतलब कैसे लग रहा हूँ भाई, मेरे को सोया मतलब ले लिया बॉस आ गया रे, लाइन मारने वाले बॉस आ गया। सो के उठा हुआ पता है क्या ना बॉस नहीं आया, नहीं मेरा एक्स, अरे आगे छोटी है यार, बोल दो साफ ए मेरा एक्स फ्रेंड है, ठीक है। एक्स फ्रेंड। एक साल ज़्यादा हो गया गेम अनस्टॉल है मेरा गेम, वरना धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा देखो, वो तो है माइक्रो स्टेट वाई ने पर बोला कि अभी उन पे अंदर नेटन नहीं गया था, तो हेलो बहुत किटी ज़्यादा गैंग चांस है, में। इसलिए हम भी नहीं छोड़ रहा, हम भी उसने ये बार अपना छोड़ने काम वाला किया, था, मैं ये नहीं बोला कि उसने अपना काम छोड़ने नहीं वाला था, किया। कसम But से नहीं अगर बोल रहा है। हेलो किटी ये गैंग को इस मैच में एक हम एक जो है ना प्रोजेक्ट के लिए हम खेल रहा था, इतना दिन से स्ट्रीम कर रहा अगर था, इसमें ये लास्ट में comeback छोड़ने वाला करना था, है, फिर हमको मैं स्पोर्ट वाला चाहूंगा लोग कि बात ओबी किए, अपनी गलती नोटिस से का वाला, सीखी, जो पिछले उसका मैच जो में किया। सर है ना, ठीक है? वो क्या नाम था उसके उसका, बाद रेन अगर हार्ट मैं उसको करके देखने कोई में नाम उसने कुछ है, सीखा वो हो, कुछ वो इंप्रूवमेंट सर दिखे, जो अगर बात तो नहीं ये करना मैच तो हम में लोग आपसी छोड़ कर देना था सकती है होगा। टीम हेलो किटी गैंग। तो आपका क्या ख्याल है भाई इसमें? I mean definitely वो लोग का chances like बहुत increase हो चुके हैं, especially आज फाइनल में होगा क्या? they have हमारा जस्ट seen फाइनल what होगा, their अभी हम mistakes थोड़ा are, लिपस्टिक and if लगाएगा, they're मेरा watching this दोस्त team, they गिफ्ट किया have था। gotten the insight from this career. They know बहुत what डर they लग really रहा need to do, and it all comes down to execution at the end of the day. And it can go into any other hands, just like Scariot ने अभी बोला है, like Mark did the comeback, and this game can go to anybody's hands. Like we might see Mark dominating this time completely, but Hello Kitty can also make a अरे comeback. आप So गंदा there are लगते so रहे many लगाने। possibilities, and I'm just excited to see what is going to मजा क्या happen. नहीं, And lipstick you know, नहीं है, before we move lipstick on to नहीं the game, Scariot, ये वो है, you know, a Lebam, few extra lebam. words. Anything else you want to say? दिस इज अरे कॉल्ड मैं तो लेबम। बस यही बोलूंगा कि स्क्रीन पे बने रहिए और देखिए कैसे कहानी बढ़ेगी आगे, क्योंकि मुझे ड्राफ्ट दिख रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड अरे हूं भाई इसके दिस अंदर इज jump ओनली in करने की 37 already, लाइक्स, क्योंकि predictions की बात आदमी आती तो है, पहले मुझे वाला बहुत स्ट्रीम से ज्यादा ज़्यादा आया तो। चलो तुम लोगों को मैं प्रिडिक्ट करने के लिए दे देता हूँ. I will continue my moving stick again, and let's go straight into the draft phase गुस्सन of गुड game नाइट, number गुड 2. नाइट। तो
दोबारा से वापस से आएंगे अब इस ड्राफ्ट फेज के अंदर देवी और सज्जनों, और हमारे सामने ऑलरेडी पिक्स आ चुके हैं। और सोच कर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें यही बताऊंगा, आप नोटिस करिए हायाबुसा ओपन है, लिंग ओपन है, फैनी ओपन है, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पिक्स ओपन दोबारा है। खलीद सबसे पहला पिक था ओबीआई की तरफ से, तो ऑब्वियसली उसका आंसर आना था फोबियस के रूप में, बट एंग्री कैट ने पहले विक्साना भी पिक कर लिया है। अब मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे चाहे तो आप वैलेंटीना पिक कर सकते हैं, चाहे तो आप एक अरोरा पिक कर सकते हैं, बट अगर आप चाहे तो उसको अगले फेज के लिए भी रख लीजिए। ये भी लॉकिंग इन हायाबुसा घटोट काचा Seriously? Oh, this time they have. Oh, again they have this मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर ओपन करके भी कैरी बैन देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पर, क्या पता है कैरी या लूना जो टैंक बिल्ड करता है, या फिर नहीं देखिए तो ओबिया और अकाटसुकी ने अब प्लेस स्विच कर ली, मतलब हीरो स्विच कर ली, खराब तो नहीं खेलता है लिंक शायद। ओबिया भाई गए हैं इस बार खरीद और उन पे गया है अकाटसुकी पे जो कि है फोबियस। अभी देखें तो जैसे आपने बोला कि गटोट का सा पिक हो गया है, ठीक है। अभी हम जाएंगे सेकंड बैनिंग फेज में, और आपने बोला कि काफ़ी सारे जंगलर्स खुले हुए थे, पर अभी देखें तो यहाँ पर दोनों जंगलर्स पिक हो चुके हैं, जो कि एक लिंग है, एक हायाबुसा है। दोनों यहाँ पर जैसे बोलना चाहूँगा कि इस लैंड ऑफ डॉन में दोनों के बीच में काफ़ी बोलते हैं ना हाथापाई होती रहती है, क्योंकि कभी हायाबुसा आता है कभी लिंग आता है मेटा में, बट अभी दोनों चल रहे हैं मेटा में, तो अभी दोनों दिखाएंगे हमें क्या कर सकते हैं इस युद्धभूमि। बट अभी देखें तो मॉस्को बैन आया है यहाँ पर। अब हालांकि अगला बैन क्या आ सकता है यहाँ पर, टीम हेलो किटी क्या लाइक करो थे। पूछा ही था उससे पहले। थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। इतना अमीर है और 100 सुपर चैट को बैन कर रहे हैं। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। या फिर इनको उस कांस्टेंट से बच सकते हैं, तो लिनोक्स के पास ब्रिलियंस से बचने के लिए तो इसलिए उसे बैन आउट कर दिया। हैरिथ बैन यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक फोबियस है, तो ऑनेस्टली अगर सामने हैरिथ कुछ होता भी एक सेकंड के लिए आप जीत रहे हैं। एंड जैसे कि आपने मेंशन भी किया था लिंग हायाबुसा के मैचअप के बारे में सोच गए, मैं उसी कॉन्वर्सेशन में वापस आऊंगा, क्योंकि आज कुछ यंगिन से भी बात हो रही थी हमारी, एंड उन्होंने मेंशन भी किया मुझको बिन किया तो ये लोग ओ मुझको कुछ थोड़ा डर लगा होगा, जिसने पहले यूज कर दी वो हार गया। तो आप कॉन्स्टेंटली नोटिस करेंगे लिंग हाया हमेशा मिड टू लेट गेम के लिए खेलते हैं, और उसके बाद जो भी फार लेन होती है, यानी लॉर्ड अगर बॉटम साइड में है तो फार लेन आपकी बिल्कुल टॉप लेन हो जाती है, तो वो टॉप लेन जाके क्लियर करते हैं। अब टाइमिंग का खेल आता है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, एंड इट ऑल कम्स डाउन कि आपने सामने वाली टीम के रोटेशन को कितना ये जो क्या के लिए हैरिथ को बैन किया ना, तो वो हैरिथ को ये लोग साथ अच्छा प्लेयर हो देता होगा। हैरिथ रोमर बैन देखना चाहता हैरिथ पिक करके कोई जीता भी तो था आज का ही दिन में था क्या। अगेन आपके पास नोट का चाहे आपके पास खरीद है, आप चाहे तो सामने रोम ऑप्शन शट डाउन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली एंजेला, क्योंकि अगर ये एंजेला लिंक कॉम्बिनेशन आ गया या एंजेला फोबियस कॉम्बिनेशन आ गया फिर रोकना मुसीबत लग जाएगा। एंजेला भी है, मैं तो सोच रहा था कि शायद कामिला बैन हो सकती है, क्योंकि कामिला काफी अच्छा मॉस्को रोटेशन गुड, वर्ल्ड का मॉस्को रोटेशन गुड था क्या। बट दोबारा से देखे तो नियो साहब को दे दिया गया है कैरी। एंजेला ले रही है क्या, एंजेला बैन ओ एंजेला ओपन रखने से तो खत्म है, एंजेला और लिंक तो गेम पूरा हैंडल करेगा अगर ये लोग कंटिन्यू होने से जरूरी नहीं है वैसे तो। या फिर जब एंगेज करने जाएंगे तो वो कामयाब होंगे उस क्या बोलते हैं बेट आउट कराने में, अल्टीमेट्स, कुछ स्पेल्स या फिर कुछ यूटिलिटीज जैसे बोलते हैं हम बेसिकली। अभी हम देखें तो यहाँ पर जो दो कदिता अच्छा है वैसे वैलेंटीना के लिए, बट वैलेंटीना प्यूरिफाई करने से हो जाएगा वो बस। वैलेंटीना बोला ना, वैलेंटीना इज सच गुड पिक ना, मेंस में जा रहे हैं वैसे ये भी खराब तो नहीं है। और अभी देखना पड़ेगा कि लास्ट पिक यहाँ पर गोल्ड लेन खराब तो नहीं है। वैलेंटीना को इतना अच्छा पिक है ना, हम पहले से बोला ना, हम पिक में खेलने से हमको पता है ना ये कितना खतरा है, ये क्या कर सकता है ये लड़की। ऑप्शन आप प्लॉट बोलने वाले हैं जी, बिल्कुल आप प्लॉट बोलने वाले थे, उन्होंने पिक भी कर दिया, बट मेरा सवाल थोड़ा सा है, आई मीन ठीक है अंडरस्टैंडेबल, आपके पास इस टाइम पे यही एक फुल डाइव कंपोजिशन है, फाइनल मैच होगा या फाइनल मैच बेस्ट ऑफ 2 होने से मतलब वो डबल सिर्फ डायरेक्ट वो क्या बोलता था रे वो तब वो जन ठीक है 3 मैच देखने का मन हो रहा है, वो टक गया के रूप में, लिंक के रूप में बड़ा होने कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि एंग्री कैट और नियो को बचा सके, तो ग्रॉक बहुत बढ़िया पिक हो सकता था, बट चलिए आपने मिनोटॉर को लॉक किया है। थोड़ा सा मैं अब यही बोलूंगा कि मिनोटॉर, क्योंकि रोम में दिक्कतें आती हैं, मिनोटॉर को थोड़ा नर्फ हो चुका है, पीछे हो चुका है, वो बूते जैसा ग्रॉक बेटर रहता है इस पॉइंट पे, लाइक जेन्युइनली ग्रॉक वुड हैव बीन द बेस्ट पिक इन दिस सिनेरियो, बट वो चीज हुई नहीं। एंड मैं जनता को एक बार बताना भी चाहूंगा क्योंकि एक बैन मिस हुआ था, तो बिल्कुल मैच के शुरू होते ही पॉज भी आने वाला है, टेक्निकल डिफिकल्टी वाला डिस्कस होएगा कि क्या सीन है, हो सकता है ये मॉस्को तो मॉस्को बोलता है क्या था, जो भी होगा तो अच्छा है, हम आपको ऑलरेडी बता देंगे। अभी जो हमारे सामने ड्राफ्ट है सोल स्काई, बहुत जल्दी पिक करना पड़ेगा आपको कि कौन सी टीम है जो जीत रही है ये गेम।
देखिए अगर सिर्फ ड्राफ्ट बेसिस में देखें चलो लिंक तो का लाइक गेम प्ले काफी ज्यादा दिखेगा, कंडीशन पहले आती है जैसे कि तो देखो नहीं खेलेगा मिनेटॉर ले होगा। रहा है, एंड हायाबुसा भी है मैं इधर। कहूंगा कि वाओ, अच्छा टाइम तो है, पर दिक्कत काफी आती है उसे रोल कौन लेने में, हैकर है क्योंकि इधर? अभी देखें तो काफी ज्यादा स्क्विशी कौन हो है गया है, या फिर हैकर? स्क्विशी हैकर नहीं, तो नहीं है तो जो इधर कोई अभी भी। मेटा में ज्यादा बर्स्टिंग हीरो आ गए तो जल्दी से बर्स्ट आउट डाउन कर दे ये रहे लोग हैं पोस्ट मिनेटॉर को। पोस्ट क्यों दे अब रहे हैं मिनेटॉर बार के साथ जो बार? मैचअप है वो है एवरी टाइम लिंग वगैरह का, पोस्ट तो पोस्ट लिंग जो है पोस्ट। काफी मोबाइल हीरो है, उस मोबिलिटी को मैच करने के लिए उनको अपनी पोजिशनिंग काफी ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर पोजिशनिंग ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है लाइक काफी अच्छा हमें देखने को मिले कि सेटअप दिया जा रहा माफ है जीतेगा मिनेटॉर लग रहा द्वारा। है क्या? ब्लू बट टीम अगर हम उसी को गुड देखें ड्राफ्ट। तो गेटआउट कासा पे भी काफी अच्छे से चलो इस मैच में मैं बोलना चाहूंगा कि गेटआउट कासा और खलीद का मैचअप काफी अच्छा मेरे को मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले मैच में फोबियस जो था, सॉरी हाँ फोबियस था, तो फोबियस जो है उतना अच्छा खासा मैच नहीं कर पाया था सिनर्जी गेटआउट कासा के साथ, तो मेरे को लग रहा है कि इस मैच में कुछ कर सकता है जो लाइक कुछ नहीं कुछ खलीद और गेटआउट कासा साथ में कुछ कर सकते हैं, जो लाइक कुछ छक्के छुड़ा रहे हैं या फिर टीम ऑफ पे, या फिर जो मैंने बताया अगर लिंक की पोजीशनिंग के साथ मैं कर लिया मिनटोर ने काम उसका अपना, हिंदी इतना सुंदर तो हमें है। देखने को मिल सकता है एक काफी अच्छे सेट देखने को मिल सकते हैं इस मैच में। अभी और बातें करेंगे, बट आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक बाकी जो छूट गए हैं, जैसे और मेज इजुमा छूट गया हैकर है, है क्या? तो हैकर आप है उनके तो बारे में अच्छा क्या है। कहना चाहेंगे? आई मीन मेरा पॉइंट हर बार इसी बात पे आ जाता है कि आप मेजेस की बात करते हैं, इस टाइम पे मेज का सिर्फ एक मेन रूल है और वो ये है कि आपको मिड क्लियर करनी है, आपको रिवर कंट्रोल मेंटेन करना है। लिथो वॉन्डर से पहले आपको अपने सामने वाले मेज को पोक डाउन करना है ताकि वो रिकॉल करे या फिर एटलीस्ट लिथो फाइट में ना आ पाए। वहां से आप अपने जंगलर को एडवांटेज दिलाना शुरू करते हैं और फिर आपका काम है कॉन्स्टेंटली पोस्ट खत्म हो गया क्या? पॉइंट्स अरे पॉइंट्स बोलते हैं वो, जल्दी पोस्ट खत्म हो गया क्या? जल्दी वहां पे करो जाके कैंप ना। करिए। इट ऑल कम्स डाउन टू द इन गेम कॉल्स एज वेल। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप mid lane ये में कौन सा कैसे हीरो खेलने है? वाले हैं बैकग्राउंड में and एक लड़का है उसका ना? काफी न्यूट्रल मैचअप बैकग्राउंड में रहेगा एक मिड हीरो है लेन ना? का। यस कौन है वो? पॉसिबिलिटी है कि मिनोटॉर वेक्साना वाला क्या नाम कॉम्बिनेशन था? थोड़ा जल्दी क्लियर कर दे, क्योंकि सामने बस एक अरोरा है। रे आप भी आ गए, फटाफट से एक गेस जल्दी क्या मारिए। नाम कौन था सी रे? टीम ये जीतेगी? Guess करिए बैकग्राउंड और में उसके जो बाद एक हम हीरो second हीरो है। देखेंगे। Okay, hopefully it should be team half this time. ओके Okay. ओके ओके रे ने अपना चलिए, prediction चलिए। दे दिया। रे ने फटाफट से प्रेडिक्शन दे दिया। सोच का जल्दी प्रेडिक्ट करो। हेलो किटी भाई, ये इसके Hello साथ Kitty। तो मैं हेलो किटी के साथ चलो चलो बढ़िया। एक खिलाड़ी गया माफ के साथ, एक खिलाड़ी गया हेलो किटी के साथ। ओह चलिए, पक्की चलिए, तो पक्की तो। तरफ इसका कौन सा स्किन है? मैं स्किन नहीं देखा आज तक। गेम हो चुका है शुरू। देवी नहीं, ये और modified सज्जनों आ coming, गए हैं मतलब हम। बाद में आएगा वाला है Northeast क्या? Cup, हमने देखा ये अरुणाचल स्किन को प्रदेश अभी के तक। सेमीफाइनल्स, दूसरे और आखिरी सेमीफाइनल्स के अंदर, जिसमें हेलो किटी गैंग है इस बार ब्लू तरफ, माफ है रेड साइड के ऊपर। 1-0 की बढ़त माफ के पास ऑलरेडी है, पर देखना है क्या हेलो किटी इस गेम में कमबैक दिखाएगी, इस सीरीज को तीसरे गेम पे लेके जाएगी क्या, या फिर आज भी हमें एक और 2-0 देखने को मिलेगा। मेरा नाम है स्केडिएट, मेरे साथ जुड़े हैं सोल स्काई। टूर्नामेंट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड एंड ब्रॉट टू यू बाय बैटल नाइट्स ई स्पोर्ट्स। तो मेक श्योर करें फॉलो करें आप सबको, और हम चलते हैं फॉलो करते हैं अब इन खिलाड़ियों को। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है आपने आज। जैसे कि अमिताभ जी बोलते हैं, यहाँ पर दोनों ही टीम यहाँ पर अपने जोश जुनून जज्बा के साथ खेलेंगी, ऐसे अमिताभ जी बोलते हैं, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के साथ खेलेंगी। तो देना पड़ेगा किस पे ये चीज, ये 6 चीजें ज्यादा होंगी, हना हम भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी बॉटम scare लेन it पे is obsessed with ये क्या हना है, भी। उसको डैमेज हना भी से हायाबुसा क्या द्वारा जो कि प्रॉब्लम है शैडो किलर और क्या शैडो हुआ? कॉम्बो। हना भी से क्या हुआ उसको? कोशिश जरूर उसको करेंगे, हना भी but चलिए, प्लेयर बहुत level पसंद 4 नहीं है। बीजेपी क्या के पास बोला? हम तो already अच्छे आ से नहीं चुका है सुने। फिलहाल। हना तो भी भी क्या आप बोला? देखिए लेवल 4 पे आ गए हैं, बट दोनों ही टीम थोड़ा अटेंशन बॉटम की तरफ दिखा रही है इस टाइम पे। वाई बहुत ज्यादा आगे हैं एंड बहुत ऑब्वियस हो जाता है, इससे माफ के प्लेयर्स को पता है दैट दिस इज जस्ट अ बेट। बट कोशिश यही करना चाह रहे थे वो कि वेव फ्रीज कर दे, वो हो नहीं पाई, तो नियो को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन मिनियंस को क्लियर करने के लिए। शायद एक मिनियन जरूर मिस कर दिया है नियो ने, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, क्योंकि अब 3 सेकंड बचे हैं, दोनों टीम जाएगी मीनो फिर turtle से की लिया है ना? आगे भी एक बार मीनो बहुत अच्छा वाला आदमी आया अभी था। कछुआ महाराज आगमन कर जाएंगे इस युद्ध भूमि में। मैं देख रहा हूँ कि दोनों टैंकों को मिड लेन लेने के लिए दे दिया है, और ऊपर जाए हैं मेज। जी बिल्कुल, कोशिश यही है अब दोनों ही मेज लेवल 4 हों। दोनों टीम की तरफ से अच्छी रोटेशन आ रही है सोल्स का इस बार। मैं बोलूंगा प्रायोरिटी अगेन माफ के पास है, वेव क्लियर उनके पास थोड़ा ज्यादा बेहतरीन है मिनोटॉर के साथ, क्योंकि बहुत cute है, मैं नॉर्मली कछुआ देखता था महाराज बहुत concussive cute blast वाला होगा word है। शायद, लेकिन नहीं, ब्रेव स्माइट के साथ गए हैं दूबा, थोड़ा एक्स्ट्रा हीलिंग के लिए फोकस रहेगा वो बनाए उनके ऊपर, डैमेज अच्छा खासा देते हुए अपने डेजर्ट टॉर्नेडो से, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेवल 4 आ चुका है दूबा का, और अब आप री एंगेज कर सकते हैं। विलो के पास फ्री मौका था, टर्टल आराम से उठा रहे हो, लेकिन शैडो किल का इस्तेमाल पीछे की तरफ हो चुका है। रोमर है, रोमर को नहीं पकड़ना चाहिए आपको, कॉन्स्टेंटली पोक खाते हुए आकाशु की फर्क नहीं पड़ता। अब आएगा री एंगेज, सीधा शॉर्ट स्ट्राइक के साथ इस्तेमाल जरूर किया है, और बहुत ही बेहतरीन नॉकअप, 4 खिलाड़ी दूसरी बार भी, क्योंकि रेस किल बनती और उसके पीछे विलो 2 किल निकालने में कामयाब। वापस भागना पड़ेगा मिजुकी को, क्या ही शुरुआत मिली है इस टाइम पे माफ को।
जी, बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा कि मिनोटॉर ने जो लाइक मिनोटॉर को निकाल नहीं पाए हायाबुसा, और थोड़ी यहाँ पर बोलूँगा कि एक बहुत ही बड़ी गलती थी हायाबुसा के द्वारा, ताकि जी फिर हमने देखा कि देखो कॉशन भी काफ़ी अच्छा था ऑरोरा के द्वारा कि उन्होंने पहले फ्रीज़ किया, पर उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ़ॉलो-अप नहीं मिल पाया, ना ज़्यादा डैमेज था उस टाइम। और उसी का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर बस एक क्या है टेम्पेस्ट बोला? ऑफ स्वॉर्ड करा, या टेम्पेस्ट ऑफ ब्लेड करा, उससे 1-2 किल निकाल दी यहाँ पर लिंग ने अपने खाते में। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम एम्बलम देखेंगे तो वॉर क्राई है लिंग के पास। तो अर्ली गेम में तो लाइक ज़रा एक्स्ट्रा बेसिक डैमेज तो मिल ही सकता है। हायाबुसा ये बना रहे हैं ना। बरसर्कर फ्यूरी की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हो, 2500 गोल्ड उनके पास है, आपके पास 800 गोल्ड की लीड आ चुकी बा है वो सीधा लोग का हायाबुसा एक्सपी के इतना ऊपर। जल्दी एक आइटम बन दूसरे की ओ तरफ वो पहले पूरा आइटम बूट की कंप्लीट नहीं कोशिश है। किया। अब क्योंकि बीएमआई लगा रखा है आपने बुश में, आपको पता है MM का भी दुआ की बूट हो पोजीशन गया। कहाँ है। एंग्री कैट को स्काउट करने में साके कामयाब हो गए, तो बॉटम लेन में तो ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, लेकिन बफ के ऊपर बात आ चुकी है। फिलहाल सिक्योर तो कर लिया मिजुकी ने पर्पल बफ। ओह माय गुडनेस, डैमेज देखिए इस खिलाड़ी पे कितना ज्यादा पड़ा है। और वो भी है फिलहाल फंसते हुए विलो, क्योंकि उन्होंने टेम्पेस्ट ऑफ ब्लेड यूज कर लिया था, तो वो भी आराम से बच के चले जाएंगे फिलहाल पीछे, कोई दिक्कत लड़की नहीं लोग को आएगी। नूब मत बोल दो ना। दोनों टीम लड़की लोग को नूब मत बोलो ना, हम भी तो लड़की है। करती हुई, लेकिन वो दुख होते हैं तो डूब बोलने एडवांटेज से। को कांस्टेंटली पुश कर रही है। हम भी इतना नूब है, हमको इतना दुख होते हैं। बिल्कुल, नूब मत बिल्कुल। अभी बोलो तो। देखेंगे तो जैसे कि हमने बताया कि 800 गोल्ड का फ़र्क आ गया है यहाँ पर हायाबुसा और लिंक पे, और सबसे पहले बरसर्कर फ्यूरी जाएँगे तो डैमेज तो लाइक बरोबर पड़ने वाला है यहाँ पर लिंक के द्वारा। और अभी दूसरा यहाँ पर कछुआ महाराज अप होंगे, और अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मिड लेन नहीं खत्म देखेंगे होने तो वाला है मेरा जूस। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश मिजुकी ने अगेन होगी शैडो किल का इस्तेमाल कर लिया। अब नॉर्मली आप नहीं चाहते इस सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि ये लिंग हायाबुसा का मैचअप इसी बात पे टिकता है कि किसने अल्ट पहले यूज कर ली, कौन बाद में यूज कर रहा है। फ्री टर्टल मिल जाएगा माफ के खिलाड़ियों को, और एक और बार फार्म लीड अब आती हुई। अब टर्टल यस इवन दो गोल्ड मिलता है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें रहती है कि आपको EXP ज्यादा मिलती है। मर गए का Soul मेडम Sky। बोलते हैं, और एक आप थप्पड़ लीड मार देखिए ऑलरेडी, हम्म। लेवल 9 विलो और Which लेवल one is 7 Sky? मिजुकी, कोई क्रीप नहीं है फार्म करने के लिए। हेलो किची प्लेयर्स देयर और अभी ऑल क्रीप नहीं होते, गाइस। ट्राई करेंगे यहाँ पर गोल्ड They're क्रीप all लेने का, बट girls. अभी 8 तो हो जाएंगे, बट अभी देखना पड़ेगा। तो लिंक यहाँ पर लेवल 10 भी हिट करने वाले होंगे ऑलमोस्ट। तो जैसे वो बोलेंगे तो अप्रॉक्स ओके, यहाँ पर थोड़ा फ्रीज तक दिया गया, मेरे को तो लगा कि मेरे को ट्राई कर दिया, बट वहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू ऑफ एरिया में ओ जी बिल्कुल, ओबी है फिलहाल रेजिंग सैंडस्टॉर्म इस्तेमाल जरूर किया है, उसके पीछे कूदा जरूर जा रहा है प्लेयर के ऊपर। ओबी है कोशिश करेंगे वापस से कि हील कर ले खुद को, लेकिन उसके बाद भी नॉकबैक हो गए। विलो पकड़ लिया उन्होंने, विजिट ग्लेशियर कोई भी नहीं फंसा उसके बीच में, और उसके पीछे नॉकअप जरूर आता हुआ, लेकिन बॉम्ब कॉन्स्टेंटली चल रहा है। कात्सुकी का पकड़ा पीछे से, क्या ही मिनोन वाह। फ्यूरी लगाई है दूबा ने, ये क्या माफ ही लोग फिर से खिलाड़ियों को जीतेगा होगा कुदाया लग है रहा है। हवा में, और या क्या ही खेरी गायब वो किया बोटलेन इस एक बार दिखाने से ठीक है। माफ बिल्कुल भी बोतलेन नहीं रुक देखने रहे का इस मैंने गेम में। बोतलेन पिछले गेम में लगता है early क्या game चल में रहा है, बची दिखाओ करती ना थी, लेकिन यार। इस गेम में तो बोतलेन नहीं क्या दिखा रहे ही ये लोग, कर रहे हैं ये। ठीक नहीं मानता। कुछ तो हो रही है कुकिंग। बट मैं कहना चाहूंगा कि लाइक मैंने पहले सोचा कि ओबिया और गेटआउट का ऐसा कुछ करेंगे, बट इस मैच में कहना चाहूंगा अकाट्सुकी, और जो अकाट्सुकी का फॉलो अप था हमारे लिंक को ब्लू ऑफ एरिया में, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा फॉलो दिया लिंक। पहले अकाट्सुकी गए, फिर वहां से लिंक आया, फिर वहां से दुबा साहब आए, वहां से मिनोवन फ्यूरी करी फ्लिकर लगा के, और काफी अच्छी शॉट कॉलिंग बोलना चाहूंगा, काफी अच्छा कम्युनिकेशन का बोलना पूरा चाहूंगा। वो आ यहाँ गया देखेंगे ना, तो यहाँ पर टॉप लेन में ताकत पूरा वापस आ गया लोग। क्या ही फ्रिजिड जितना तो ग्लेशियर जितना बचा है, लिया उन्होंने आफ्टर ओबीआर को, ऑल और वी आर द उसके फेमस पीछे स्क्वाड विलो ऑफ को पकड़ लिया, अरुणाचल बोल make के it a यो two। कर रहे हैं। ज्यादा कुछ खा लिया माफ ने, आई मीन द बिट मोर देन व्हाट दे कुड चू। कोशिश करी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की, नहीं हुआ माफ भी चाहूंगा मैं, बट उसके पीछे अब देखिए माफ मैप पे कॉन्स्टेंटली ऑब्जेक्टिव्स ले रही है सोल्स स्काई। यस टॉप में वो फाइट हार गए, शटडाउन मिल गया सामने, बट आपने ऑरेंज बफ चुरा लिया है, तो मिजुकी के पास अब फिर से फार्म करने के लिए बॉटम की तो क्रीप्स है ही नहीं। और अभी तीसरा कछुआ महाराज आगमन कर जाएगा इस युद्ध भूमि में। और जैसे आपने बोला कि फिर से लेवल एडवांटेज देख लिया आप, लिंक के पास पूरी जा रही है, उस पर एक लेवल एडवांटेज तो है पूरा। और अभी अगर ये कछुआ महाराज भी उन पे जाता है तो शायद से अब 2 लेवल एडवांटेज में आ गए हैं, तो शायद 3 भी हो जाए। और अभी देखेंगे तो दूबा का यहाँ पर पूरा कंट्रोल है मैप पे, और यहाँ पर कोशिश भी नहीं कर रही है, यहाँ पर ये ऊपर दोबारा जा रहे हैं। माफ लेने से तो तो ये कॉल मेरे को माफ जरा जीत जाएगा। देखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या लगता है स्केट भाई आपको? टॉप में शायद पिक ऑफ हो सकते हैं इस टाइम पे अकात्सुकी। कोशिश यही है कि कितनी देर निकाल पाएंगे। फ्रिजिड ग्लेशियर का इस्तेमाल पकड़ लिया उस खिलाड़ी को, अकात्सुकी ने कोशिश बहुत अच्छी करी। अब आपने टियर 1 तो खो दिया टॉप की, साके ने इस्तेमाल कर लिया, एओजी तो नहीं बचा हुआ है अभी, लेकिन वो नॉक बैक। चलिए आगे टीम पूरी की पूरी पीछे चेस करने के लिए, बीएमआई का इस्तेमाल फंस गए आप, कोशिश कर लीजिए लेकिन वो नाच नहीं हो पाएगा बिल्कुल। पकड़े गए वहां पे खिलाड़ी,
बहरहाल तो शैडो का इस्तेमाल मिजुकी, ये बेस की डायरेक्शन तो नहीं है आपकी, रिकॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंग्री कैट शायद ना पकड़ पाए, लेकिन वही देखिए फिर से आप टॉप में इतनी ज्यादा पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, नियो ने शांति से बॉटम में पिक निकाल लिया, लेकिन एक और बार डैमेज कॉन्स्टेंटली आता हुआ उनकी तरफ से ओबिया फंस सकते हैं। यहाँ पे रेजिंग सैंडस्टॉर्म इस्तेमाल किया था, लेकिन क्विक सैंड गार्ड जिंदा रखेगा उनको। एओजी का इस्तेमाल, लियो फंस चुके सामने सबके और गिरेंगे पकड़ के। कोशिश करी उन्होंने, लेकिन उसके पीछे विलो का सपोर्ट आता हुआ। नॉकबैक सामने से आया है, 2070 पैसिव उनकी अवेलेबल है, फ्रिजिड ग्लेशियर में कोई नहीं पकड़ा, 3 प्लेयरों को नॉकबैक किया, उसके पीछे एक और पिक निकालेंगे। वाई फंस गए, गलत जगह आ गए और वही सवाल भी पूछ रहे हैं खुद से। साके बचाने की कोशिश, खुद की जान, क्योंकि विलो मिजुकी पीछे की तरफ दोनों भाग रहे हैं, एक के पीछे दूसरा खिलाड़ी। नॉकबैक दूबा की तरफ से आपने वो की शैडो के लिए इस्तेमाल किया है, और फटाफट मरेगा से क्या? शैडो मर गया यहाँ मर से गया मर गया जिंदा मर बचने गया के ला, लिए और नहीं उनकी मरा तरफ तो भाग गए। क्या ही गेम गया है बैक एंड फोर्थ का, लेकिन फिर से माफ एक एडवांटेज में। कौन नहीं करे? अच्छा तो प्रयास था हो भी, अगर कौन बेट से आउट किया करियर? अल्टवर्ल्ड प्यूरिफाई कौन पे फॉलो नहीं किया गया कर? गेट आउट का, जैसे कि हमने पिछली मैच में हमने डिस्कस कर रहे थे, बट वहीं पर कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे, तो ज्यादा ही आउट ऑफ पोजीशन हो गए थे। फिर वहां से हमने देखा कि फटाफट से टीम फॉलो देने आई और निकाल गई 2 बंदों को फ्रिजिड ग्लेशियर के, और पैसिव भी गया है अभी ऑरोरा का। अभी अगली टीम फाइट में 18 सेकंड रह गए हैं इस लॉर्ड महाराज को आने में इस युद्ध भूमि में, और अभी देखेंगे तो ऊपर का भी टायर 2 टर्रेट लेने वाले हैं यहाँ पर टीम माफ के बंदे। अभी देखेंगे तो मिड लेन में यहाँ पर या बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल किया शैडो किल का, बट उसके बाद भी फंस गए, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट जो शुरुआत में हमने बोला था सोल्स का है, वो यही है कि हायाबुसा और लेंग, इनमें जिसने अल्टीमेट पहले यूज कर ली वो सबसे पहले मिलेगा। मिजुकी अपनी जान बचाने के लिए कर दिया, शैडो तो किल ये को लोग नहीं attack आएगा करते क्योंकि ये हैं, लोग और आए उसी पड़ी नहीं है time अभी। हीलो सीधा एमएम बेचारा Tempest of क्लोज Blades उधर की तरफ पूरा है। ये और पुश कर रहा आसपास है। कोई और टारगेट भी नहीं था कि आपकी First उनकी lot शैडो किसी खत्म। और पे शिफ्ट हो जाए। और आप लेवल डिसएडवांटेज देखिए, 4 लेवल पीछे है मिजुकी इस टाइम पे, लेवल 14 पे खेल रहे हैं विलो। आइटम देखना चाहूंगा इस टाइम पे मैं क्या क्या बिल्ड कर लिया है दोनों खिलाड़ियों ने। इस बार तो पहले एंडील तो बनाया गया है यहाँ पर ऑरोरा द्वारा, बट उतना सारा देखें तो मोमेंटम इतना ज्यादा शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर टीम माफ पे कि जरा उसमें उसका फायदा देखने को फायदा तो रहता ही है उस चीज का, बट उतना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा आप पे उसका फायदा नहीं हो रहा कि आप बुद्धू लड़की को देखिए जब आ रहे हैं तो आप अलग अलग करके फाइट ले रहे हैं। आप पहले टॉप चले गए, उसमें आपका बॉट में इतने सारे लेन चले गए, फिर आप बॉट आए, फिर आपकी पीछे वाली टीम पूरी आ नहीं पाई बॉट में, फिर आप वहां से लेके वो वहां पर से वो कट जा रहे हैं। माफ वाला रेड नहीं है क्या? रेड वाला तो माफ है, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो चश्मा भी पहने है तो। अब वेव क्लियरेंस की अगर बात करें तो ठीक है, यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेव क्लियरिंग, बट आई डोंट थिंक सो अभी तक फार्म इतना ज्यादा हो पाए हैं खिलाड़ी, क्योंकि बीओडी अभी बिल्ड हुई नहीं है मिजुकी की। दिक्कत में ऑलरेडी ये खिलाड़ी लिविंग तो हमको लाइन मार रहा है, बोलो नहीं, शायद वेव तो क्लियर हो जाएंगे, बट रेजिंग सैंडस्टॉर्म डिफेंसिवली ये तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब आपके पास बैकलाइन पे चढ़ने के लिए कोई नहीं है एओजी के अलावा। बट चलिए विलो खुद बैकलाइन के ऊपर कूदने वाले, टेम्पेस्ट ऑफ ब्लेड्स इस्तेमाल किया वापस बचने के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया फ्रिजिड ग्लेशियर, पूरा एंगेज आपने रोक दिया है। मिनोन फ्यूरी नहीं अवेलेबल, एओजी ने 4 पेयर पकड़े जरूर है, विलो भाग जाएंगे, लेकिन गेम देखिएगा, हम गेम नहीं देखेगा, डेजर्ट टॉर्नेडो का इस्तेमाल, लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी आपके खिलाड़ी पीछे पिक ऑफ हो चुके हैं। नियो से इस टाइम पे आप नहीं भिड़ सकते, ये खिलाड़ी ट्रिनिटी बिल्ड कर चुका है और आपके पास इन्हें रोकने के लिए डिफेंस नहीं है। एक और बार अभी 2 कैनन निकालने हो गया, फंस जरूर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया डैमेज एक ही बार में सारे खिलाड़ी गायब। मत करो बोलता है, वो काम बंद नहीं करा। E2070 फ्रॉस्ट विंड से रोक रहे थे खिलाड़ियों को, वाई क्या बचा पाएंगे जरूर, लेकिन ये खिलाड़ी पीछे की तरफ जाएगा, वापस ही नहीं आ पाएगा। अपने पैसे इस्तेमाल कर लिया, नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिस्टल को बचाने के लिए कोई खिलाड़ी ही नहीं खड़ा। माफ बिल्कुल भी नहीं रुक रही और बिल्कुल भी नहीं झुक रही। माफ तो माफ होगा रे, राफ में आउटप्ले कर दिया और गेम माफ तो माफ होगा रे। What give away? Give away is done ना। माफ चाहूंगा, जरा मेरे थोड़ा सा इशू आ गया था उस मैं बोल रहा था, तो अरे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आपसे आएंगे हम गेम में, तो मैंने देखा जैसे कि आपने बोला राफ तो आउटप्ले करी, यार आपने गेम प्ले देखा तो भाई 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 थी, हायाबुसा को बेचारा घुस के मारा गया है यहाँ पर टीम एक्सक्रश का बोल रहा था, तो चुको दे दिया। मैं कहना चाहूंगा कि लाइक जो लास्ट में जो फाइट थी उसमें जो टीम माफ के बंदे थे, ठीक है, वो उन्होंने पहले बेट आउट कराई अल्टीमेट्स वगैरह, फटाफट से इतना सारी चीज होगी, मैं कुछ बेसिक कर जाऊँ तो मेरे को माफ करना। तो मैंने देखा फिर वहाँ तो गेट आउट की अल्ट आई, उसमें से उसने
उतना मुझे सारा काम स्टन आ रहा नहीं है दिया एक्सेल टीम डाउन ऑफ के करे। बंदों को। फिर वहां से हाँ लिंग आया, मेरे लिंग साथ ने खेलने से फटाफट रैंडम नहीं टिप होता ब्लेड है। निकाली और अरे फटाफट इतना दिन नहीं खेला अपना है काम देखो। किया। हाँ मुझे मेरा 2 बंदे वापस निकाले इसका चल ना को याद उस लास्ट पर टीम फाइट में, उसके बाद ग्रेट उसने अपना में काम आने दो, करते या सॉरी करते या ग्रेट फिर बोलते लास्ट ग्रेट में में आने दो, मैं देखा मेरा इससे किस हो खेलेगा गया ना एंड मार लास्ट में देगा अरोरा तुम। बची थी, कुछ कर कस्टम नहीं पाई करने थी है वो क्या? ज्यादा। आपसे तो बहुत अच्छा लिंक खेलता होगा। I mean, इस पॉइंट पे मैंने एक भी लिया 2 करेंगे बार। भी क्या, वापस आइटम्स के ऊपर में नजर डालेंगे, लेकिन ये जो स्टार्ट सीट में हम खानी चीज constant देख खत्म हो रहे गया। डैमेज ओ चलो 27 का सबसे ज्यादा था। अब आपने ट्रिनिटी बिल्ड कर जरूर लिया है, लेकिन उसके गिव बाद अवे भी कर लिस्ट आप दे दो, हम गिव engage अवे नहीं कर करा पा देते रहे, हैं। क्योंकि स्टार्टिंग टीम फाइट से पूरा मोमेंटम सेट हो गया था। सो उसका आप नोटिस करिए, अगर आप पहले टर्टल पे विलो को Zuma, डबल give किल me दे all the देंगे, वो भी names. लिंक के ऊपर, फिर तो कोई मतलब ही Muff नहीं है full कि वो name फिर I don't एज know. ओके Muff काटे, means I अनलेस वो don't know. I खुद don't know. गलती करे। हमको एंड नहीं द मालूम यार फैक्ट कुछ। के बार माफ का माफ मीनिंग के क्या? माफ का खिलाड़ी मीनिंग हर बार इंदो एक में अलग ऑपोजिट होते लेन के ऊपर भी हैं। प्ले इसमें बना क्या रहे मीनिंग थे। है मालूम नहीं। इवन दो विलो पिक ऑफ हुए, एक बार शायद शटडाउन बाउंटी भी मिली सामने वाली टीम को, उसके बावजूद नियो मेड श्योर कि वो बॉटम टियर टू पुश कर जाते हैं। तो आपने कॉन्स्टेंटली प्रेशर हटाया है अपनी टीम के अया ऊपर से एक we स्पेसिफिक gonna लेन से, have एंड आप टियर 1 के बदले 5 टियर 2 minutes 10 हमेशा minutes ब्रेक एक्सचेंज देने से करेंगे। ठीक है। इवन दो ज्यादा ओबीआई नहीं, थे 5 खड़े minutes हम लोग सब सामने, तक रहे। अच्छा खासा उन्होंने टैंक भी मैच किया, खत्म नहीं था, और उसके फाइनल मैच बावजूद अभी अगेन फाइनल मैच आप होगा। बाकी फाइनल मैच भी खिलाड़ियों को 2 में देखिए, खत्म कर मिजुकी खत्म। फार्म ही नहीं कर पाई वैसे थी, एग्जीक्यूट दूसरे वाला पर्पल बफ से उनका ई बफर स्पोर्ट लेट हो अच्छा रहा था था। ना। तो अब अगर एग्जीक्यूट ई हायाबुसा स्पोर्ट फार्म नहीं कर पाएगा तो आपकी टीम रोटेट नहीं कर पाएगी उतना ढंग से, क्योंकि आपके पास डैमेज नहीं बचेगा। यस, आप आर्ग्यूबली कह सकते हैं E2070 थे, बट एक ग्लोइंग बॉन्ड के साथ हमेशा अरोरा स्टार्टिंग में यूटिलिटी बिल्ड पे जाती है, और उसके बाद उनका डैमेज आता है जब आप होली क्रिस्टल डिवाइन क्लेव वगैरह बिल्ड करते हैं। तो वहाँ पे भी चीजें काफी लैक करती हैं। कोई कमर जब देने से You know ठीक what? है। I'm not gonna take it away. हाँ हमको Duba मिलने is आओ तो Minotaur लिविंग के मिलने ऊपर आओ तो चल ना, बहुत कॉफी बढ़िया पीने खेला। जाएगा, कल जाएगा अभी नहीं। एक कहावत है ना, रियल अभी एमवीपी सुबह जो होने लोग, वाला है, सुबह को मिलो तो हमको 5 बजे को। अरे The रिवाइव real बताओ। MVP, the real MVP is the friends we made along the way. What the hell? क्या है बता है? बट चलिए इतना फिलहाल मुझे थोड़ा पता आदमी है नाम दिया है। होप मेरेन वता है इजुमा चीटो तापा प्लसी। phenomenal इतना game, थोड़ा but the आदमी। domination of क्यों? Marv was absolutely unreal. क्यों? I mean, Scariot, आपने mention किया है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा हिंदी में, I'm trying, okay? So I Let's can keep match it your English. pitch. Absolutely Yeah, fine. yeah. Okay, Really okay. fine. Yeah, even Doggo wants in English, bro. Okay, Doggo, अरे ये for लड़का Doggo, ऐसे then काम I'll give करता है it क्या? on इतने English. क्यूट है ये Definitely तो for की। Doggo. So anyways, just like you mentioned, like right from the beginning, I think the momentum was set up because right at the beginning there was a mistake that Hayabusa made. Right, Mizuki, he dived into the roamer instead of going to perhaps make a steal because Ling started his turtle, right? So his burn retribution damage ये क्यों was दे already है? up. Hayabusa had the perfect opportunity to go for a steal, and if not go for a steal, just disengage. But he went and used up his Uge Shadowkin. And you True. mentioned it right at the beginning. Like whoever will use it will lose it. And that's what happened. Like they lost that first team fight and they gave 2 kills to Willow on a Ling. On a Ling, that a hero that really, really requires a snowball. And from that moment on, Marth just carried that momentum over and over again also all of the engages, and after denying the farm into an assassin who really needs to snowball like Hayabusa, लड़का सही it बोल was रही है। almost game over and there was no mistakes made from the side of Marth. Just like you said, Willow, there was I think a shutdown happening, but Neo was also pushing the other lanes. They were making sure the pressure wasn't gone, and that discipline and the first mistake from the side of Team Hello Kitty Gang ultimately lost them this game as well. And with that, Marth will be making it to the finals because if this was game number 1, Hello Kitty could have perhaps afforded that mistake, but right now they really, really cannot, and ultimately they lost the game. So anything else you want to say? Doggo is here, scared yet. I mean, I guess he's just saying no. He does not want to गति say anything. आएगा So तो Sky, he's खींची gonna हम give you गति the आएगा, floor. हमको का घुमाएगा बोलो। Definitely. I हमको mean, का if you घुमाएगा see, तो like, बनने से आएगा in the और later इवेंट part एक of ही the game, दिन के that's जाएगा, as फाइनल मैच के लिए आ mentioned सकता है, that 2 they दिन were नहीं आ not सकेगा letting यार। Hayabusa getting फ्लाइट भी any मिलेगा farm, कि नहीं man. If मिलेगा, you अभी see एडवांस Hayabusa बनाना is at the पड़ेगा, top lane, डेट they are कंफर्म taking the होने red के बाद buff. If Hayabusa एडवांस is बनाना taking the red पड़ेगा। buff, they're taking the blue. And हेलीकॉप्टर not से तो even नहीं that. If I जाएगा, was Hayabusa, I would have हेलीकॉप्टर से तो totally बिल्कुल नहीं lost it. जाएगा। Okay. पता पता One time he पता just went to the blue buff, and Phobius, बहुत डर लगता है। that freaking man of a man हाँ was लास्ट already मैच there, द preparation फाइनल present for मैच him. And for होगा that नेक्स्ट वन। follow-up, the cherry on top was a follow-up coming from Ling and मिलेगा taking क्या down that सच में Hayabusa लिविंग? and that blue buff area. यार So Hayabusa हम was बहुत totally बोरिंग है पर denied ना in रूम this से game. निकलने के लिए। And मूवी not देखने only to जाएगा, mention that, but कल I मिलने आओ, feel मूवी like, देखने जाएगा तो। when they were trying to take, But you run what next do you call door. it, Who pick off run in the next top door? lane, they were
actually using a lot of resources there. हाँ और लास्ट So, मैच है, and फाइनल मैच, फाइनल with that मैच resources, they will अभी get a फाइनल call मैच also होगा that they have बिटवीन already used all एग्जीक्यूट the ही स्पॉट resources. एंड वो Now you can push गिव bottom अवे lane, हम करते हैं then ना, they ये didn't हैंडसम start. लोग एक्सक्यूज So मी फॉर अ व्हाइल, ओके. हम मेरा गाइस लोग को गिव अवे करा रहे थोड़ा सा. चलो गिव अवे कर देगा. ये कब का नाम है? ओ ये नहीं जीता था ना, इसमें नहीं हुआ था. अरे इसको कैसे सिलेक्ट ऑल करेगा? अरे डिलीट कैसे करते हैं? क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग? इसको एक डिलीट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है ना अंदर? और रिमूव वाला ऑप्शन किधर? सिंपल क्लियर लिस्ट आ रही, क्या गधा है ना मेरा माता का. आया क्या होता है रे? हो गया. कम ऑन. ओ अरे कहाँ में था, कहाँ में हो रहे हैं? शफल करता है ना 1 मिनट के. यहाँ से 17 आदमी है. चलो चलो चलो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 11 नवंबर 11 को आएगा डबल 11. 11 मीन्स 11 नवंबर को होता है, उसका मीनिंग. इतना भी मालूम नहीं है क्या? बुद्धि नहीं है क्या आपका सब? अरे रुको, इजुमा को बोलो. इजुमा हमको आपका नाम नहीं दिया है. हीरो आपका नाम है तो रुको, क्या नाम था? और लिविंग सॉरी, ये इजुमा अनूप ना, ये आपको नहीं डाला है ना. मेरा दोस्त लोग का दिमाग मेरा जैसा हो गया, लड़की जैसा हो. तो फाइनल मैच कब होगा?
ला लिविंग आउट हो गया रे. So sorry. So sorry. वो खकुरा का एपिक स्किन भी आ गया बोला ना. Predator. Karma real. Karma is real रे. Karma is real रे. फ्लैशी जीतेगा क्या दिस टाइम. कोई तो मिलेगा ना. Oh, 3% ना. 3 people को मिल रहे हैं. Hello, most welcome to the stream. Give me like, okay. Give me like. Press on the like button. Oh, फ्लैशी को कौन इतना खराब नजर डाल दे रहा है बेचारा. सब खराब है रे आप लोग थोड़ा. Enemy box out. 5 बज जाने से बताओ दे. 5 बज जाने से बताओ. 5 अगर जाए तो हमें बता दीजिए. खतरों जो को नहीं है लड़का. 7. I love you. Thank you Mush. Thank you. कौन है? तीतो और केंजी. उसका बाद जो आएगा वो लकी होगा रे. 6 भी आउट. तपा आउट. चलो, the one whose name is coming out now. Next one will be the winner for 14 diamonds. Okay, 14 diamonds. Be ready to spam your ID and server because I'm gonna deliver your diamonds right now. Kyrie, GG Kyrie. I guess Kyrie, this is second time you're winning in our stream. Is it true? Is it true? Is it true? Is it true? Is it true or no? Is it true or no? चलो, next one will be getting out. कायरी नहीं है. कायरी गायब हो गया. FK हो गया. हीरू दूसरा को मजा से बता रहे FK हो गया. खुद भी आउट हो गया. क्या नसीब है रे आप लोग का. सच में बहुत दुख लगते हैं. बहुत माया लगता है. फाइनल मैच का स्केड्यूल देगा थोड़ा देर में. And the one who will be coming out next will be the winner for 22 diamonds. Kyrie FK रे. Kyrie FK उसको 14 diamonds नहीं मिलेगा. बाका वाह क्या नाम है. कायरी की जगह हमको. Kenji or what the hell? Kenji, are you there with us? I guess Kenji is alive. Kenji, are you alive? 1, 2, 3. Let's see. Kenji, good luck, okay? I hope at least you win. At least you win. देखो रे, हम तो कुछ नहीं कह रहे. My hands are busy. हमको मत बोलो रे. Cancel. Weekly pass. My diamonds cancel. Okay, guys, don't go anywhere. We'll watch one more match, okay? Yoga. Kronos, you both, and of course I had a haircut, so I'm just super prepared for this game right now. But deep within, able to secure that turtle. I alone. इसको देखता है फर्स्ट मैच. And today's match is Those teams, they will just. Oh, ये फर्स्ट मैच किसका just to- किसका था?
as 9 o'clock will इसको तोड़ दीजिए कितना देर में खत्म हुआ ये And you know, after right now, team GRM as well as team 9 o'clock will be representing Arunachal Pradesh. So I am quite hyped up about seeing, like, I am quite hyped up to be seeing these matches coming up. So yep, that is pretty much it for me. ओ ये लोग वही रहा है जो Lumi, back क्वेश्चन to खेलने you. वाला उससे मेरा ने क्वेश्चन खेला था Well, that is true. The teams going up against each other today will be GRM versus 9 o'clock. And GRM will be on the blue side, whereas 9 o'clock will be on the red side. And yes, they will be representing the state Arunachal Pradesh. And looks like the draft has begun. So Kronos and Itami, please take it away as the draft has finally begun. GRM कौन सा pretty लेफ्ट साइड excited वाला to ना see this one go down, and I think this might go all the way Oh, sorry, to blue a side. third game as well, just to get the excitement rolling. First day, first game of the quarterfinals, and this seems like an exciting one. Definitely Kronos, and they have already started to pan out those heroes, and that is going to be the Suyo. Actually, I am expecting those meta heroes, those heroes which have been quite going well onto the meta, as well as it might be some respect bans coming up from this side. The Harriet is also getting banned from the side of Team G or Team 9 o'clock actually onto the red side, and yep, as long as there is not an exceptional one-trick kind of hero user from one of those teams, they will just be proceeding with those meta heroes onto the ban sections. I agree. The ban section, you gotta take out Chip right now. He lives in the ban section, right? He's someone that shouldn't necessarily be touched. And if you give that away, you're just crying about giving the opponent a lot of control in the early game and also a lot of team fight control in the late लो अच्छा game. खेला था क्या So map pressure comes with Chip, so the Chip has to be banned out here, and possibly the Khalid, maybe the Phobius as well. I see the Ling that's available, the Hayabusa can come up at any single time, given the fact that it's an assassin meta. So these are, I would say, the 4 or 5 picks that need to be banned out in the first phase, but at the same time, it could be something that these teams are cooking. Definitely, and I guess they will be proceeding with that Phobius as you just mentioned before, and yep, they are just going with those regular bans, and open onto the first pick, whichever teams get the first pick, and if the Khalid is open, then for the first pick, I guess going for the Khalid might be a good choice if he is not banned. So yeah, and as you mentioned before as well, that Chip belongs to the ban section, and Team Team GRM actually will be banning out the Chip for themselves, and they are just making sure those teleportations are not used onto the team, so they are getting rid of it for this side. And yep, I would say for the side of Team 9 o'clock, they will be proceeding with another ban. It might be the Khalid actually, considering why banning in Ban this coming in, they taking don't so want to deal long with somebody in lanes. The EXP, they be able to, side of they go for the full going, and I think fights coming up. out of a lane, and But when the they can experiment. going on to the roam instead, and yep, that I don't want to be biased, but I like Team GRM's draft more, and they have the oh Ryo with Ling parameters that CC will be quite poking. Alice can do initiations as well, and Ling will be able to jump off onto the backlines with his piece of place and all those कैसे हरा था combos. रुको And देखिएगा this ओ Ruby माय is पापी तो a बहुत खराब से really हरा था flex 9 pick, o'clock I का would say, चोको लेके हरा I था was expecting the oh first this pick is Ruby to this be guy going is to the gold lane, but apparently he is this Ruby will be XP player going on Aurora to the open so roam good yeah section. So ladies and gentlemen, we are going on Baka with the Piki, first you're match here. of this series, and ओए it बका is पिकी है between क्या Team 9 but I o'clock guess you're against late ना Team you're late GRM. ना So बका here we पिकी go जीता into ना the लास्ट land वाला of केंजी Raw. नहीं है क्या Yeah, we I do guess Kenji indeed, था last में especially given the fact that right now it's game number 1, top 8 of the state of Arunachal Pradesh, and I am Kronos, your caster, alongside me, Dami as well, and also our host who was there, Numi. Shout out to you. But right now, You it came is late 9 o'clock nah, you versus came so GRM. late. I'm Wait, liking the draft of Team GRM this is per se, just because 9 1 o'clocks are a lot and towards 2 the and end is 3 kind of questionable. But Dami, I know you want to okay you'll get and 22 see diamonds then which team gets exciting more. you'll Is get it the 22 early phase diamonds of the game, if the you were mid, or not the late one? let me see Yes, and if you ask me, then ये थर्ड में आया in था terms पर of ये the लेट्स early से जवाब दिया तो composition, ना ये लेट्स से GRM has the upper 22 hand diamonds के लिए considering their those grabs, and
he can engage well onto the team fights as well. Okay, So no problem na I guess baka Team baka GRM has the upper hand baka even baka on the duki mo to early na. as well as the mid Don't be phases of the duki game. and all. Onto the mid I'm to gonna late, send you they your have the diamonds Alice. right If she away. gets her Don't be co-writer duki plug, duki. Send light me the your clock of destiny and now follow. I deserve And all, again, then please. definitely And you she have will to let be us know making an if you touch impact your as well. diamond or But by no. far Okay. they are just going to go with the basic rotations. And this Arlott, I was expecting him to go to the EXP, but that is going to be a roam Arlott parent. You late to Yeah, get it okay. has Okay, to these guys be are the telling Rome us you Arlott, are right? late. Because what you're gonna slot in the I can't do Khalid, this. you're not gonna get the so early many guys cryo when they come and the late, EXP lane. If you put I the Arlott, ignore then the them. CC I kind of don't has a winning recharge for matchup them, over there. and they Gets the never extra bit mind of for poke mind me that's for needed. that because And rules. right now, looking at the win We go according condition, to the looks like the Nolan rules. wants to get something, but over here, Sincerely Ken gets Oh My Poppy. Not really gonna do much. But at the same time, the gold is what it's all about, right? You see the Ling rotating बस in तो the बताओ bot ना side, लेट था कि नहीं and था. Kazoo might be in trouble. Yep, and we might seeing an engage coming up really soon, but on बता to दो the एक bot बार. side they are trying to make on a pitch, but left Predator. Link is already level 4 and I hope they won't be over बता दो तो जल्दी anything लेट था fights कि here नहीं था. 'cause लेट नहीं था they मुझे don't, समझ जाएगा. like team 9 o'clock doesn't have their backup yet. They are trying to जल्दी put that बताओ. poke onto their goal. ये lead मैच that ना most बहुत of, खराब से but हरा बोला. वही they देखने will का मन just be था. forced to retreat, and I guess for both of the sides of the team they will just be focusing on to the upcoming turtle. Yeah, they have to focus on the turtle, but if you take the level lead coming in from Roku, is not there yet. When you're playing a Nolan, you need a 2-level advantage before the turtle starts to make sure your team can snowball. And given the fact that Choco to Ryu nahi laya has na? farmed really well, level 4, alongside Roku's level 4 as well, means that they're not far behind. The goal lead is ओए not मैं that बेस्ट तो करके big. देखो ना रिवाइंड The करके एक बार देख disparity लो is ना. not that big, so Actually ना definitely बक्का GRM बक्का. is in the driver's seat. It's just that 9 I'm o'clock needs to like also capitalize. out It of looks like limit. they're about to. Alone My Tokyo energy has the just position. He's level my 4 energy Raging is too Sandstorms low, available. you So is know, the final right slash now. from Oh My I Poppy. cannot type Everyone's a right level 4, and this that's might why be it. I'm not doing You're done. it. Thank Yep, you, the Tapa. turtle Recharge fight, tickets both of मिलेगा. those teams are trying to Message contest कर it, but दूंगा Nolan will तुझे be इसे able to ना. secure that turtle. तो The ये Tempest of क्या Blades coming क्या up from that lane guts now, and he might be taken off, but no, he will just be forced to retreat. No trades by far. The first blood is yet to be Tapa drawn. बेस्ट तो क्या बोल रहा है? नहीं था, लेट नहीं था. Able to secure this turtle Late for नहीं था ना, themselves, बेस्ट तो and okay they okay. kinda have the goal lead as well. यार but बहुत boring है, that बहुत much नींद आ goal रहे हैं. lead नहीं won't स्टोर गाए. make that big of a difference, बहुत but boring still, है. हमको ये मैच देखना है ना GRM एक बार. haven't got their power spikes Because yet, I'm gonna so attend, in- right? in- इसलिए हमको in the देखना upcoming है. team fights, we are हमको देखना yet to see some है. skirmish coming है, around. है. Alice with the over initiation, the flicker has been forced to be used हम out, कितना मैच and she will just be retreating. मैंने The बोला spear of कभी एक destruction मैच was वो hit किया by है that क्या? Moscow, but it connected on to nobody. सिर्फ And ये स्क्वाड का they देखते will हैं, बाकी just का be खल देखते हैं, forced okay? to retreat And then for now. if you guys are Yeah, not and this sleepy, is we what I was can play. looking for. Meanwhile, on the Ready mid to side, play Oh My Gushin for me, Poppy guys. forcing that Because my wrist Purify from Hyodo. broken First blood in and the I hands can't play of Roku. Finally getting the Assassin advantage Heroes. that they need. Zen might get caught तो out गाइस here. प्रैक्टिस Tommy. करेगा क्या? सुयो प्रैक्टिस करेगा. Yep, सुयो इतना they- ओपी है. nah, because सुयो very actually OP. Zen will just be forced to retreat. He was able to retreat. Late नहीं था. Okay, I'll listen to my best of. Team GRM I'll listen are to my trying best make of that Predator. pressure. You Khalid are is noob. trying to get some vision out there, but you will just be around farming, and he will क्या just be करे? able वो to get recharge his website भी objectives. नाम That भूल is गया the हम. blue as well as the orange. क्या था? पप्पू मुँह लिख orange के box, रखा and, रे. you know, I guess they will just be trying to focus You on the getting, individual objectives, and you want the I second hope one both ना? of these teams will not First initiate one any कौन था? team Kenji fight. था ना? Ruby might be taken down, but the IAM offended connecting on to nobody. Arlott is really deep, and the Netherrealm being used by 22 that diamonds, Paramis. right? There's a blaze coming up from that. Kyrie Really मिला good था? follow-up. Aurora 14. will be able to Okay. get that kill onto You that link, are but CC gonna with the follow-up as well, getting You that kill are onto that going Arlott to just get now. The turtle will be spawning, 22 and that diamonds. is going to be a फिर से 1-for-1 ID trade. server दे दो ना एक बार किधर है? I'm For not a getting your 1-for-1 ID trade, that was server. quite a skirmish indeed. Because at the end of the day, Oh My Poppy is the one that wants to sacrifice himself. Meanwhile, Roku here on towards Hee. This Alice has scaled quite well using the I'll play blood mage to for get you. out of harm's Okay, way. ठीक है, The I'll play turtle is Hyper up. then. The level disparity from यार, Roku वो तीनों and क्या Ryu क्वेश्चन is नहीं not खेला that रे? far behind, although the goal So you is still stress? less than 1K. नहीं, so you बहुत अच्छा खेला. This हम could बहुत be the perfect moment था. that ये तो Ryu is हमने looking बहुत for. अच्छा Oh खेला. my God! इसलिए I'm going to Three practice man IAM सुयो offended just सुयो came up, but कैसे still बुलाते हैं Nolan मालूम नहीं. keeps
soyo 9 botano o'clock was suyu able to botano get that out of the final snatch suka coming suka up from suka that hero. our lord, but no trades by power. You know, Kronos Baka just mentioned Baka, it, even though your so many ID is skirmishes 32 going around, both of the teams are 76 playing it so in such a 90 disciplined way that 90 no kills, like no 324 trades by far 324. has been
9-1 given up from both of the sides. 9-1 teams, 2-9 and the discipline plays. We are seeing some. वो तेंजिंग को ना पूछ सर मैं the तेंजिंग को connecting हमको वो from बना रहा that था Aurora CC was ganked up. Like that was a 3-for-1. 3 people onto one CC, and CC will be taken down, and they will be able to get that at 301 top tower as well. Yeah, I think this will be a जोई problem ओके on the other जोई side. खेल Look के at that देखते spear हैं हम जोई नहीं destruction सकते हैं वैसे connecting onto हम तो Artihi, प्रैक्टिस करेगा making रे sure चलो that आपको Kazum 22 comes डायमंड्स in, मिलने वाला है gets हाँ the double lane clear as well. So 22 getting that diamonds goal lead मिलेगा that's much ओके needed. My Papi might be in trouble. And right now it all comes down to how they will initiate, and they're waiting for the initiation from the side of प्लीज Team एक बार 9 बता दो o'clock. मिला कि नहीं Given the मिला fact that they have the Khalid and they have the Arlot. So आज my हम एक Papi will एपिक be the one स्किन in the की वावे driver's खेले seat this रेडी time around, रखेगा but sincerely एक can. आदमी को आज दुनिया एपिक स्किन Oh, स्किन अच्छा लगता है final हमको तो slash आजकल एपिक connecting. स्किन The का I am वैल्यू offended also came up as well, but the डायरेक्ट Faramis was able to save off that Let me Ruby the with skin that के लिए other तो select Ling करना will be पड़ेगा, able to कोई secure skin that ढूंढना kill onto पड़ेगा। that Aurora. A double kill coming up from Ryu, and that is going to be a 3-for-1 trade for the side of Team GRM. A really Thank you, good team fight came everyone. up from Okay, him. okay. A really good follow-ups, but Faramis will be taken down onto the point when Netherlands was used onto the for the team fight, and he will be immediately यार punished. कितना Even अच्छे से though खेला रे his spawn timer is not that much, he will be taken down onto this team fight. Yeah, it has to be so. And look at that. Ryu on the other side wants to get the split. He's not died yet a single time. 2-0 level 9 you compared to like Roku's Cuban level rotating. 11. This is the level disparity that the Nolan's looking for. And now he's going to start snowballing. Although क्यों it's like come a little bit बनाते late, हैं it's ऐसे तो not रखना late है enough. It is still around हमको the तो early to नजर mid भी नहीं game करी phase. Less than 7 हमसे minutes ज्यादा into the अमीर game. है This हला could मत be करो something आप that's बहुत going अमीर है to I'm gonna break down. डेड हमको लाइन Idame, मारने के लिए मैसेज Papi करके wants some रखा है blood. बोलते हैं Yep, we might see some trades coming up. Khalid Okay, is trying to your make day some pokes starts onto with that link. He will just be getting forced to 22 retreat, diamonds and from the 30 Grumpy has Baby. already been Grumpy spawned, but Baby. Nolan is able to See, get that just kill sent you onto that 22 Paravis just diamonds. now. He was not even able to pop up that nether limb. I guess he did had that cooldown onto his ultimate, so बोलता है he was living not living even able to use it. And Team 9 o'clock playing in such a disciplined way, you know, onto this first game. I expected, looking at the drafts, I expected that Team 9 o'clock might be having a hard time, but we are seeing the opposite, kind of an opposite case, and I'm connecting onto 2 people, connecting with the flicker combo, followed by the frigid glacier from that Aurora. CC is able to get that kill, but that is going to be a double kill for the side of Nolan. 2-for-1 trade by far, and they will just be retreating. And Kronos, I was like mentioning the draft before, but the team fight is not yet over, and monster kill coming up from Nolan onto that CC. Once again, the templates of blades being used from that link. He will just be forced to retreat. The final slash, as well as that dive from that Khalid, was able to get that skill onto that CC. Man, oh man, the goal difference as well as those items, living up I guess, onto the living item बोलो ना spikes तो as well. Team 9 o'clock are quite the leading team, and they are showing their dominance onto this game. Yeah, they're definitely dominating the game slowly but surely. And look at he wants to go. He has the item power spikes that he needs. Roku gets Hey, the Jise, Malefic we Roar. love you, So Grumpy. level Thank you, 13 to Jise. the level 11. Ryu's not that far behind. The 2 level What was the disparity first still prize, maintained. guys? 50 But diamonds, of course, 51 right now the diamonds. goal lead coming Yesterday in. we why you came so late? And Yesterday that's the power we of the were Nolan. doing That speed and the quick farm that weekly they pass. get going Tomorrow on. again, With let's that, try. Nolan Let's will try be to the do it problem. again. And right now, I'm final not sure match who में will be वो the करता target है because Kyoto's been taking off final 1, 4, match 3, में and will oh my again come back Papi. with weekly pass. Oh, Okay, they smell final some match trouble. final match of Arunachal Pradesh. Oh my god, Nolan Weekly with pass another X3 initiation, करते हैं trying to make another initiation, ना, but 3 CC was weekly forced pass. to retreat. Take Even time. though, you know, the If I'm offended audiences as well vote as for the flicker combos is being connected from the Ruby. I guess it is a gold weekly gap pass, that then is we'll go gold gap straight as with well weekly as pass. those item gaps ये लोग that कैसे is खेला not था क्या? favoring for the side of Team GRM. They are not able to capitalize. ले लो The final slash is आलू ले लो connecting on as Baka soon Baka, as where are the you team from? 9 o'clock are initiating the team fights, they are able to pick off those kills, and Nolan is able to snowball quite a bit considering he has more of a he is How to get already in like cheap price? 2 levels Buy it from me. levels I'll get it ahead free compared from to me. that link. Yeah, that 2 levels ahead, that's what the win condition for Nolan is. Time and again, I've been repeating that because it is Thank what you, it is at Decisive. this Thank point you, in time. Bishi. And Thanks look at there. that, they have that Nagaman Lord Bishi, as well thanks marching there. down the top side. It's coming quite quick, so they don't have the time Hello, IP to Cloud. actually regroup and discipline themselves to get that push that's very much needed. क्या But है right now, ये? clearing the top side mean the Lord will come in from the top side, cleared the tier 2s. They possibly looking at getting one from the bot lane as well. And if कौन है? possible, if Alone in Tokyo makes it on time, it could
to be all three. But this is the team fight that they're looking for. Roku goes for the fracture as well and gets out. But Sincerely Ken has the I'm Offended waiting, and Hyodo has the Nether Realm. So it's all a matter of time. Will Alone in Tokyo provide the Raging Sandstorm, or will Oh My Poppy go for the flick or final slash play? Yep, and I guess Team GRM will be able to defend this defend the Lord at least for now. But the Team 9 o'clock are playing it quite in a disciplined way as well. They are, and Team GRM will only have the inhibitor towers standing for themselves for now. And I guess they shouldn't be even though Team 9 o'clock are leading with over 7k goal lead, around 7k goal lead right now. But still, if they overextend the team fights, then Team GRM can make a comeback. So they need to make sure they just focus on to the neutral objectives, that is getting the Lord and trying to sink those lanes and try to end the you are game set as for soon as who? possible. Tapa also one guy, Yeah, one I think weekly it all pass comes and down to wrong how server. they'll be able to end the game. It's a discipline that they need towards the end. And it all comes down to the split push possibility from the side of Team GRM. With Rio on that lane, with the Alice, they will be able to do so, but I think there's going to be an initiation coming in the dump. Yep, Khalid is trying to, maybe he is trying to initiate with his Raging Sandstorm, but he will not be able to do so yet. He is just waiting for his viewers are 10 years old or below. Like over-initiating a team fight might 20 से तो below इतना तो I'm sure. some trades as हम well, एनालिटिक्स and में that कभी-कभी Alice नहीं Alice will just be trying 25 to अराउंड तक का होता है मेरा push and viewers try to उस get आपको those दिखाई towers, देता है because in terms of the objectives, Team GRM 20 hasn't से तो even below got नहीं a होते single ना। tower for एक themselves. That's YouTube the पे final वाला slash नहीं coming दिखाते, up from 10 that years से Arnold. below वाला Alice with the follow-up, followed by the बोला Frigid Snoop Glacier. CC was able to secure that kill onto that Arnold this time. And a godlike coming Hello, up YouTube from Pepe. that Nolan, securing কি that kill কৰিছে? onto that CC. কি The কৰিছে Triple Blaze আপুনি? coming up, and Thank you this there time for Nolan that day. already been Kila, finally hi, been hi, fallen off. खुइसे Team है, GRM are खुइसे trying to make a है, comeback. Alice मैं with a साइड तो really good initiation. just The saw I'm Offended it. connecting on to nobody, but still they are I can able to see get that it. trade, and that is Size से मैं almost a see complete it ना। wipeout. Team GRM have finally pulled this off, and that is going to be a 4-for-1 trade for themselves. But meanwhile, Moscow is also on a bad position. I'm watching that all He matches. shouldn't be trying Yeah, to I'm dive still in, because the I'm Ruby watching can the other still pull matches, him the off previous with the matches. I am offended. I didn't stream now. I mean, that's what it's all about, right? The better draft, because the side of Team GRM Please do definitely respond, had that, and I in know the you are form of very a dive busy with your composition exams, as but well, try to respond and me topping it about up with the that Nether video. Realm, and that's what it was all about. Just a starting matter for of time. That's presentation, what they okay, needed. They good just luck. need to buy time, Bal- and time Balde, was Bal- not what the Balde side of presentation Team prepare 9 o'clock kuri bhi. had, because I guess what? It was already 9 o'clock for them to top, and a little too late, but they didn't notice that they needed that snowball from Nolan a little early, not at the 7th minute mark, which I mentioned a while ago. They needed that coming in around the 2 or maybe the 4th minute mark, and that would have been the difference maker. Look at Alone in Tokyo being zoned away, and that's a Khalid, your EXP laner, should be taking the brunt of the damage, should be the sandbag as well. Not able to do so means that they're definitely in the backseat, and now the tides have shifted. Even though the goal lead is in the hands of Team GRM, I mean, sorry, 9 o'clock, GRM are firmly in control, in the driver's seat, and they will be looking to initiate in the form of He with this Alice going to the back line, unless Oh My Poppy gets his flicker up, which he हम एक doesn't दिन खेल have. रहे थे देखो आप उसमें हमको इतना मतलब हम अभी भी noob है Our Lord, just पर now, and उस दिन Khalid जो was क्या हुआ able to हम secure जो that kill onto that Aurora. हम रेंज पुश कर रहा था ओ शायद लास्ट सीजन तक नहीं लास्ट सीजन तो नहीं था लास्ट ईयर था ना ये साल का बिगनिंग में था हाँ हम जो मतलब ऑलमोस्ट ग्लोरी पुश हो गया था ग्लोरी पुश होके हम दुओ खेल रहा था मेरा एक दोस्त के साथ में क्योंकि हमको ग्लोरी पहुंचा के उसमें हम इमोर्टल ट्राई कर रहा था तो ग्लोरी पुश गया था ग्लोरी पुश के ग्लोरी पुशने के बाद हम क्या किया काजुम को मिला ग्लोरी था वो लोग ग्लोरी में थे तो ग्लोरी वो लोग ट्रियो आया है उसमें रीने मोर काजुम को देखा है और वो लोग का नाम थोड़ा अजीब सा लोकल लोकल जैसा एक तो वाला का नाम भूल गया ट्रियो था हालो हार्डली वाला था ना काजुम जो चो खेला है वो साइड लेन और उसमें चो बहुत अच्छा था ना अभी तो थोड़ा चेंज कर दिया तो ये नया वाला अपडेट से अभी ठीक करने के लिए उसका रेंज छोटा हो गया क्या ऐसे कुछ वो जो already started to get the powers by the Frigid Glacier coming up from that Aurora. अल्टी किया खत्म किया उसका बाद डायरेक्ट वो मार्क करके हटा दिया सबसे हाई स्कोर वाला को कौन था हाइपर को और एमिन को डायरेक्ट मार्क किया तो हम लोग के लिए गेम बहुत इजी हो गया ऐसा कि हम मिड खेल रहा था क्या उसका राम जीत गया बहुत मेरे को जीतने वाला गेम नहीं था काजुम के लिए तब हम उसको पूरा प्यार हो गया ना उसका शो को देख के तब थोड़ा इंस्पायर हुआ अच्छा खेलता है उसका रिनियम लोग को To be honest, right now, because that winner crown would have been the play that they had to make, and Ryu not actually going. Look at it, they just got the winner crown, so I think that's the reason they did go in for the initiation from the side of Team GRM.
निकल गया था And it all comes लास्ट down to तक the नहीं बना fact सके that they 9 also o'clock का have वही ना Ling मेंबर अच्छा है Ryu, पर ये who लोग has उल्टा not पुल्टा died है a अच्छे single से time, has प्रॉपर been नहीं खेलता है farming कैसा pretty इसलिए ऐसा well हो जाता up है until this point. And Kazum Kazum, लेकिन nothing in once front again, of him has not died that late game पता नहीं insurance हमको policy हम that बिल्लो they लोग को सब नहीं save for खेला है इसलिए themselves इतना after वो the हमसे Pokemon इंप्रेस भी Mart. नहीं है क्या The I am offended not connecting on. जिसका साथ खेलते हैं उसको ही प्रो लगते हैं ना लड़की लोग के लिए तो ऐसा होता है जो दुनिया में जितना भी प्रो हो जाए जितना भी लड़का हैंडसम हो जितना भी रिच हो अपना पार्टनर को ही सबसे ज्यादा प्यार होता है और उसी को हैंडसम लगता है उसी को सबसे ज्यादा रिच लगता है और उसी का पैसा को लेने के लिए इंटरेस्ट होता है वो गरीब होने से भी पैसा खोखला होने से भी Try to not get picked out before the Lord fight comes up, because if even if one or two members have fallen down, then this is going to be a really tough defense, a really good जैसे कि really tough Lord defense for them. The spear of destruction just came up from that Moscow, connecting on to nobody once again, and विलो बहुत team प्रो था मालूम 9 o'clock should be हमको मालूम trying to नहीं है sink those lanes in order to win, हमको and विलो के बारे में they इतना should be मालूम नहीं able है to pick it off. Meanwhile, Alice is trying to make that poke. So back to you, Kronos. अच्छा है पर ना Yeah, विलो I तो mean, बहुत they are फेमस भी trying to है get that Pokemon, I but mean, Alone still in Tokyo here is now. the one that's going to Yes, lead the charge. And look at Oh My I still Poppy. remember him जैसे आपको विलो को बहुत प्रो Moskov लगा is ना able हमको to खजूम get को that लगा kill तो onto that खजूम का Alice. That was गेम quite ऐसा an होता है overextension, उसका like I was खजूम को mentioning सब before. से तरह The के सब shutdown हारेगा coming ही up नहीं on that link finally. हमेशा That is going to और be a रिनम 3 तो for 0 है trade, एकदम and all that सिंपल remains is the इसको CC देखते and the हैं pyramids for themselves. The डायरेक्ट vengeance लाइन has मारेगा been जैसा popped out लिंक for खेलता है that पर उसका CC. साथ She will गर्लफ्रेंड not be हमको able पता to है do much, and the mega kill coming वो up from बताया the था Moskov. The base is टॉस wide बन गया open, बाद में and team 9 o'clock will be leading the series with 1-0. Yeah, Team 9 o'clock definitely, turning the tides. They had the early game that they needed, and but it didn't work out for them in the form of this Nolan. That they went all gun that spike in around the 6-7 minute mark, and then later on the mid game phase in the hands of Hyodo. It's just at 9 o'clock. The mid game phase just needed, and but it didn't work out for them in the form of this Nolan. 9 o'clock मर दिया तो इतना सुंदर से मारे Even though 9 lot o'clock of match जीता है in तो store for अब you. हारा है The बोल first रहा one था right now, the best of 3. नहीं वो लोग हारने से तो लास्ट में तो खेलना ही नहीं था ना वो लोग सेमी तक तो गया तो 9 o'clock लोग वही सेकंड मैच में जीता है ना कैसे they जीता है are वही just देखेगा और क्या prioritizing those heroes. Edith being taken off for the EXP side to make sure Alone in Tokyo has a better lane, and they got the Matilda in the Revitalize as well, but और इसमें क्या previously क्या we पिक saw हुआ the इसमें देखो Ardo ना onto the नेतन room, so वाह नेतन आज बहुत I देखने guess मिल all रहा we है आज gotta का do अरुणाचल में is बहुत wait नेतन खेलते for हैं what they are going to be deciding. But this is going to be match number 1, game number 2 between Team 9 o'clock and Team GRM. Currently, Team 9 o'clock are leading the series with 1-0, and if Team 9 o'clock are able to secure this victory, then they will be winning the series, and Team GRM will be saying their goodbyes. But still, it is मार not के yet गए over for the फर्स्ट side of Team GRM. If they are able to बस say तो secure नहीं this चाहिए victory क्या for नुमी को themselves, then this will be हम forced out to the game number नंबर 3. दे देगा So आपको here we go on to the land मजा of क्या dawn. ना क्यों I देगा mean, होने से भी indeed नहीं we देगा are, तेरा Itami, जैसे because लड़का right को now, नुमी ladies जैसा and gentlemen, सुंदर this is the लड़की नहीं first मिलेगा game of the day. Of course, match number 2, indeed. नुमी तुमको We लाइन मारने से have भी हम बोलेगा 9 ये o'clock लड़का on the blue कैसा है side and रियलिटी GRM में on तुमको the बिल्कुल red. वैसे लड़की They on डिजर्व 9 भी नहीं o'clock already करते picked up a victory in the कौन previous सा game. डिजर्व करते So now it's a हम best of मालूम 3 है that ना they have a match point नहीं towards. बोलेगा Will they छोड़ो actually be able to take टेंशन हो it जाएगा 2 ये to लड़का 0, or will Team GRM Damn, make that geez, comeback I that we're really looking oh, for? Baka And Baka, of yeah, course, I these can two see you. teams We are all can representing see the you. state of Arunachal Oh, Pradesh, guys, and चलो those थोड़ा who are सा in the गेम को chat, I लेके know you want to see your focus teams come out, but definitely you want to see the best team get out of the state, because right now, look at that, they're going for the priority in that Lethal Wanderer as well. The taunt देखिए coming in, मतलब but Kyoto, three-match oh my है goodness, क्या? ये taken match so ये लोग low जीता so था क्या? quickly, and that's the power of the Vexana. Shia providing the damage control and the mid lane control we were talking about in the draft earlier, Itami. And look at Kazum right now, did not get that gold crab as well, so definitely, oh my Poppy, Alone in Tokyo and Shia actually getting a Lethal Wanderer while the mid lane control is there as well. So 9 o'clock definitely in the driver's seat for this one, while Team GRM need to start finding answers. Definitely, and
in terms of the draft, both of the teams are quite equal. But in terms of, I guess it matters. Like the execution matters more coming up from the side of both of the teams. But by far, we are seeing that Team GRM are quite locked in. They Grumpy या have थापा ही done a होगा मेरा really good job in terms of the draft as क्या well. वो गुरुंग So या all they थापा gotta ही do होगा is make some वो good 5-2 का executions मीनिंग क्या and होता होगा like try to take those neutral objectives for themselves in order to be वो securing तो this ओ victory. तुम्हारा And गर्लफ्रेंड जो 5-2 Oh होगा my वो goodness, Force सारा out, गलत oh हो my गया ना god. Itami, हमको that लगा would था look आपका and जैसे scary, टॉल wasn't it? करता Oh my होगा poppy would have been screaming after that one. But 5-2 guess तो what? The तुम्हारा guiding wind वाइट helps बोल them तो to कर get दो into तुमको the 5-2 turtle pit पसंद है as क्या well. They have 4 there. थापा को Meanwhile, on the 5-2 bot लड़की side, they have पसंद only है but 3. sorry Avatar of the Guardian I'm not yet not unlocked by the 5-2 और तुम्हारे को Gatukacha. पसंद So करके that's देखो going to be a आंख बोल problem. दी He's है trying to get that early clear in the mid lane to get that ये level ना 4 थापा power को spike ना he मेरा so हिंदी very समझ badly में नहीं आता है needs. पता है But look at that. अभी Team जैसे जैसे GRM समझ do में आता not है have the 3-4 level 4 महीना power हम थोड़ा spike अच्छे that से they पढ़ need गए on ना their side as well. So वहाँ this पे could हिंदी be समझाने से anyone's क्या game. As क्या long as करते हैं my ऐसे poppy's able to hit that ना level 4, it could be a game changer. The turtle has been started, बस तो soul हम वो severed by दिल्ली वाला Roku as well, इंसिडेंट हम आज and Alone वर्निंग in को Tokyo बताया being था zoned away by Zen. Meanwhile, on the backline, the वर्निंग Terrified वो बोल comes रहा in, था and look at that Eternal Guardian being used. There's the Avatar of the Guardian 4-11 completely कौन misses. है Bridging Glacier 4-11 comes out as well. First blood in the hands of कौन है Zia, हम तो and right now 4-11 has नहीं है forced रे to flicker हम off, तो but Soul 6 है Sever doing the ऑल है damage, but देखने में the गुड Alone in बहुत ऑल है Tokyo is हम the one leading the charge. Oh my आपने Poppy इतना gets the हाई वाला kill. That is सुपरने से 2 भी ना kills ब्लॉक for सुपरने the से भी trade हमको of नहीं none, पता while they also get the मेरा turtle. एक्स And meanwhile, a lot of flickers being spent, but Kazum बाप का still has एक्स जो firm इतना control of एक the goal नॉर्मल lane था as क्या well. हमसे भी So लंबी था बोला everything 6 going से भी right for the अबा favor of Team 9 o'clock, Itami. And seems like Team वाओ GRM मुंह तेरा once करके again बोलेगा behind the wheel. वाओ Yup, and you know that turtle fight, even though Jungler was not able to secure it for their side, the Vexana, the mid laner, Did was someone able ban me? to No, no, baka secure baka, we that can see you. turtle for Oh, themselves bro, for the we side can of see Team you, 9 bro. o'clock. बोलेगा And ना not आपको. only they did We can see secure you, that mister. turtle, they were able to get 2 kills अरे as बाका well बाका को कोई onto attention दे there, दो ना and they बेचारे are देखो तो quite ऐसे leading करते हैं in आप terms लोग of the बाका goal बाका lead we can as see well. you At hey least baka over baka 1k, we all and I here guess on we terms can of see the you okay objectives too, one if member they still are free able from to grumpy keep up this side momentum, I then don't know how to definitely make they it will be free leading this game as well. like I've never Yeah, taken look at membership that. in They're any trying to channel catch him off guard. They go. but Roku super chill goes I in with did the. once Oh in my my goodness, that was the blade surge coming out on as his well, forcing birthday. Ryu to use the Spear My of Alpha ex-crush to birthday, get I out did. of there. Happy And meanwhile, on the birthday, bot crush. side, this is just a matchup that we're gonna see for days. Zen is just gonna अच्छा have a lot of 4.6 ना fun सॉरी with ज्यादा this लंबा Belleric. बना But on the दिया top कौन side, once हम again, जो blade surge comes out हम from 6 Roku. It goes to the 4.6 Sever को as opposite well. है He 6.4 uses the है entropy. almost Meanwhile, nearly Kazum still has 6.4 firm control, and that's what the Papa Bruno says provides. But oh Sundar my Di- goodness, the blade Sundar surge Di with the will AOG kill being you. used in the back line, but Papa? the damage क्या is बोला, not क्या there. बोला? Eternal Papa? Guardian comes up to knock them Oh, and create the just thank you separation, for but then in the your back line, Wrath of the Dryad stopping them from membership going gifting. back. Ah! While Kazum मेरा is the only भाई one left was standing, membership Zia will go down as well, मेरा and he भाई does. was Alone in भाई Tokyo, a बोलते little too मेरा late to the friend party, आया didn't get the membership मिल memo. गया। He didn't get the Wow, invitation. I don't think he कितना paid the lucky है, वो entry बेचारा fee अभी for तो that पढ़ाई कर fight. रहा होगा कोई ग्रुप में दे दो तो स्टोइक को स्टोइक so lucky you got Maybe not free actually. membership The turtle is about to spawn, Wow. so you know, as like in short we were attention thinking that seeker Team बोल 9 दिया o'clock has खराब the more advantage, लगा but इससे onto this team नहीं नहीं fight, Team attention seeker नहीं GRM बोला were हम able बस to गलत हो रहा captivate ध्यान quite दो a bit, ध्यान and दो the means turtle has attention दो already नहीं been होता है spawned, ध्यान दो and I means थोड़ा guess प्यार team दो looking प्यार at दो the का मीनिंग को positionings समझ right में नहीं now, आता है Team तो हिंदी 9 वाला आदमी o'clock नहीं has the आता better क्या position to समझता be है contesting as well as that securing that turtle, but Dew will be joining that team fight anytime soon after he gets his purple buff, and they are already trying to start that turtle, but it will just get resetted. They are just making sure they don't overextend the upcoming team fight coming up. Yeah, and I think look at that Wrath of the Dryad Stoic coming out, but बेचारा the blade पढ़ाई surge कर was रहा used at the होगा right ना time. ठीक है ना AOG catches nobody. खाली Bridging Stoic को Glacier surprise comes out with the देगा Spear of हमें Alpha on the wrong side, but Membership there it plus is. The कुछ देगा Eternal मुझे Guardian picks up the kill for ये Shia. mention Meanwhile, लंबी the ना turtle is still up for grabs. Roku रुको wants to get पूरा it. लिखता Retribution हूँ is there. They use the blade sever to क्या pick it up as लिखने के well. लिए तुम Ryu मेरा क्या has to get out of बोलना harm's चाहते way. हो Blurred Surge और comes मत in,
And look at that, alone in Tokyo will get that kill. Kyoto's the only one left standing. Once again, this team fight, these advantage back in the hands of Team 9 o'clock. GRM got the control on the top side, but 9 o'clock back in the driver's seat. Want to steer this team fight, want to steer this game in their favor, realizing that Roku has to get that early game power spike. Abhi Delhi no dur from Yep, Arunachal. and they were able मेरा to secure this मजाक कर रहा है, turtle Delhi as is well my for own themselves. place. They were able to get मजाक those मत trees करो. as well. Nathan will be forced to use his ultimate on it. But my goodness, look at Kazum. He has to back off. He's still able to survive as long as Kazum is left standing. The hopes of 9 o'clock will मेरा not एक आपसे die लंबी और because he has सुंदर है. that early game तुम्हारा power एक spike. I don't know which skin हमसे that is. I लंबी hope हो it's that ही नहीं Neymar skin. I सकता love that a है. lot. तुम्हारा एक हमसे लंबी That is हो the ही नहीं epic सकता. version तुम of खुद the हमसे Neymar इतना skin छोटा actually, है and उड़ के.
That is like, that was not Chotu? even quite expensive, but the effects are Chotu? quite worth it. But meanwhile, looking back बस onto तो the पूरा game, बहुत पतला हो गया पता Team है 9 पहले o'clock से has the better हेल्दी positions. था They have more objectives as well. ओए They कहाँ got चला a गया goal डेड lead too, लिविंग and वेयर आर as यू long as बात Kazim करो ना doesn't get taken out, से Team गोरा 9 भी o'clock ओए हम बहुत will be सफेद able है to हमको captivate more गोरा onto तो this match. गोरा मीन सफेद Matilda ना was trying to फेयर ना make फेयर an स्किन मेरा initiations तो on स्किन there, बहुत but फेयर she है was not able अब to do देखा so. नहीं We है might हम बहुत be फेयर seeing स्किन है another big team fight coming वासिंग up onto पाउडर the bot निर्मा lane. अय्या Yeah, the वासिंग bot पाउडर निर्मा side जैसे तो actually वाइडी being है defended, but they turn their attention on towards mid. Roku like Only get caught. high He goes four. for circling eagle. Sincerely he can, but Roku is able to survive thanks to the immune that he gets in. But look at that Hyodo. They might get caught. They realize that, get out of harm's way. And seems like once again that EXP side is just gonna be having some fun alone in Tokyo, and Zen just gonna be banging heads and not really doing much to each other. But you know what? This time Kazum, हम लोग तो 5 yeah, I was gonna say if that's the epic skin, that's the Neymar version kind of it. I think I want one, but for those of you who really want that epic skin, don't forget we have giveaways going on as well. Just make sure to ask the moderators in the chat. You figure it out. But meanwhile, the Terrify in the mid lane, Ryu gets caught. But the turtle's up once again for grabs. Roku gets it started level 11 to Ryu's level 8 Itami. And they definitely have the control. 9 o'clock, got that early snowball. Going alone in Tokyo, does have the final slash. Doesn't want to use it, that's the wrong target. Retribution to get that 5,000 gold lead. Team 9 o'clock really look at their watch and seems like it's time to go down and crack open that mid lane. Definitely, and you know, even onto the previous game, like the jungler for the side of Team 9 was able to snowball Ryu actually because of the level gap. हमको He was देखने भी नहीं दे रहे like 2 सब levels मुझे ये थप्पा जो ना ahead compared to Ryu, but this time it is like almost 3 levels, so they have the better Hello, advantage as Kazumi. well. And they got the goal Hello, lead too. my Here comes modeling another baby. team fight back to you. Oh my goodness, the Wrath of the Dryades was used, but look at that circling eagle in the back line, used correctly. At the same time, Avatar of the Guardian misses everyone. Ryu goes on the Spear of Alpha, leaving Sincerely Ken all alone, stranded in the middle of 5. Gets taken down this Matilda. So 9 o'clock once again just showing utter dominance, while the side of Team GRM are finding answers, and the only answer they have right now is this Nathan. That late game Nathan is what they need to scale for, as now the mid lane is being left open. Entropy to get out of harm's way as well. The mid lane is cracked open so they can invade into the jungle, but oh my goodness, a little too much that he can chew. Oh my, Poppy gets taken down, but on the other side Ryu trying to capitalize as well. He doesn't recall, so I think he wants to fight Roku, as Zen just goes in trying to taunt alone in Tokyo, and now once again Team GRM trying to make a stand, and I think they want to crack the mid lane open themselves. Hi iCloud, you are still here. Guys, let us I guess know team if you are still 9 present o'clock, with there us. comes another team fight as We well. can start any My topic. goodness, at the same While time I'm Eternal watching Guardian being the used up. Roku went for the Blade Surge but doesn't do a lot of first damage. match. He has the Soul Sever to clear the छपरी lane. तो उपाय But नहीं at होता this time होगा around, they're घंटी का trying to छपरी find. I means think Itami, it all comes down to the छपरी late तो game Nathan for the side of Team छपरी तो GRM, बहुत doesn't it? He नहीं मेरे has से to चैनल scale, हम पर he इतना has to पतला है provide the मेरे damage, वीडियो में but देखो ना Sia has been playing out of चैनल his का वीडियो में जाके absolute देखो ना एक mind, तो वो getting एडवर्टाइज those वाला नकली terrifies वाला and the एक तो control in these बनाया team हम fights. छड़वी The नहीं है Eternal मैं छड़वी Guardian नहीं है देखो knockup has been absolutely impeccable. हेल्दी है हम जो हेल्दी है और जब Yes, साफ वाला definitely. है And ऐसा you नहीं है know, छड़वी नहीं है for हमको the side छड़वी of Team हम GRM, छड़वी that कभी होगा Nathan ही has नहीं not मेरा picked बटन off में even a single time onto this game. So if he is They able look to like get his a power goddess. spikes as well as those 4 items, then Is- definitely he will be able to deal some Oh, decent, not goddess even like decent, some that. ridiculous amount of वो damage लुनक से for और the आप side of अलमन Team तना GRM. ला They इसलिए will तो छोड़ा है Speaking of damage, they want to go on Linux towards तो जाएगा ना Kazum. vision के He has साथ। the volley shot. He spiked up to 10 stacks as Soul well. Oh my Skin puppy करो। has Soul the Avatar of the Revelation Guardian. The and Lord is about Soul 3/4 of the Don't HP like down. क्या था रे? Zen being terrified. He's the one has to go to the back line, provide the Wrath of the But I Dryad. like The Lord Chervini. has been हम reset Chervini alone है, in Chervini Tokyo. को Is here करना leading the Chervini charge. is He has fat. the I'm not flicker as fat. well. He goes Guys, I'm for not it, but fat. doesn't get I'm the right healthy. target. And right now, there's the I'm Terrify. Wrath of the healthy, but I Dryad to the can back reduce line. my fat. They पहले get बहुत alone in होता था, Tokyo. अभी Oh तो my सुंदर puppy, the होता next है। one to fall. But the wave of the If you world like to do providing the gossip damage. trash, He I like goes it. straight in the arms worth it, but then gets taken down. But at the same I'm time, Sabine you Naya. get the Lord in the hands of Roku. Ryu is still Take left this. standing. It's 4 for 2 right I'm now. not Sabine, And they're okay? all left. So they want to fight a little I'm not bit more. Sabine. They're extending these team Oh. fights. I'm Shia gets taken Sabine. down. He leading the charge with the entropy. Kyoto covering the backside. Roku has nowhere to go. But he did get the Lord. But look at Kazum. He didn't want none of those team fights. He wanted to take advantage of the lanes and actually just dipped out of the party to make sure he gets onto another one.
ये क्या नाम है is क्राई just का making ही sure ही he ही is क्या नाम है gonna ही get those ही towers. They I'm will checking be up able on to my do so dream actually, girl. but Team GRM did pull Okay, up okay, quite हम a लोग तो team dream fight girl in नहीं there. है. They were able to get some Can trades you for do one themselves. thing? We did see this onto the previous First you game do as one well. thing for Onto me the and then pages of ask the me in game, Team exchange. GRM were able to capture First it, you but do it. unfortunately they were not able to secure that आर्लोड victory को for आजकल क्या हो themselves. गया, But इतना this पिक time नहीं हो this रहा है. that आर्लोड might को not इतना be the दिखाई नहीं case दे रहा है. considering अभी they haven't got खालिद much का जैसा much नहीं हो रहा है. pick off आर्लोड बीच में considering जब the first game, but न्यू आने still का बाद we कुछ वन are मंथ yet to सीजन में see जब some आया था actions coming, more उसका actions बाद coming up from the side इतना of Team मतलब GRM. वन मंथ And ऐसे I तक तो think बहुत पिक हो we रहा था all इसका. gotta उसका need बाद is a चेंज हो good गया, शायद नर्फ initiation कर दिया coming था up from होगा. the side in पर order to आर्लोड make it खेलना work. नहीं आते हमको. Oh my god, look at that initiation. They Smiling go but in with the blood crying surge inside. as I know, well. I And look know. at that, the damage is being done. I know, I Prediglation know. to get them back. Ryu went for the Spear of Alpha, but alone in Tokyo Izuma. falls down. But the Actually, AOD Izuma from is my the Poppy girlfriend making name. him scream right now. Maybe in Papa, Spanish Papa. even, but at the Papa, same Papa. time, look at the damage that's being done. He went in with the entropy, but they all backed off, realizing alone in Tokyo is not there to provide the Guys, disruption talk that to they me, need talk to and me, go talk back to to me. controlling the map. This is brilliant macro play coming in from the side of 9 o'clock, and this आज is what हमको we इतना want to see माथा in the दर्द हुआ है. quarterfinals, क्या ladies पता है, and इसको gentlemen. लगाया है. We are और in नीचे the को माथा में quarterfinals लगा दिया. indeed for the state of Arunachal Relief हुआ है Pradesh. तो. This is only match number 1. Game number 2 it अपनी is. दिल को माथा But में seems लगा like दिया 9 बस o'clock आज might के. actually be able to take the game because the goal lead is 3,000 in their favor. And Itami, oh my goodness, they have woken me up. Yep, and I guess Team 9 o'clock, even though they have the goal lead advantage, but in terms of the team fight, Team GRM are quite pulling this off. They are able to make those executions. They are not making those mistakes. Actually, they did onto the previous game. Initiation mind come up really soon. 9 o'clock लोग And, अच्छा ही I खेल दिया तो guess ना, इतना सुंदर से खेले. for all they gotta do is try to not overextend any team fight. Gatot Kacha was trying to गेम make some देखेगा plays बोलकर on बात the करो back, बोलते they हैं. will just नहीं be पहले हम repeating. गेम देखेगा, I आप लोग guess- बात करो, हम ही बात करेंगे. Itami, you know what I want to see? You know what I want to see? I हमको बात want करने to में see मजा that लगता है. circling eagle from Sincerely Why can go Lajia all the Admiro way to like the people? back No, line, I mean, and Zen this is mess just sound flying is in so the air distracting. and Mute gets it that or lower it a 5-man bit. Wrath of the I Dryad. cannot hear your That's voice. the only way I see Hyodo doing a lot of Chalo, chalo. damage, and he actually dishing out that damage through the Girls entropy. really are That could be the difference complicated. maker, but it'll be quite Wow. funny to see a tree like Belleric just Girls. flying around मतलब and just इतना providing the ज्यादा Wrath of the लड़की Dryads किया in the ना. back line. अभी तो डायरेक्ट ब्लॉक Yep, लिस्ट में होगा. and the हमको तो Lord डर is लग गया. actually about to spawn, आपको and I दो guess एक से ज्यादा लड़की the अगर outcome एक of भी this नहीं game होने might depend onto this एक से ज्यादा अगर upcoming गर्लफ्रेंड हो Lord गया बोलने से transformers खत्म. because मैं तो आते अभी तो whichever बॉयफ्रेंड team भी is नहीं है able to ना, get it, हम तो they बॉयफ्रेंड will बनाया भी have नहीं है quite अभी the तक. advantage onto this game. इसलिए मैं as हम well सोचते हैं कि onto मेरा the बॉयफ्रेंड series. कभी एक भी So, गर्लफ्रेंड मत हो. Team एक तो था, एक था GRM बोलने से कोई already बात नहीं. started to contest for the Lord. I guess they will be trying to bait Chandu it in Bam sir order that is for that sir Gatot Kacha. Yeah. सर His दैट क्या avatar, इंसान Guardian, ही and गायब हो there might जाएगा. be another team fight. So back to you, Thomas. Yeah, I think it's the tango that's all about, right? Both the Zandu jungles Bam realizing it, but meanwhile in the mid lane, they shut down. Oh my goodness, he got caught off guard completely, and Shia is the one to get that kill. So now definitely 9 o'clock I'm have the watching control. Grumpy. The tango हमको is गरम आ shifted रहा into है their अभी ना, favor. इससे हंसा Team दिया GRM मैंने, will तपा have to पास्ता back ना. off thanks to the तपा, mispositioning coming in ये from their जॉनसन own के लिए, teammate. He और was ना, playing such leading a up to my brilliant game, position. 3-1 and ये match का 5. बाद ना, And oh ये लोग- my ये लोग का goodness, match he होने का made बाद one mistake ये at करो, the आप दोनों wrong जॉनसन time. The versus जॉनसन Luminous करो, Lord कौन was up fast for race grabs करके देखेगा. and brilliantly played by Shia, who's definitely, according to me, the MVP for this one. And right now, they might be able to end the game. Will they be actually able to do so? Only time will tell. Luminous Lord marching down the bot side of Itami. But at the same time, Alone in Tokyo has to flicker along with the final slash, and I think they want to engage. But what do you think is going to happen? Is this going to be the end or not? I बहुत ही most लगता है वो है ना, probably think बहुत they ही will be लगता है. able to defend it. Yeah, but look at the same. Oh, but the क्यों Terrify, ऐसे बोलता है रे? absolutely insane coming in. Actually catching Roku as well, Ryu rather, after the Spear of Alpha, connecting that Terrify. But meanwhile, Zen gets the taunt on towards Alone in Tokyo. He's just waiting, लड़का लोग right? सुंदर This लड़के Arlock ढूंढता है just बोला, ऐसा है absolutely क्या? waiting to get that brilliant final slash, possibly pick off 5. Miss, get Just your doesn't want to boyfriend. catch I'm Zen. freezing here at Ryu Kohima does have the Love. Spear of Alpha, doesn't Come on, want to Naga. connect that. Again, Meanwhile, the maybe. upside 9 o'clock really Aatu want to baat fight. You करते हैं, can हम लोग sniff it जल्द से coming. आप जल्द तो But खेलते हैं. लिंक तो I आप think नहीं खेलते. Shia लिंक is
not your Oh my man. goodness, वो तो look at पता Shia's है हमको. positioning. He is so aggressive Abba, and the ये AO देखो ना. catches two. Couple Oh my jump goodness, the single. damage is Wow. done. They take down two. Frigid Glacier catches three. Entropy not doing a lot of damage because Kazoom came out with the wave of the world as well. फिर बाद में And दो बार Jesus छुपा आया था Christ, ये. the side of 9 o'clock Semi-final just वाले में. dominating, and Shia is the one
to actually catch them off guard with that terrified checking that brush and instantly getting the avatar of the Guardian from Oh My Poppy. It was a brilliant chain CC play as Kazum was just completely zoning He out the battle. Game And Gia taking down the two frontliners in the form of Zen and Ryu means that the backline don't have a lot to do. They just have to dish out the damage but are not protected. The Frigid Glacier is not available, but they get the damage done. Yoda will be the one to fall. They get a 3-man Frigid Glacier, but not enough as the base crystal is cracked open from the top and the mid side. But the rest of the Dryad is doing a lot of damage, and he gets the double. They want to go for the re-engage. The Circling Eagle is not available yet. The Guiding Wind is present. He's out for blood. He does not have the entropy. Oh wait, he does. He might actually go for a little bit more. He wants it so bad, but he has to back off because the side of 9 o'clock are running for their lives. They want to catch that train out of here. क्या मीनिंग है आपका? क्यों ऊपर सिंदूर दिया? हमको तो ऐसा लगता है लड़की को ब्यूटी को देख के लड़का लोग आता है, ऐसा लगता है। वही थोड़ा कैरेक्टर मालूम है कि थोड़ा छोड़ देता है, ऐसा है। comeback, actually a comeback coming up from the side of लड़की पर सुंदर होके फिर एटीट्यूड होगा, प्यार नहीं करेगा, खराब बोलेगा, सब वाला को लड़का लोग बाद में छोड़ देता है, बोलता है ना। is trying to get some visions onto the next coming एक्चुअली लड़की लोग खराब होता नहीं है, पता है, आप लोग खराब बनाते हैं। आपका गर्लफ्रेंड को ना, आप गर्लफ्रेंड कुछ खराब नहीं होगा, आप उसको आप खराब बनाएगा, ऐसा होता है, मालूम है? लड़की को कोई खराब नहीं बनाता है, लड़का लोग खराब बनाता है, कुछ तो गड़बड़ करते हैं, तो चक्की लड़की है। But look at that, the Spear of Alpha goes in. When he gets a 2-man after the Guardian, but oh my goodness, that final flash, make the play, but he dishing out the damage, and look at that team, 9 o'clock, all in the back foot, double kill in the hands of EE, and they get another one, so 3 taken down, but Kazum wants to go, he flickers so aggressively, but that might be the mistake of a lifetime, because Entropy comes in, and he's able to pick up that kill. I don't use oh my goodness, she has still they get the damage going, and Ryu's the only one left standing. Shia might actually able to get the double as well. The Lord going down the mid lane, it's a luminous one, while the top lane is being cracked open as well, but the entropy comes out. Jesus, he's out for blood, he flickers forward. This Nathan really wants to make a statement, but the base is on the Lord is still there, retribution being used. They should be able to save the game, and oh my goodness, I want to say his name out loud. Some people told me about you. And this guy has been on a roll. He has been out for blood, and the blood is what he's getting. 9, 1, and 6 on a Nathan. It's 18 minutes. This is the Omega timer we're talking about, Itami, and this is where the Nathan starts shining. देखो ना ये साउंड भी म्यूट है, फिर भी क्यों आ रहा है ना? As soon as we thought that game was over, but no, that Nathan pulling off an absolute comeback. Even though Team 9 o'clock were able to secure that lot for themselves, they were able to deal that damage that is not gonna stop anytime soon. Oh my goodness, Blood Surge comes in as well. Oh my goodness, this Nathan, he makes Michael Jackson want to come back alive, because look at Final Slash missions completely alone in Tokyo, gets caught with the Frigid Glacier, but then in the back line with the Wrath of the Dryads, godlike double kill. I got a triple. Will this be a maniac? No, he gets shut down. Michael Jackson coming back from his grave in the form of this Nathan right now, saying he, ladies and gentlemen, he's the one leading the charge. He goes down, but takes 3 instead with him, as the top lane is still being pushed by the super minions. Yes, they have the team fight capability, but the macro is not in their favor. The macro is what it's all about. And right now, the side of 9 o'clock, even though they're losing these last few team fights, not just 1, not just 2, possibly 3 team fights that they lost out on, thanks to the early push that they had and the map control that they had, they are firmly in control. The only way that the side of GRM want to win is get that full 5-man wipeout, and they've tunnel visioned themselves to this point. Yep, and you know this, he was able can you hear me? To captivate so much for his team actually, and he was, even though he was taken off after that, but still the damage has been quite done. He already has over 12 kills for himself, so I would, it would be valid to say that he is the hyper carry, actually the carry of his team. So yeah, as long as he doesn't get out onto the fights, but the mid lane. The mid lane, and absolutely perfectly said it, Tommy. I never thought you'd be able to use that term correctly, because he is
definitely the hyper carry right now. Funneled everything, a double buff on towards him. He has the blood wings. The only thing that he's missing is the immortality, and if he does so, he will be the target. He is the sole target for the side of 9 o'clock. They want to tell him, hey, time's up. You gotta go back to the dead. Go back to your grave, because right now Michael Jackson ain't coming back alive. Nathan, you're the one that we want, and everybody sees him. He is the prime target. He has a big X on his back. That red mark is what they want to see on him, and he also has a red HP bar for them to see. So definitely the Lord is the one that needs to be contested for, but he should be watching his back, because he better have 4 eyes or 2 eyes in the back of his head, because oh my papi will be looking to jump at him with the avatar of the Guardian. But look at that, they're positioning, they want to catch Kazum. Kazum realizes it has to go down to the bot side, so now they can go and prioritize the Lord. This could be it, Itami. Are they going to go for the team fight? They go in, circling Eagle on towards Oh My Papi, but the knockup is on towards Alone in Tokyo. Just waiting and prying for the right opportunity, as the slow push down bot and top lane might be the end of the side of Team GRM. They want to get the Lord started. Zen goes in. He has to route to the Dryads. Not popping it yet. Roku is there with the Blood Surge. He does have the damage. Goes in. And look at Oh My Papi gets a taunt on towards 2. Entry comes out. The damage is there. On avatar of the Guardian. Catches 2. Frigid Glacier comes out. But he goes down. That's the first one that needs to get the kill. Ryu actually picked up the Lord. And they are trying to disengage, but they're not able to do so. Kazum, oh my goodness, gets 1, gets 2. He wants to get a little bit more. Then and Sincerely Ken are the only one left standing. But thank goodness they got the Lord. But Kazum might be looking to end. The top minions are there. The Lord has come out. This is a 21-minute Lord. But will they be able to end Sincerely Ken? Zen has no damage. They can only sacrifice themselves. The death timers are too long. And look at Zen. He goes down. The Lord will be going down next. Sincerely Ken can only buy time. The mid lane is coming through. They're crashing down the mid side. And looks like 9 o'clock will advance from the quarterfinals into the semifinals. Oh, this is how 9 o'clock took over the first match against GRM. Nice. अच्छा था तो. Carry for the side of Team GRM, but still, that was still not enough. As soon as he. What about the next match? ओ बेस्ट तो ये 8 को देखो, ये 8 को देखो, ये 8 हमको ये सीजे का 8 बहुत मजा लगा है. देखो हाँ बेस्ट तो देखो, इसका नहीं सीजे का देखो, ये भी अच्छा था. हमको तो ये भी बहुत अच्छा लगा है. बहुत क्लीन से बनाया वीडियो. The host knew me and कहाँ चला गया हमको बहुत मजा आया. giveaway ad. So तुम लोग लड़की देखते रहो, हम लड़का देखते रहेगा. जिते को ना ऐसे चुक्कर हम ठीक से आसा बेस्ट देखो. I'm playing it for you. Come on आगा आता है उसे सभी ओके. Moi to au wapang laga khajin ase to. Oh, wapang the new wapang laga khajin ase. Are wapang to handsome le. That friend I like so much, but he's married now. I guess most of the people come here to come in and channel to watch her. She wants thick skin, bro. देखो एबी बस ये बहुत फेमस था पहले ने एबी बस वाला जो जिसिंग you are so cute. Send me a oh you are cushion man. Tay cushion man ase. Wala ka kilito.
Flashback. Give me skin. I told you I didn't believe. But I can dance for you. Still. You will dance. Eu já lavei o lugar, regulei o som. Já tá tudo preparado. Menina, fica à vontade. Até passa a festa. You guys are watching it without voice now. Sorry, I'll play But it. after which he was able to team 9 o'clock are the much deserved team to be winning the series. Then on their side. And please stay with us while you enjoy. देखो ना बेस्ट तो देखो प्लीज इसको देखो अभी देखो अभी स्टार्ट होगा देखो बहुत मजा है देखो बहुत मजा था देखो अब नहीं देखा ना उस दिन से टूर्नामेंट नहीं था हमको इतना एंटरटेन किया ना ये चीजें जो नेफर्स में नहीं था ना कितना देखो हम जितना बार देखो बोल रहे उतना बार देखो मर गएगा देखो ना चुपचाप हमको बहुत मजा लगा हम ये को देखते रहते हैं ये लड़का ऐसे कूल है ना ये ग्लोबल शो है क्या कोई बताया था ग्लोबल शो था बोल के बहुत प्रो है तो बाबू फेमस है ये भी Hello, our miss will always be Naga. But so said miss, I've just been to Arunachal once only. I'll sure visit again. I'm coming to Kati for the final match. At that time, you can also visit Kati. Look at this. कोई समझाओ यार झूठू लड़की को यार Yeah, he's famous for his dance. Actually, it's a girl. It's not a guy. It's a girl. Come on, लगा ना जाने तू कौन है से? You don't know who is this guy? Yeah. Flashback. Give me skin. I told you I didn't believe. But I can dance for you. Still. You will dance. Eu já lavei o lugar, regulei o som. Já tá tudo preparado. मेरे दिमाग से बाहर है देखा वो नका का मजा कर रहे ना वो नहीं जानते वो लड़की बोल रहे मजा क्या क्यों चक्कर से खाए I just हम इसको देखते रहते हैं बहुत हंसी आता है देखने लड़का ना I thought she was he. I tried and tried and tried again and again. Guys, this sport is tournament again. We should grow together. We should support each other. And this is not all about giveaway. This is the biggest tournament in India. This is the biggest tournament of our fighting. But still ahead, join our giveaway. मुन्ना की नहीं है ये तो कौन-सा ये बेस्ट तो देखा नहीं ना अभी तक 2 ही एडवर्टाइजमेंट आए हैं ना बेस्ट तो कल मत जोर है ये बहुत बढ़िया था रे हमको बहुत पसंद है ये इसका एक ऐसे प्यारा से हैप्पी बर्थ करके बनाया ना घड़ी पे बोल के अरे हम बहुत हंसा है बार-बार देखा इसको चलो guys, the rest of the matches I'll be watching it tomorrow. आज नहीं कर देख पाएगा अभी सोना है. Good night. Good night. It's funny plus. Yeah. Come on, Naga, it is.
Chalo. Good night. We'll meet tomorrow again. Good night. Everyone. Everyone. It took skill, bro. Good night. Good night. Look at this. Look at this. खेलना है क्या? खेलना है तो बोलो. खेलना है तो ठीक है. नहीं तो हम सो जाएगा. Like the stream, okay? Oy, kamu nagakila may ke abni sis ko siya. May I'll not talk to you. May ke sis na ko be. Namati be sis namati. खेलेगा या जाएगा? लिविंग हम दोनों तो ऑफलाइन खेलते हैं ना. वही के बेबी को ना call me baby. No sis. Kini ka अपनी sis खुआ दे या मती से दे. मैं भी माइंड करूँ. रैंक डाउन तो नहीं करेगा. किनी का मती वो. sis baby खुए baby कबती ये क्या बोलते तारे. Okay, good night, best of good night. Good night. Bye bye. We'll meet tomorrow, everyone. We'll meet tomorrow. My besto is getting mad. I have to go. Good night. And I'm not just be. I'm too tired. Bye. Oh besto, अभी एक minute call करो. हाँ कुछ बोलना है आपको. चलो, I'm calling you up right now.
Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna